Yo, next level. असली वाला क्या? Ha, let's go. Yo, next level. तब से मैं गेम में जब से होती थी टैक्स बैटल, साइफर स्ट्रीम बैक और कंट्रोवर्सी ग्रेग चैपल पास अरे ये बहुत हार्ड जैसे मैथमेटिकल करी पीएचडी गेम में सन लेट्स बी प्रैक्टिकल वर्ड्स टेक्निकल वर्ड्स मेरे नेक ब्रेकर वर्षों की मेहनत अब वर्क लगे मैसेकर फिर भी वो बोले ट्राई नहीं कर रहा हार्ड रियली सर्च कर रैप आईडी हैशटैग रैप मेटल पर छोड़ फ्लेक्स आज बातें होनी फैक्स आज जोर माथे पे क्योंकि ना बातें होनी वैक तू दिखाता पैसा अंधा ताकि करे सोनी टैक्स लेकिन करे गोली चेक्स ताकि करे शोनी टैक्स दोगलापन जो काम ना आए किसी के खोखला तन जब नशे में कोई यार ना करे भौंकना बंद तो समझदार वही जो थोड़ा खोले दिमाग करे बोतला बंद हालात जैसे भी हो रोने की बात नहीं है हीरे के आगे चमके सोने की औकात नहीं है कहीं इतनी आसानी से ना मिले पानी कहीं पैसा पानी जैसा लेकिन धोने के लिए हाथ नहीं है तो दम रख पर पॉलिटिक्स कम वक्त आज भर्म के ज्यादा असली धर्म के कम भक्त सितारे जो भी बोले लक्ष्य पे ना कर शक और कसली कमर तो फिर बरकत ही बरकत बीट को किल करा गीत में फील भरा जीत को सर ना चढ़ाया हार से डील करा जिसके न तन पे कपड़े उसको क्या मिंतरा जो ज्यादा लोकप्रिय उसको सब पिंजरा खुद से भी प्यार नहीं है फोटो पे फिल्टर दिखावा छोड़ पहले असलियत से मिल करा गिरा ना हो किसी को लगते बड़े डोले लेकिन गिरे को उठाने के लिए लगता बस एक दिल बड़ा उसी की कमी है कितना फनी है आज इंसा से ज्यादा दिल इंस्टा पे दिखते हैं चुनाव हो तो वोट यहाँ हिंसा से बिकते हैं टोक कोई सकता नहीं क्योंकि ये हिप हॉप है बाबा बॉलीवुड नहीं है यहाँ हम अपनी इच्छा से गाते हैं अपनी इच्छा से लिखते हैं नेक्स्ट लेवल जमीन से फलक या जमीर से मगज अमीर को कौन करे लकीर से अब जज आधे से ज्यादा कोशिश करने से पहले माने हार तेरी जिद ही करेगी तुझको भीड़ से अलग चीर दे तू तीर से कवच नसीब पलट लाइफ पजल करेगा रीस तो पीस गलत धुआं छोड़े बार्स गोल्ड पावर जैसे फ्रीजर अब सेटिस्फैक्शन यहाँ जीसस का मेंटालिटी प्रदूषित हालत दिल्ली जैसी पहले से ये मैली है ये जनसंख्या जैसी बढ़ती ये जेलेसी है कुदरती है लेकिन समय से जान ले ये साथ है तो सोच तेरी ठोस नहीं सकोश बिल्कुल जेलिसी है जीना ना बांध कर ना टांग कर अपने पैरों पे चलना दूसरे के टांग कर रिश्ता रहे रब से सच्चा कुछ ऐसा काम कर सस्ता नहीं सबसे अच्छा now that's banger now that's banger Yo guys, that's banger means you know that's banger this banger guys banger that's banger मेरे भाई that's banger कैसे हो हमारे सारे के सारे लॉन्डे कैसा चल रहा है सब कुछ मुझे एक बार बता दो सबसे पहले बता दो गाइस मेरी आवाज आ रही है मेरी आवाज क्लियर है क्या सबको हेलो 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 गाइस मेरी आवाज क्लियर है क्या सबको एक बार मुझे बता देना प्लीज Is I'm audible to all of you guys? Hello, 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 boys. Is I'm audible to all of you? I'm audible to all of you guys. एक बार मुझे please बता देना. Please बता देना guys. Hello, hello, boys. Hello, sir. Hello, भाई कैसे हो? बढ़िया सब मस्त मजे में. So guys आज क्या लग रहा है? कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ क्या जाने वाला है गाइज आज के दिन का क्या लग रहा है आज के दिन पे ड्रॉप क्लैशेस भी है ड्रॉप क्लैशेस है नहीं है टीम्स ने नए ड्रॉप्स को एडजस्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू फ्लाइट पाथ सारी चीजें ऑल दो सेटल हो चुकी है कैसे हो लॉन्डो सारे के सारे अपने लॉन्डे कैसे है हेलो हेलो गाइस रुको रुको आपका कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ वेट अ मिनट अपनी लाइव खोल लूँ पहले एक बार थोड़ा सा काम कर रहा था चलो बॉयज लेट्स गो भाई ऐड आ रही है हमारे चैनल पे चलो भाई डबल एड्स है हेलो हेलो मेरे भाई अब सारे लॉन्डो को हाई करते हैं निगा हेलो भाई हेलो हेलो कौन कौन भाई हमको किस भाई से बातचीत हो रही है लेट वेम्पायर भाई बिल्कुल लेट नहीं थोड़ा सा जल्दी आ गए हम हे निगा हेलो हेलो भाई वी जोनाथन व्हाट्सअप मेरे भाई मुन्ना भाई हेलो भाई हेलो सर हाँ यस यस अगर नो आज कौन सा टीम है भाई आज टीम्स जो खेलने वाली है वो है गाइज आपकी ये टीम
सो गाइस ये टीम्स आपकी रहने वाली है जो आपकी स्क्रीन के सामने। आई लव यू सर, मी टू मेरे भाई, लव यू। कल फैन क्लैश में 150 जीत गया भाई, क्या बात है जयदीप भाई, मोटा पैसा जीत रहे हो भाई। 150 जीत लिया कल हमारे जयदीप भाई ने फैन क्लैश के अंदर भाई, बहुत बढ़िया। आप भी जाके डाउनलोड कर लो ऑडियंस, पिन कमेंट के अंदर आ रहा है जल्दी से, हमने भी टीम बना ली है अपनी, आज का वीडियो देख लिया होगा। हेलो हेलो शुभम भाई कैसे हो, तला यालस, हेलो मेरे भाई। भाई पिचिस सॉन्ग लगान दलजीत का, ओके मेरे भाई। व्हाट्सअप लॉन्डो, आ जाओ जल्दी से सारे के सारे, क्या कर रहे हो। आई डोंट थिंक एसजी विल बी इन टॉप 16, आई थिंक दे कैन ब्रो, इट्स नॉट लाइक यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ 30 पॉइंट लेने, एक अच्छा मैच हो गया क्वालिफायर, एक अच्छा मैच, 6 में से एक तो अच्छा निकाल ही देगी एसजी। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली। पता है आपको जो 16 का कट ऑफ होता है वो कितना रहता है, वो रहता है 40 से 50 के बीच में, हाईएस्ट बोल सकते हो आप 55 तक जाता है 16 का कट ऑफ, टॉप 16 का कट ऑफ। जो इससे पहले जितने भी आज तक मतलब जितने भी टूर्नामेंट हुए ना, सब पे उतना ही कट ऑफ गया है। अगर आप हाईएस्ट पकड़ के चलो ना इस बार का कट ऑफ, दैट विल बी 60 पकड़ लो, 70 पकड़ लो, 80 पकड़ लो, दिस विल द लास्ट 80 ही होगा। 90 100 तो भाई बहुत दूर की बात चलेगी। जितने भी टूर्नामेंट खोल के देख लो आप, जो 16 का कट ऑफ 2 दिन के अंदर, मतलब 2 दिन और 12 मैचेस के अंदर जितने भी कट ऑफ गए हैं, दैट इज जो हमारा मैक्सिमम जाता है वो 45 टू 50 टू 55 टू 60 ही रेंज करता है। सो आज के दिन पे भी ओवरऑल यही सिनारियो देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ आपको, थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैच कब स्टार्ट होगा ब्रो, मैच की टाइमिंग्स वही है, 4:30 से स्टार्ट होगा। डीआरएस नहीं है क्या भाई आज, नो ब्रो, देयर इज नो डीआरएस। एंड जो टीम्स खेलेगी आज, ये टीम्स गाइस आज के दिन पे खेलने वाली है, तो ड्रॉप लोकेशंस भी मैंने आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया। आज मेरी टीम HVV DWG IHC एंड रिजेक्ट लॉक कर दिया है फैन क्लैश पे, बहुत बढ़िया जयदीप भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया। हम भी लॉक करने वाले टीम को, लॉन्डे को आने दो हमारी, फिर हम भी टीम लॉक करते हैं। मेरी एक अलग टीम है गाइस, आज के दिन पे मैं टीईएम पे ज्यादा अपना फैंटेसी वाला पिक रख रहा हूँ। टी मतलब टी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, टीईएम के ऊपर, सॉरी टीएम के ऊपर। देखते हैं भाई मैच कितने बजे शुरू होगा भाई, 4:30 से मैच स्टार्ट होंगे। यस सर, ओके सर, यस। व्हाट अबाउट बीटीआर ब्रो, अगर आप पॉइंट देखते हो ना बीटीआर के, यार ये देख लो, सिंपल सी बात है, बेकन टाइम तक जितनी भी टीम्स है ना कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएंगी। 16 का बीटी नहीं होगा क्योंकि उनके पास 6 मैचेस बचे हुए, मतलब आज बेकन टाइम को 30 पॉइंट लेने मिनिमम, देखो 70-80 पॉइंट तक सेफर साइड हो सकता है, बट ये लॉबी अलग सीन है इन लॉबी का, क्या पता कट ऑफ बढ़ जाए, तब भी यार 80 से ऊपर मुश्किल है 16 का कट ऑफ। 60 मतलब समझ रहे हो, उतना बहुत अलग बात हो जाएगी वो कट ऑफ, तो बहुत अलग सीन हो जाएगा। 16 टीम क्वालिफाई होगी, यस मेरे भाई 16 ही टीम क्वालिफाई होनी है। और आज आपका नया ग्रुप ऐड ऑन हो रहा है, लाइक जैसे रिजेक्ट दिख रहा है, जीके दिख रहा है, तो ये टीम्स आज खेलने वाली है। सो थोड़ी सी नीचे ऊपर नीचे टीम्स होने वाली है आज के दिन पे। आपको रेड ग्रुप की जो टीम्स है, हो सकता है आपको और नीचे आ जाए। कल के दिन पे क्या होगा, रेड ग्रुप खेलेगा तो वो ऊपर चल जाएगी, तो ग्रीन ग्रुप की जो भी टीम्स है जितनी भी, उनको रहना चाहिए आज के दिन पे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अर्न करने हैं। लाइक पावर को तो भाई बहुत ज्यादा अर्न करना पड़ेगा पॉइंट, आज के दिन पे 60-70 पॉइंट लेके आने पड़ेंगे पावर को, if they want to qualify for sure. वट अबाउट बीटीआर, कैन बीटीआर क्वालिफाई, यस यार बीटीआर कर सकती है क्वालिफिकेशन, उनके डिपेंड करता है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप उनका पिछला स्टैट घुमा के देखते हो, देर इज नो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर आप पीएमजीसी की बात करते हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस आता है, उसके बाद ऊपर जाते हैं। बट अभी की लॉबी का ही सिंपल सी बात है, अगर आप चलो अभी आप 16 भी निकाल दिया, 16 के बाद जो टॉप 5 निकालना है ना, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, ग्रैंड फाइनल्स निकालना है उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। सो जो टॉप नॉच कंसिस्टेंट टीम होगी ना, जो मोमेंटम एंड फ्लो वाली टीम रहेगी, वही आगे जाने वाली है। वही गाइज अगर आप देखोगे वेम्पायर, HVVP, वही टीम्स आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, वही टीम आगे जाएगी। हाय उत्सव गेमिंग भाई कैसे हो। बीटीआर का कल का कार पुश अलग सीन, फुल गूज बम्स। अरे भाई वो तो भाई मेरे को लगा एक टाइम का भाई 1-2 साल का फ्रस्ट्रेशन उस कार पुश में ही था, जो गुस्सा आया है उन्होंने भाई, पट से हेडशॉट भाई। टुडे रिजेक्ट स्कारलेट विल डोमिनेट, देखते हैं भाई। वैसे रिजेक्ट की टीम ना मोस्टली ना प्लेसमेंट पे फोकस करती थी, बट इस बार उन्होंने कुछ अलग खेला। इस बार का पीएमजीसी जो उनका ग्रुप था, दे गो फॉर द किल्स। और इस बार जो वो बाहर हुए, पता है किसकी वजह से बाहर हुए, प्लेसमेंट पॉइंट की वजह से बाहर हुए। सो इट्स यूनिक वन, एक ऐसी टीम जो प्लेसमेंट पे खेलती थी बट वो अग्रेशन के ऊपर गई, एंड बाहर होने का उनका रीजन क्या था, मतलब जो भी टाई ब्रेकर राउंड हो, कि उसके पास प्लेसमेंट पॉइंट नहीं थे। तो इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल थिंग गाइस।
भाई आपके टॉप 3 टीम चूजन करो जो ग्रैंड फाइनल्स में जीत सकता है आपके हिसाब से। ब्रो अभी अभी नहीं, अभी वो पिक नहीं किया जा सकता। पहले ग्रैंड फाइनल्स के लिए टोटल टीम आने दो, 16 टीम, उसके बाद स्टैट्स शूट बनेंगे, देखते हैं कौन सी टीम का क्या मोमेंटम रहा है टूर्नामेंट के बेसिस पे, स्टैट बेसिस पे। एंड कल भी जो मैंने टॉप 4 टीम पिक्स करी थी लाइक फैंटेसी के लिए, अगर आपको पता होगा फैन क्लैश के लिए 6 टीम थी ना मेरी, 6 में से गाइस अपनी 4 टीम टॉप 5 के अंदर है, देख लो। तो रीजन इज दैट वो प्योरली स्टैट बेस्ड टीम थी, जो आपको बताया हुआ था, लाइक वेम्पायर, लाइक बेकन भी बताया था। बेकन के स्टार्टिंग के मैचेस अच्छे गए, बट वो एक मोमेंटम एंड एक फ्लो उनको नहीं मिल पाया, समझ रहे हो? एक मोमेंटम और एक जो फ्लो होना चाहिए वो उनको कहीं ना कहीं वो मिला नहीं। तो वही सीन है, बाकी लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं, देखा जाएगा। डज आई इट हैव अ चांस? यस ब्रो, दे हैव अ चांस यार। कल का दिन है ना, 6 मैचेस बचे हुए, 17 पॉइंट है उनको लेने, 40-50 पॉइंट लेने में भी हो जाएंगे क्वालीफाई। 40-50 या 60-70, 40-50-60 पॉइंट ले लेंगे तो हो जाएंगे। कट ऑफ गाइज 16 का कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ, जो मोस्टली हमने देखा है। तो मैं एक बार और से दिखा देता हूँ गाइज, देखो ना, इससे पहले की भी परफॉर्मेंस देखो। अगर मैं सेकंड डे का आपको चार्ट दिखाऊं, आई थिंक ये थर्ड डे का चार्ट है, तो गाइज इससे सेकंड डे चार्ट, जो हमारी जो बॉटम टीम है, जो 16th रैंक की टीम है, उसकी रैंकिंग कितनी है? 33। लॉबी टू लॉबी अलग चीज हो सकती है, रुको मैं बताता हूँ। ये आपका येलो ग्रुप था, एंड ये आई गेस आपका 12 मैचेस बाद यहाँ 48 है। इनको गेमिंग के 48 थे आफ्टर लाइक 12 मैचेस, एंड 2 दिन के बाद, एंड 12 मैचेस। एंड रेड ग्रुप का अगर आप सिनारियो देखते हो, तो यहाँ पे हमारा डे 2 है, आई गेस, यस इट्स अ डे 2 एंड 41। सो गाइज अगर आप देख रहे हो 40 to 50 मैक्सिमम, अगर आप हाईएस्ट ले लो तो कट ऑफ 50-60 ले लो कट ऑफ की, अगर आप बात करते हो आज के दिन में। बस वही रहेगा, काफी टीम्स का टारगेट कि 60 प्लस तो ऊपर है, 70 एटलीस्ट स्कोर करे कि वो एक जेन्युइन टोटल हो, है ना? जेन्युइन टोटल। लाइक इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मैचेस हुए, लेट मी चेक, एक बार देखते हैं कि मैक्सिमम कट ऑफ्स कितने ही रहते हैं टीम्स में। देखते आ जाओ, ये अच्छे से पता लगेगा इस मैक्सिमम कट ऑफ कितने ही रहते हैं। इस मेज पे जाते हैं, एक बार कट ऑफ चेक करते हैं। अच्छा खुला हुआ है, इस मेज ही है क्या ये? दोनों का पेज काफी कॉमन हो गया भाई। हमारे रेस्ट ऑफ द अदर टूर्नामेंट्स भी होंगे कभी जिंदगी में, उसमें भी देख लेते हैं आफ्टर 12 मैचेस। पीएमडब्ल्यूआई में देख लेते हैं आफ्टर 6 मैचेस, है ना ये? अच्छा, ये क्या है हमारा? रैंकिंग मेंशन नहीं है। 65 to 70 कट ऑफ जाएगा अगर कंपटीशन रहा तो 80 के आसपास। यस वही, 90 तो बहुत दूर है, 70 80 हाईएस्ट पकड़ सकते हैं, 80 के आसपास कट ऑफ जो है, मैं 80 तक पकड़ के लेके चल सकते हैं। बट 9, कोई लोग जैसे 100 बोल रहे हैं तो वो काफी मुश्किल है। अभी पीएमडब्ल्यूआई का स्टैट खोलने दो मेरे को, पीएमडब्ल्यूआई का स्टैट देखना है मेरे को एक बार। पीएमडब्ल्यूआई, अरे पीएमडब्ल्यूआई का स्टैट, वेयर इज पीएमडब्ल्यूआई स्टैट? डाला नहीं क्या ये? पीएमडब्ल्यूआई 2021, इट्स अ डे 1 है ना, आई गेस इट्स अ डे 1। मैचेस मेंशन नहीं करे हैं, स्टैंडिंग, इसको डे मेंशन करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक इट्स अ डे 2। डे 2, रुको, 2 4 6 7 8 11 12, इट्स अ डे 2। एंड अगर आप इसमें देखो 16 का कितना है, 4 5 8 9, 51 के आसपास। मतलब ये पीएमडब्ल्यूआई का डे 2 खोल रहा हूँ मैं, इट्स अ पीएमडब्ल्यूआई डे 2। एंड ओवरऑल ये पीएमडब्ल्यूआई का परफॉर्मेंस था इस साल का। सो इसमें भी कट ऑफ अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको वही दिखने वाली है, 65 to 75 माय प्रिडिक्शंस। हाँ, अलग अलग चीज, कंपटीशन, लॉबी टू लॉबी एंड कंपटीशन टू कंपटीशन भी चीजें वेरी करती है, वो भी एक पॉइंट है जो आपको देख के चलना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी क्या होता है, जो होगा हमको आज पता लग जाएगा। वैसे यही है कि ग्रीन ग्रुप को जितना हाईएस्ट हो सके उतना पॉइंट लेके चलना है, तो दैट्स माय पॉइंट। गॉड एलएसटी स्मार्ट इन लॉबी, जयदीप, ओके। अब आपके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। जीके डे 1 परफॉर्मेंस, यस वो उस टाइम पे था, बाकी देखते। अब गाइज, अब एक और चीज मैं कल ना नोटिस करा था, मैंने हर एक चीज के ना एक पॉइंट नोटिस करा, ठीक है? मैंने इनको गेमिंग का पॉइंट नोट करा, पता है इनको गेमिंग के मैचेस कहाँ पे अच्छे आए हैं? कल आपने एक चीज नोटिस करी, जोन कहाँ बना है? फर्स्ट सर्कल जोन कहाँ बना था? इनको गेमिंग के ड्रॉप के पास। सेकंड सर्कल, एक और जो आपका उनका एंगल अच्छा गया है, वो कहाँ पे बना है जोन? उनके ही जोन, मतलब उनके ही, मतलब जहाँ पे उनका गढ़ है, घर है, उसके आसपास बना है।
सो आई हैव नोटिस वन थिंग कि इनको का एग्जीक्यूशन बढ़िया था, मतलब उन्होंने पोजीशन को प्रायोरिटाइज करा, लाइक एलजीडी गेमिंग। कल के दिन आपने एक चीज नोटिस करी, टीएमआरसी तोड़ेगी आज। टीएम का मोमेंटम बहुत अच्छा है, तो टीएम को मैंने अपनी फैंटेसी उस पर भी रखा हुआ है। बट बट एलजीडी एंड इनको, एलजीडी का अगर आपने कल का गेम देखा होगा, जिसपे लाइक इरेंगल के अंदर, जिसपे आपका वो वेट करता रहा, पोजीशन उनको मिल गया, जोन करता रहा, बाद में उसने पॉइंट्स निकाले, वहां से करा। इनको का भी गाइस सेम था सीन। बट अगर आप बात करते हो वेम्पायर एंड एचवीवीपी की, इनकी तरफ से ट्राई हार्ड एफर्ट थे। फिर जानकारी गिवन भाई, आप देख क्यों रहे हो फिर यार? आपको अच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हो। बाकी हाँ, एक और मैंने चीज नोटिस करी, वेम्पायर और एचवीवीपी का ना एक ट्राई हार्ड दिखा कल के दिन पे। ऑनेस्टली सिंग, दे आर इन टॉप, बट ड्यू टू देयर एग्जीक्यूशंस यार, मतलब जोन्स, मतलब आप देखना उनका गेम, देखना कल का जोन्स, ऐसा भी नहीं कि इनके ऊपर ही रहा होगा, जोन दूर भी था, रोटेशंस दिया, एज क्लियर करते भाई। बहुत प्यारा ट्राई हार्ड था वेम्पायर और एचवीवी का, मैं इनसे स्पेशली इंप्रेस हूँ। और कल के दिन पे वेम्पायर टॉप लाइक 4 के अंदर 2 बार, और एचवीवीपी टॉप 2 के, मतलब टॉप 4 के अंदर 2 बार, दोनों दोनों टीम 2 2 बार आई है। एंड इसके साथ साथ 5 से 10 रैंक के अंदर दोनों दोनों टीम जो है 2 2 बार आई है। मतलब इनका जो मैचेस खराब गया है, दैट इज 1 से 2 मैचेस खराब हुए हैं 6 मैचेस के अंदर, जिसमें से जो मैचेस इनके खराब भी हुए उसके अंदर आपका किल्स पॉइंट लेके गई है। कंसिस्टेंसी का राज देखो, जो ओवरऑल इनको बैलेंस बनाता है टीम्स को। बट द एग्जीक्यूशन भाई, इनका इनको इनका पीओवी मिल जाए ना गाइस, मजा आ जाए। बट काश इनके लैंग्वेज समझ आती, किस क्या इनका कम्युनिकेशन वगैरह रहता है, कि क्या सीन होता है भाई, मजा आ जाएगा भाई देखने का। बाहर से देख के ना वो चीजें नहीं लगती पता, जो चीजें अंदर चल रही हो। द वे दे आर डूइंग देयर थिंग इज जस्ट ऑसम। वेम्पायर का गेम प्ले देखने को मिला, जो वो पहले खेलता था, लाइक जो ग्लोबल मेटा पे आई हैव सीन यस्टरडे मैचेस है ना, मतलब लगा मेरे को देख के भाई, हाँ ये वही चीज है। लाइक पीएमडब्ल्यू आईएमएन की रोटेशंस देखोगे अगर, एंड कल के दिन की रोटेशंस देखोगे, सो यू आर गेट टू नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो अच्छा लगा मेरे को कल के देख के। मैं स्टैट वाइज भी अब चीजें थोड़ा सा नोटिस करने लग चुका हूँ, मतलब कुछ चीजें। भाई आईएचसी के बारे में बताओ यार, एचवीवी की वीकनेस क्या है ब्रो? एचवीवी की वीकनेस भाई, कल तो वेम्पायर और जो एचवीवी का क्लैश हुआ है, दोनों का टाइमिंग्स और दोनों का रोटेशंस पाथ मिल गया भाई। एचवीवी की वीकनेस, एचवीवी की वीकनेस क्या है? एचवीवी की वीकनेस, एचवीवी की वीकनेस सिनारियो ये है, या फिर वो कर देते या फिर वो नहीं करते वाला सीन है। और जब वो नहीं करते तो बहुत ही जल्दी आउट हो जाते हैं, समझ रहे हो? बस वही सीन है। बाहर से देख के वो वीकनेस आप पता ही नहीं सकते। पुनीत ब्रो, HVV weakness is Nova. अरे my fan clash team HVVP. I see how is this? HVVP is captain and Vampire is vice captain. IHC and TEM. Exactly मेरी भी सेम ही टीम है मेरे भाई। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बेकन आज कम बैक कर सकती है। मतलब मेरे को वाइब आ रहा है बेकन आज फाड़ने वाली है। सो instead of like IHC, I choose बेकन मोस्टली। वेम्पायर प्लेस, लेट्स सी बाकी क्या सीन होता है। एचवीवी के बंदे अगर मिड में स्कोप खोल दे तो खत्म सीन है सामने वालों को। भाई एचवीवी का मैंने लाइक फर्स्ट डे भी यही चीज बोली थी एचवीवी के लिए। अकॉर्डिंग टू द स्टैट, उनका गन गेम एग्जीक्यूशन, गन फाइट एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा हार्ड है भाई। इफ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एचवीवी, थोड़ा ध्यान से, आप चाहे जितनी भी अच्छी टीम है, थोड़ा बट थोड़ा ध्यान से। बट अगर एचवीवी आपसे फाइट ले रही है, कोई भी लाइक अगर एचवीवीपी आपसे गन फाइट ले रही है, आपको उसने पकड़ लिया है, तो थोड़ा ध्यान से फाइट लेना, क्योंकि परसेंटेज अभी तक जितना भी परसेंटेज हमारे सामने आया, उस मैच वीवी इज द विनर वन। कल के मैचेस देख लो, वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप आज भी देख लेना, मोस्टली टचवुड अगर उनको नजर ना लगे हमारी, तो हो सकता है। भाई क्या एसजी क्वालिफाई कर पाएगी? ऑब्वियसली यार, क्या ही क्वालिफिकेशन में कर लेगी बे। कितने पॉइंट चाहिए? 40 पॉइंट उनके। मैं कितना आसानी से बोल रहा हूँ ना, कितने पॉइंट चाहिए। टफ है, लॉबी टफ है, बट 6 मैचेस में यार एसजी से हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं यार कि वो 30 पॉइंट तो मिनिमम निकाल ही लेगी। 6 मैचेस में 30 पॉइंट, एक अच्छा गेम चाहिए। ज्यादा भी निकाल सकती है, बट मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 30 पॉइंट निकालने में तो निकाल लेगी बे, 6 मैचेस में 30 पॉइंट निकाल लेगी सीन टीम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जितना भी मैंने ओवरऑल देखा ना आज तक, जितना भी मैंने देखा है, कट ऑफ लॉबी के अकॉर्डिंग होता है कि कितना
क्या कंपटीशन है, बट लाइक PMWI अभी हमने लॉबी भी देखा, वहां पे भी कट ऑफ इतना ही जा रहा है। वहां 50 गया था, PMWI के टाइम पे 50 गया था। यहाँ पकड़ के चल लो ऑल कंपटीशन होगा 60 to 65 पकड़ के चल लो, क्या पता ज्यादा भी चल जाए। हाईएस्ट 70 75 80 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, बाकी कुछ बोल नहीं सकते। लेट्स सी। भाई कैन I8 क्वालिफाई इन टॉप 16? इफ यस देन हाउ इज द पॉसिबल? ब्रो टीम के हाथ में है यार सारी चीजें। 6 मैचेस बचे, खेलना पड़ेगा। फाड़ फाड़ खेलना पड़ेगा भाई। करने में कर सकते हैं, उन्होंने इससे पहले करके दिखाया, ऐसा नहीं कि नहीं करके दिखाया है, उन्होंने करके दिखाया है। हर टीम यहाँ पे जो खेल रही है वो पोटेंशियल रखती है करने का, बट यस कंपटीशन भी उतना है मेरे भाई। बाकी लेट्स सी की हुंदा सी आज के दिन का। भाई बाकी आप लोगों का क्या पिक रहेगा आज के दिन का? टॉप 4 पिक आपका क्या रहने वाला है? लाइक क्या लग रहा है guys, आज वेम्पायर और HVV ही डोमिनेशन रहेगा? इनको का क्या सीन रहने वाला है? अल्फा 7 स्पोर्ट्स का क्या सीन रहेगा? नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बताना। मेरे को एक बार इनको को देखना है, जो जोन्स उनके घर के नहीं बन रहे उसमें एग्जीक्यूशन क्या रहता है आज के दिन पे। वेम्पायर और HVV का तो काफी अच्छा था। बाकी लेट्स सी। SG नीड कमबैक, एक अच्छा मैच। SG नीड 1 गुड मैच, दैट्स इट। 6 में से एक अच्छा मैच चाहिए SG को बस। और एक अच्छा मैच नहीं तो हर एक गेम से 5 पॉइंट 4 पॉइंट निकालने, 6 पॉइंट 7 पॉइंट, मतलब कंसिस्टेंट पॉइंट। दैट्स इट मेरे भाई, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ऐदा नहीं चल दे प्यार सोनिए, ऐदा नहीं चल दे प्यार। ग्रीन ग्रुप आज परफॉर्म करेगी तो I8 का चांस है। यस ग्रीन ग्रुप परफॉर्म करेगी तो I8 का चांस है। यस मेरे भाई, क्योंकि ग्रीन ग्रुप के पॉइंट्स, वैसे भी ग्रीन ग्रुप परफॉर्म कर ही रही है मेरी भाई। ग्रीन ग्रुप जितना अच्छा खेलेगी उतना डाउन समझ लो बूम बाम होगा। व्हाट अबाउट BGMI और ग्लोबल PUBG मोबाइल इंडिया में वापस आ रही है? अरे ब्रो आई डोंट नो, इस बारे में मुझे सीन नहीं पता। डोंट स्पैम टू मच, करने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं पुनीत भाई। पैराबॉय ने SG ज्वाइन किया है क्या? पैराबॉय ने SG ज्वाइन करा है पीटर भाई? आई डोंट नो, अगर ऐसा है तो पता नहीं, अगर हुआ होगा तो पता लग जाएगा भाई। लेट्स सी। SG का अगर कोई देख रहा है तो बता दो यार, पैराबॉय ज्वाइंड SG, ऐसा कुछ है क्या? भाई इंडिया अगले साल खेलेगी क्या? यस मेरे भाई, अब अगले साल ही हो पाएगा इलेक्शन भाई। मूव अब तो इस साल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब तो स्लॉट भी नहीं है ना यार। स्लॉट भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट चांस में अब 5 स्लॉट जाएगी, 5 टीम जानी है। सो यस, नो पॉसिबिलिटीज ब्रो। सुख ज्वाइन WBG ब्रो, हो गया क्या उसका बिडिंग? हो गया क्या सुख का? He's playing with WBG Vivo Cup. Nice, nice, nice. Vivo Cup खेल रहा है रिएक्ट बॉय, गाइस नाइस। मेरे को सुनने में तो आया था he is doing ट्रायल आउट्स, लाइक ट्रायल आउट्स तो दे रहा था वो। बाकी नाइस, नाइस वन, नाइस चॉइस। WBG इज अ गुड वन। बट वो WBG को पता क्या हिट कर गया? वो जो रूल आया था ना वहां पे कि 18 साल से छोटे बंदे नहीं खेल सकते, मतलब 16 साल से, 16 से 18, मतलब 18 साल के ऊपर ही खेलेंगे, और वो ज्यादा गेम नहीं खेल सकते। वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे दाकवान को नया नया लिया था, और दाकवान उस टाइम पे अच्छी फॉर्म पे था। तो उसके बाद से दाकवान जब आया उसने मैच पे दिखाया, अब उसके बाद से दाकवान का भी परफॉर्मेंस डाउन हुआ, वो हमको देखने को मिला है लाइव। ऐदा नी चल दे प्यार सोनिए, ऐदा नी चल दे प्यार। कम ऑन बॉयज। ES का मतलब क्या है? वेयर इज इंग्लिश मैन, वेयर इज इंग्लिश? एक मिनट रुको गाइस, थोड़ी सेटिंग शूटिंग कर लेते हैं। मैचेस अभी स्टार्ट नहीं हुए, अभी 8 मिनट है। हम ओवरऑल स्टैंडिंग खोल के रख लेते हैं तब तक। यस बाकी गाइस वी गो सम स्टैट। ये स्टैट भी हमारे ड्रॉप लोकेशंस है, एंड ये हमारी स्टैट्स है आज के दिन का। काफी लोगों ने देखा नहीं होगा, जाके देख लेना, और लाइक बटन दबा देना जाके इंस्टाग्राम पे हमारे योगी अंडरस्कोर गेमर पे। मात्र हमारे अभी 97 लोगों ने देखा है, 97 98 लोगों ने। तो जाओ जल्दी से, देयर इज अ स्टैट लाइक, एंड ये रैंकिंग्स है गाइस ऑन द बेसिस ऑफ यस्टरडे परफॉर्मेंस।
कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स है ये आपकी स्क्रीन के सामने जो आ रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग स्टैट कैसे है मैं आपको बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रैंकिंग्स दिया हुआ है इनको, ये 9th रैंक किस बेसिस पे है। मतलब कल जितनी 16 टीम्स थी, 16 टीम्स का एक ओवरऑल आपका पॉइंट्स निकाला इरेंगल का, सिर्फ इरेंगल का पॉइंट्स। तो इरेंगल पे आपका जो टीम वेम्पायर है उसका जो एवरेज रहा है टोटल, दैट इज 7.3 का एवरेज। मतलब वो 9th रैंक पे है। मतलब इरेंगल पे इनसे ज्यादा अच्छा अदर टीम्स ने पॉइंट निकाला है कल के दिन पे। इरेंगल की अगर हम स्पेशली इरेंगल की बात करते हैं, ओवरऑल तो यही ज्यादा पे है। बट कल ओवरऑल जो इनका मैप अच्छा गया है दैट इज मिरामार। मिरामार में ये सारी की सारी टॉप 16 टीम में जिन्होंने भी मिरामार खेला आपके 2 मैचेस के बाद, इनका एवरेज पॉइंट्स था 21 का। दैट इज बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब कल के दिन पे वेम्पायर ने मिरामार के उससे काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हैं। शैनॉक में गाइज इनका इतना अच्छा एवरेज रहा नहीं है, 5 का ज्यादा पॉइंट नहीं, क्योंकि एक ही आपका शैनॉक हुआ था। HVVP की अगर हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे, और इसके साथ साथ यस देयर इज अ फैंटेसी पॉइंट, लाइक जैसे हम फैंटेसी पॉइंट फैन क्लैशेस के साथ करें तो काफी अच्छा फैंटेसी पॉइंट है इनका 55 भी। एंड इसके बाद गाइज अगर हम बात करें अपना 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 अपने टिक्सी पाजी भी आ रहे हैं, टिक्सी पाजी भूल जाता हूँ, HVVP। सो गाइस अगर हम इनकी रैंकिंग की बात करें, ओवरऑल 67 पॉइंट थे, एवरेज इनका बन रहा है 11.55 का। इरेंगल अगर आप देखते हो 6 का, मिरामार इतना अच्छा नहीं हुआ, 10 का इनका रैंकिंग है। एंड रैंकिंग अगर आप शैनॉक की बात करते हो, इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शैनॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है विद द 26 जो इनका पॉइंट एवरेज है, क्योंकि एक ही आपका शैनॉक हुआ है तो एवरेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप बात करते हो, दे आर कंसिस्टेंट। 1/6 आपका इरेंगल पे है। एक मैप ऐसा है जिसने हर एक टीम को स्टेबलाइज करा है, वेम्पायर को मिरामार ने एंड शानॉक को आपका HVV ने। इनको की अगर बात करेगा, सबसे अच्छा मैच हुआ एरेंगल नो डाउट, क्योंकि जोन्स जैसे मैंने बोला प्रायोरिटाइज अगर आप बात करते हो, जोन की प्रायोरिटीज जो थी उनके जो ड्रॉप लोकेशंस के आसपास था, दे एग्जीक्यूटेड वेरी वेल, काफी अच्छा एग्जीक्यूशन था। 16 का एवरेज पॉइंट है, #1 पे है। मिरामार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया क्योंकि अर्ली एलिमिनेशन हुआ एंड एक ही मैच हुआ था शानॉक पे, तो इस पर कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते। 4th पे गाइस अल्फा 7 की अगर बात करें तो दिस टीम इज अ कंसिस्टेंट फन। लाइक अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो, एक चीज अच्छे से नोटिस करना, इरेंगल मिरामार शैनॉक 7-6-2 एक शैनॉक हुआ। शैनॉक ने यूटिलाइज करा इनके पॉइंट स्ट्रक्चर को, पूरा का पूरा जो सिनारियो है, समझ रहे हो गाइस। हेलो प्रज्वल भाई कैसे हो। सो इट्स अ पॉइंट वन, काफी नॉलेजेबल वाला है, काफी लोग, ज्यादा लोगों के पास शायद इसकी रीच गई नहीं है। सो गाइस इंस्टाग्राम पे जाके बूम बाम मचा दो, 150 लोग देख रहे हो, जाके 150 लाइक कर दो, एकदम से फट से लाइक कर दो, जाओ जाओ जल्दी से जाओ। तो यस, ये था सीन सारा का सारा। स्टैट अब से आपको ना, अपन मैं क्या सोच रहा हूँ, धीरे धीरे करके वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू स्टैट बेस्ड टू, लाइक स्टैट वाली चीजें भी आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। टीम स्टैट क्या है, प्लेयर स्टैट क्या रहेगा, एंड एनालिसिस काइंड ऑफ स्टेप से उसको ना एक एग्जीक्यूशन करेंगे कुछ एक अच्छे वाला, लाइक स्टैट बेस्ड, एंड फिर उसके बाद देखेंगे टीम का सीन क्या है। मैंने काफी सारे आइडियाज सोच रखे हैं आफ्टर PMGC, हमारा जैसी लास्ट स्टेज खत्म होगा अभी इस मंडे से, आने वाले मंडे से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, लाइक हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर। सो इफ यू वांट टू लर्न थिंग्स कि टीम्स कैसे खेली है, क्या किस तरीके से करती है, थोड़ा ट्राई करेंगे समझने के। इनके POVs तो नहीं है, बाहर के POV से जो हमको समझ आएगा वो आपको समझाएंगे। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। लाल खोपड़ी OP कहाँ जा रहा है मतलब, लाल खोपड़ी OP, लाल खोपड़ी OP यार क्या बोल रहे हो, मेरे को थोड़ा समझाओ। मैं 4:30 को आऊंगा। ओके मेरे भाई, SMG डायरेक्ट फाइनल्स में आएगी है तो इट्स गुड फॉर SMG और नॉट ब्रो। अब देखो यार, 3 दिन का टूर्नामेंट है, क्या पता SMG जाके बुम बाम मचा दे, कुछ भी नहीं बताना। बट नो डाउट इन टीम के पास एक अलग एडवांटेज तो रहेगा ना जो यहाँ से जाएगी। टीम अब सारी टीम एक दूसरे के साथ खेल रखी है, लॉबी शेयर कर लिया है ना, एक साथ खेल लिया, हर एक मैप देख लिया, इतनी स्क्रिम्स खेल ली। बट SMG का क्या, उन्होंने बाहर से देखा हुआ और बीच में अंदर खेलना वो फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, SMG कर भी सकती है भाई, इट्स अ शॉर्ट टूर्नामेंट, इस पे कुछ ना जज नहीं किया जा सकता किसी टीम पे। सिंपल सी बात है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो अपना स्मार्ट मूव्स या डिसीजंस लेगा, गेम बनाएगा, जो वेम्पायर और HVV ने कल के मैचेस में बनाई है उस तरीका का गेम प्ले रहेगा, तो वो टीम ऑब्वियसली टॉप पे आएगी। ब्रो ये फॉर्मेट गलत नहीं लग रहा, कौन सा फॉर्मेट, लाल खोपड़ी भी ये खेलेगी नहीं ब्रो, आज खेलेगी। सिटी गलत खेल रही है भाई Vivo Day 1 में, नाइस सिटी। ओके भाई, जो पूछ रहे हैं वो बताते नहीं हो यार, क्या पूछा लाखुश आपने भाई।
आपका मुझे कमेंट ही नहीं दिख रहा है। तुषार हेलो मेरे भाई, अभी टाइम आउट मत दे, करूँ मेरे पास अनलिमिटेड अकाउंट से अरे भाई ला। आप लाकू भाई आपने क्या पूछा, गॉड लाइक एसटी के साथ क्यों है? भाई क्या क्वेश्चन पूछा, गॉड लाइक एसटी के साथ क्यों, मुझे नहीं पता भाई, वो तो आप गॉड लाइक और एसटी वाले से पूछो वो साथ में क्यों है, वो तो उनका डील हुआ होगा मेरे भाई। अब आ जाओ, आप क्वेश्चन पूछा मैं पढ़ता हूँ। पर टीम कितने मैचेस खेलेगी? 12 मैचेस भाई। आज ग्रीन ग्रुप के लास्ट 6 मैचेस है एंड रैंकिंग आपके स्क्रीन के सामने है। सो यस, जितना हार्ड हो सके उतना हार्ड खेलना है टीम्स को। आगे मेरे भाई मेरे अटेंडेंस ले लो, ऑल इन वन लो भाई, आपकी अटेंडेंस ले ली मेरे भाई। प्रॉक्सी प्रुक्सी मत लगाना। चलो भाई, 80 प्लस पॉइंट्स एंड यू आर सेफ ऑब्वियसली। एमडी गेमिंग 100%। 80 प्लस पॉइंट तो बहुत हो गया वैसे। 70 75 80, मतलब आप बोल सकते हो कट ऑफ विल बी लाइक 65 70 75 80, इसके बीच में ही हो सकता है। 85 में तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है ना, शायद आप ना ही जाओ। पर टीम्स भी बहुत है, वो भी बात करता है। अब ऐसा ना हो कि 5 टीमें के पॉइंट ऐसे हो रहे हो, मतलब कंपटीशन। आज देखते हैं येलो ग्रुप कैसे खेलता है, उससे कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी येलो ग्रुप के मैचेस होने के बाद। ऐदा नी चल दे प्यार सोनिए, ऐदा नी चल दे प्यार। अरे भाई प्यार प्यार तो ठीक है। आई लव यू ब्रो फरहान खान भाई, लव यू टू मेरे भाई। एग्जैक्ट मैच टाइमिंग बताना, मतलब 4:30 मेरे भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक टाइमिंग। 60 टाइम विल बी इनफ आई थिंक, यस भाई इतना ही होगा। भाई इंस्टा देखो, 4th बार कमेंट कर रहा। हाँ इतना कमेंट स्पैम मत करो मेरे भाई। तुम देखा कहीं, तुम इतना एक बंदा एक ही बार कमेंट करो भाई, इतना भी कमेंट मत कर दो कि बूम बाम करवा दोगे। कहाँ कमेंट आया इसमें? तो आया नहीं कुछ कमेंट, मुझे कोई कमेंट नहीं आया। हाय योगी हेलो हेलो। एचवीपी एसटी का न्यू प्लेयर कौन है? एग्जम गोल्डन। मुझे एसटी का न्यू प्लेयर क्यों? चांसेस फॉर एलजीडी। भाई किसके लिए चांसेस है? सेफ है वो यार, निकाल देगी एलजीडी। पहली 60 पॉइंट तो ले लिए उन्होंने। एलजीडी सेफ। लव फ्रॉम हरियाणा ब्रदर। लव यू टू अंकित यादव मेरे भाई। आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकालना पड़ेगा ग्रीन को, येलो ग्रुप है एडवांटेज में। येलो ग्रुप का ये एडवांटेज कि उन्होंने कल के दिन पे लॉबी भी देख लिया, रेड को भी देख लिया, उन्होंने ग्रीन को भी देख लिया एंड आज खेलेगी। बट येलो ग्रुप को ये भी तो है, आज पॉइंट भी तो लेने पड़ेंगे। भाई ग्रीन ग्रुप आप जो मर्जी बोलो, उनकी टीम की डोमिनेशन तो देखो भाई ग्रीन ग्रुप का। ग्रीन ग्रुप जितना हार्ड खेलेगा उतना नीचे टफ होएगा सीन। ग्रीन ग्रुप ने अनस्टॉपेबल खेल दिया, इमेजिन करो, इतने पॉइंट अर्न कर दिए, तो नीचे की टीम को भी तो हार्ड ट्राई करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? जितना ऊपर अच्छा खेलेगी उतना नीचे हार्ड करना पड़ेगा। अब से पीएमपीएल नेपाल भी होगा क्या ब्रो? पाकिस्तानी का शो बोल रहे थे पीएमपीएल नेपाल, मुझे नहीं पता इस बारे में। जय हरियाणा, जय हरियाणा भाई, जय हरियाणा भाई। सरजीत भाई जय हरियाणा भैया, प्रणाम प्रणाम मेरे भाई। चलो गाइस करते हैं मैच को स्टार्ट, लेट्स गो बॉयज। आ जाओ सारे के सारे लॉन्डे हमारे। करते गाइस श्री गणेश करते, आ जाओ मैच करते, स्ट्रीम को शिफ्ट एंड चलो आ जाओ। एंड गाइस जाने से पहले सबसे पहले एक और चीज आपको बतानी है, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। तो गाइस फैन क्लैश काफी सारे लोगों को पता होगा, डाउनलोड कर लेना गाइस ऐप को जाके जल्दी से। डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर स्टैंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे कैसे खेलना है। पबजी मोबाइल के सेक्शन पे जाओगे, वहां आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, जो आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट के बाद काफी लोगों को डाउट आ रहे थे कि पॉइंट्स कैसे देखना है, तो कॉन्टेस्ट के राइट कॉर्नर में पॉइंट्स है एंड पॉइंट स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा होगा। 1 पॉइंट किल का, प्लेसमेंट पॉइंट का 1 पॉइंट, चिकन डिनर पे अलग अलग पॉइंट है जो कि 10 20 30 40 जाएंगे। बाकी आप खुद भी जाके देख सकते हो ऐप के अंदर, लिंक मैंने बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड उसके बाद गाइस चलो फैंटेसी टीम बनाते हैं कॉन्टेस्ट की। मैंने यहाँ पे इस बार बड़ा कॉन्टेस्ट चुन लिया है, 16,000 के प्राइस पुल वाला। मैंने एक टीम ऑलरेडी बना रखी है। तो दूसरी टीम गाइज, आज का टीम बनाने का जो स्ट्रक्चर मेरा रहेगा पैटर्न, टीएम को चूज करने वाले। द रीजन इज टीएम को चूज करने का क्योंकि उनका मोमेंटम एंड फ्लो बहुत तगड़ा है। एंड बेकन आज मुझे लग रहा है कमबैक करेगी ड्यू टू द स्टैट, इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा था एंड कल का डाउन जाता है जो हमने पहले भी देखा हुआ स्टैट के अकॉर्डिंग। एंड एचवीवी को लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है एचवीवी द कंसिस्टेंट टीम, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इसकी कंसिस्टेंसी को लेके। कैप्टन और वाइस कैप्टन की सारी गेम रहती है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात करोगे, बेकन आज मुझे लग रहा है टीम फाड़ने वाली, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ग्रीन ग्रुप में कि इनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहता है सीन।
बाकी यस ज्वाइन कर लिया कॉन्टेस्ट को। हियर वी गो गाइस, हम ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जल्दी जाके ज्वाइन कर लो मेरे भाई। लेट्स गो बॉयज, जल्दी से ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर फैन क्लैश आ रहा है, आपको सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। जाओ जल्दी से ज्वाइन करो, प्रिडिक्ट करो। कल हमारे लॉन्डो ने बहुत ज्यादा कैश रिवॉर्ड अर्न कर भी कर लिया है, ये मैं पहले ही बता दूं। हमारा एक लॉन्डा मेरे को बता रहा था, कोई प्रणय भाई हमारे 500, हमारे 150, एक डीप भाई है 150 कल अर्न कर चुके हैं। तो जाओ आप ये मेरी प्रिडिक्शंस थी कैप्टन वाइस कैप्टन की, बाकी आप भी कैप्टन वाइस कैप्टन अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हो वहां पे अपनी पिक के अकॉर्डिंग। ये मेरी पिक थी, सॉरी ये मेरी प्रिडिक्शन नहीं थी, ये मेरी पिक थी, ये मेरा फैंटेसी पिक था कि ये टीम अच्छा खेल सकती है। लेट्स गो बॉयज। यस स्पैम मत कर गलत। ओके, तो दीज आर माय पिक्स गाइस फॉर टुडे। मैं आपको बता चुका हूँ पिक्स, नॉट द प्रेडिक्शंस, इट्स माय पिक्स गाइस। ये मेरी पिक्स है फॉर द टुडेज मैचेस। बाकी यस चलो, फैंटेसी पॉइंट भी मैंने एलैबोरेट कर दिया आप लोगों को। व्यूज ऑन फेस ब्रो, देखते भाई आज के दिन पे फाड़ भी सकती है, बट हमने वैसा कुछ ठंडा ही परफॉर्मेंस देखा इनका। होप सो आज फाड़ दे, मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं चले दे पे यार, सोनी है ऐसा नहीं चले दे पे यार। ब्रो शाउट आउट दे दो, बिग फैन मिया भाई, बिग शाउट आउट टू यू। आगे नहीं बोलेंगे। अरे मैं भाई मेरे अटेंडेंस ले लो। ब्लैक शैडो भाई आप तो वही हो ना, नाम चेंज करके आए हो यार। नॉक्स गेमिंग एसजी जीजी एसजी जीजी। Also Prime Game, you get some exclusive in-game चलो भाई। rewards for free if you pick up things with Prime. And you know what? I ordered myself a little something. Maybe it'll be here by the time the event's done. It should be, because you know what? With Prime, you get orders delivered even faster. Fantastic stuff. Maybe I can get my own Mama Boy denim jacket sent to me for the show. Guys, मेरे पास ना एक वो है, क्या पता है क्या है? I always have to come to you when it comes to this. The Maserati event. एक सीन है guys। Till the 31st of December. कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा। Right now I am telling nothing to say। टोनी कैरी कर रहा फेस को। टोनी भाई तो यार बट इस बार टोनी बोलो क्या बोला है, इस बार ठीक ठीक था। स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था कि टोनी लग रहा था, ओवरऑल ओके ओके था सीन। We can roast you a little bit further here. After you guys at home give us a follow here on all of our official channels with PUBG Mobile Esports, also our own little channels as well. You can do all of that there. But if you guys were watching before the countdown finished off, we had Flavor on the stage doing an interview with Faze Clan. And while we were watching this on the show, we're sitting there thinking to ourselves, is he going to throw? You're getting saved right now because we're not going to be back on camera for a second. We'll come back to that. Just remember, Faze Clan, keep that in mind. भाई एसजी को क्वालीफाई करने को कितना पॉइंट चाहिए? I guess 30 to 40 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट में सेफ है। आज गाइस ग्रीन वर्सेस येलो, लेट्स गो बॉयज, आ जाओ। सारी चीजें हम बता चुके हैं आपको, अपनी टॉप 4 पिक भी हम लगा चुके हैं फैन क्लैश के अंदर। पिन कमेंट आ रहा है, जल्दी से जाके पिक लगा लो। आज तुम्हारा भाई अगर जीत गया तुम सबको पार्टी दे देगा भाई, सारा पैसा तुम्हारे पे उड़ा देगा जो भी जीतेगा, अपना नॉलेज के रिस्पेक्टिव में। ठीक है ठीक है चलो। इंटू 2 कर लेते एक बार। याद रहता है आपको लॉर्ड्स ऑफ लव? यस मेरे भाई, आपने फोटो चेंज नहीं करना भाई, याद क्या रहेगा फोटो चेंज? फोटो चेंज कर लेते तो याद रहे, फिर तो मतलब ही नहीं था याद रहेगा। अरे अरे क्या बात है। आईसी भाई टॉप डैमेज फ्रॉम द ग्रुप स्टेज आ रहे हैं यहाँ पे, ग्रुप स्टेज के डैमेजेस बढ़िया। बेस अल्लाह से तो भाई बंदा हक्कड़ है वैसे। हेलो ब्रो, हेलो मिथुन भाई कैसे हो ब्रो? नोवा कहाँ है? नोवा ब्रो ग्रैंड फाइनल्स, डायरेक्टली टू द ग्रैंड फाइनल्स। टॉप 4 डैमेजेस, एचवीवीपी, आईएचसी, वैम्पायर, अल्फा 7। लेट्स सी मेरे भाई क्या होता है आज के दिन पे। हेलो ब्रो, हेलो एमजीएक्स, आ जाओ लॉन्डो। एंड जैसे ही मैच स्टार्ट होगा आप सभी ने मतलब क्या बोलोगे, आप सभी ने ना हर्ट स्पैम करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? throughout the first day of the survival stage as well, so and it was like a difference of 20,000 as well. So जैसे मैच स्टार्ट होगा अपनी फेवरेट टीम के लिए गाइस, यहाँ से एनर्जीज भेजना स्टार्ट कर देना। चलो बॉयज, टॉप 4 एलिमिनेशंस, एचवीवीपी। द रीजन गाइस, द रीजन व्हाई आई चूज ऑन माय फैंटेसी टीम एचवीवीपी, जो मेरी टॉप पिक्स है उसमें एचवीवी क्यों है, एम्पायर क्यों है, द रीजन समझ रहे हो? रीजन, यही रीजंस है। मैं पता नहीं मैं स्टैट के अकॉर्डिंग बहुत जा रहा हूँ, बट कल बेनिफिट भी देखने को मिला, बट देखते हैं
क्या सीन होता है। Exactly. The thing is, if HVP PMGX do is really so well in qualifying underrated. to the grand Yes finals मेरे for Formula, I भाई, think they're देखते gonna have a हैं। risk हेलो of ब्रो, being IEC like, कितने we're पॉइंट्स लेगी आज, interested in picking you जिस up, तरीके से IES का HVP कॉन्फिडेंस है actually ना, quite मेरे को लग good रहा है for IES PMGC, आज फाड़ेगी तो but गंदा it's just फाड़ेगी, not वरना great for मिड them so टेबल far पे in this रहेगी। tournament. But I'm really hyped to see what HG can do because as we ऐसा mentioned, मुझे लग रहा है गाइस, another ऐसा हम Mongolian सोच रहे team हैं। कल यार already वेम्पायर qualified यार directly बीस्ट to the मोड पे grand चली गई थी finals. भाई। It would be कल super hype to वेम्पायर have ने the जो two आई है elite पीछे से जो Mongolian एंट्रीज team मारी making the लास्ट grand मैच finals, पे, so a lot of और potential उसके बाद जो pressure वहाँ on पे the side फाइट हो of रही थी, IES. किसकी फाइट हो रही थी? अपनी And the एसजी की fact फाइट हो is, रही थी, right, एसजी right, की they और were the किसकी team फाइट to थी bring टीम Mongolia की? to the forefront दोनों को of वाइप PUBG करा है। Mobile फ्रीक to का show यार us ये what मूव that यार, ये region बहुत of तगड़ा PUBG मूव था। has बेकन का for ले लिया भाई experience पूरा। and for skill, and it's nice to see another team rise through the ranks. एंड But बाद में to शॉटगन see भाई the old तगड़ी। guard, the original, the OGs get through back to the S12 के finals, that भाई, would be इनको insane. का मैच बहुत तगड़ा हुआ था। ये कल का फर्स्ट मैच का मूवमेंट था। फ्रीक ने बहुत तगड़ा बोलते हैं ना जिसको। एंड ये वाला मैच, अरे भाई इसमें यार जो टाइटन ने वाइप करा है बीटीआर को भाई। Going through some of the replays of yesterday, Enigma Sunstorm. Listen, can we not? अरे ये नेट, They're not even playing today's game. चेटे का नेट एक क्या आया था भाई, ये वाला नेट बहुत बहुत प्यारा There's a नेट lot था। of great ये individual वीपी plays, डोमिनेशन we हुआ saw था इस yesterday. मैच We पे। start things off with यही मैच Faze, गाइस and वीपी के finish कल off काफी with अच्छे Faze गए as well. हैं We had a couple अपने of great city finishes रैंगल्स, to काफी अच्छा unpack निकाला this. कल। But बेकन तो looking चढ़ गई ahead थी to बे, what's बेकन coming का up भी लग here, रहा था I एक mean, पॉइंट को कि there's ले one जाएगा team in बेकन। particular that I'm sorry Max, I'm gonna have to make you talk about. दैट्स It's कोविड Galo. 8 गॉडल का I सपोर्ट think if we're to be के completely blunt about it, कैन both एलजीडी we saw क्वालीफाई इन that फाइनल्स? PMPL, यस ब्रो, दे we did कैन not यार। expect them to get ग्रैंड into the फाइनल्स की बात survival कर रहे हो, stage. उसके लिए तो They got through on कंसिस्टेंट points, खेलना पड़ेगा, originally did क्योंकि ये PMGC, पॉइंट but to make it रीसेट to this होंगे next stage, लास्ट we स्टेज thought के लिए। wouldn't be मतलब happening. 12 मैचेस में I फिर feel से like they have जीरो a से lot of खेलना pressure पड़ेगा on their टीम्स shoulders, को। but they have been able to at least survive for बीटीआर now, का and रश that's ओपी at था least ब्रो really a good बेकन पे। sign. अरे I भाई feel मैं like तो we knew it देख was के gonna be चौक tough for गया them एक in पॉइंट PMPL के लिए because the भाई। addition of the बीटीआर CIS teams is gonna make 1 the साल region का as a गुस्सा whole just निकाल a दिया lot tougher to बीटीआर deal ने। with, लेट्स and I गो think बॉयज। that no, they made it पॉइंट्स further टेबल than I potentially 12-12 का initially कर दिया thought. So अपना far they've living VSPN up ने, to some बढ़िया। good expectations. I want to see if they can maybe go to the last chance. That would be my वेम्पायर next question. एचवीवी I mean, इनको अल्फा 7 they एलजीडी qualify and भाई Admirals ग्रीन didn't. ग्रुप Like, that to me बहुत is हार्ड just like, खेल what's रहा है। और आज happening ग्रीन to ग्रुप ने this world right अल्टीमेट now, खेल you know? दिया ना भाई, Let's नीचे की take a टीम look के at our बुम्बा overall हो rankings जाएंगे। of Sandstorm from the first day. बुम्बा इन द Vampire सेंस currently in नीचे the की टीम lead, का but only कंपटीशन by फिर 2 अलग ही बढ़ points. जाएगा, There क्योंकि really ऊपर isn't a है ही big gap कंपटीशन, नीचे का developing फिर pretty आपको much पता ही है। anywhere across the leaderboards. हाँ They मेरी could be जान, maybe यस मेरी between भाई 10th and बीटीआर 11th, का but it's all रश about that top 16. बेकन पे। यस, Yeah, एनी let's talk चांस about फॉर the आई top 16, but इट्स the ओवर fact फॉर that देम। Vampire नहीं ब्रो, ऐसा Esports नहीं है are हमजा भाई। in first place जहाँ without a पे single आपकी सोच defeat खत्म there. होएगी, They managed जहाँ to पे get आप a top सोचना 2 and बंद top कर दोगे, 3, वहाँ से and स्पोर्ट्स they कई बार even स्टार्ट had भी होता 2 है। games where they हमने ended up बहुत in बार देखी है 14th ऐसी चीजें place. भाई। सो 2 games in 14th समझ place, रहे and हो they're भाई, still leading इट्स the नॉट charge. Not अबाउट that द big of a एंडिंग्स difference, ब्रो। but when we're looking towards the जहाँ second से place, this एंडिंग is होती where है वहाँ things से get स्पोर्ट्स interesting कई बार because स्टार्ट भी हो जाता है Power किसी टीम। Gaming are the आप only सोचोगे team नहीं from वो Group कर B लेगा, who बट are वो कर sitting at the लेता very है। bottom. If बहुत they सारे don't start up एग्जांपल्स है today's गाइस, games पास्ट में आप with an देखोगे, insane अभी performance, रिसेंट में देख लो if we कितने don't see a एग्जांपल्स हैं। massive change from game 1, they are going to struggle जो throughout लोग the day, सोचते and नहीं they're है वो not हो going जाता to है make कई it बार। into सो the next यस, stage. क्या Well, पता हो remember, जाए तो बी Green, at पॉजिटिव। the end of सबसे the बड़ी day, बात है they're gonna be पॉजिटिव रहो, done. And if अच्छे ही होगा। you're टीम there, if you're समरी Power, वीपी like you, इनको well, you एवरेज have to be in a good, एलिमिनेशंस। you have to put in a good performance today, ठीक or है you're गाइस। gonna be ओ left हमारी out today, रैंकिंग्स काफी ज्यादा especially if you मैच fall कर out रही of है top गाइस। ये 16 रैंकिंग तो before हम we ऑलरेडी finish दे things चुके हैं। off. एवरेज We're डैमेज, looking at some of our top एवरेज performers डैमेज from कवर नहीं yesterday. करा हमने, Vampire एवरेज had average एलिमिनेशंस damage, कवर as you करी है। mentioned before, Sandstorm going out in टॉप 5 14th place रेटिंग twice, नहीं, and इन्होंने still टॉप pulling 5 off ली that लिया है, high हमने of टॉप numbers 4 लिया है। is टॉप pretty 5 अगर ridiculous. लेते तो अच्छा रैंकिंग है I वीपी mean, का। the मेसी amount की of बात times कर that रहा था they गाइस, just प्लेसमेंट pick पॉइंट the right time जोन में to प्लेसमेंट enter the पॉइंट में zone काफी is अच्छा just खेल रही है absolutely वेम्पायर की टीम। ridiculous वैसी from चीज the की side of बात कर रहा था। Vampire. इन्होंने We टॉप can definitely see 5 how they लेते were हो able to come out on तो top and आपका get them 3 to बार Real and ये get आएगी that टीम, first place and 2 बार and इनके bring it एक again बार this फिर year. आएगी So आपकी far, टॉप just absolutely 5 to insane 10 के to see. अंदर। एंड Are you एक sure दो it's मैच not इनके too जो खराब big हुए वो for
हुए। like stand out for the team of Vampire. He had half the eliminations of his team at one 4 point to in the 5 tournament. पॉइंट का It's डिफरेंस definitely लग after रहा game है, 4, बहुत game टफ है। 5. पीएल की Schweppes वाइब्स is आ रही है वे, absolutely on the ball देखते हैं so भाई। far in this tournament, बट and पीएल if में they ऐसा can भी नहीं होता ना कि replicate it 24 today, टीम their spot, I mean, their spot 24 in the टीम last top is almost pretty 24 much 24 confirmed, but 24 this has potential to also convert हाउ in a मेनी spot for टीम्स the विल grand final क्वालिफाई? game. We said 16 it, मेरे भाई Thailand फॉर is द looking लास्ट great this स्टेज। PMGC, हाँ भाई and मैं आ you know, गया, with आ Faze जाओ joining the भाई, mix बहुत today, बढ़िया आ गया, अब I अच्छा think लगा। we can टॉप expect some 16 good विल things from the क्वालिफाई, whole ओके region मेरे right भाई। now. लाल Well, खोपड़ी speaking of ओपी, Faze, यस मेरे thank you भाई। so much, No, Max, for no, bringing no, them no. up again. Typically, when we talk about Faze and we have someone being interviewed by or for Faze, we typically see them throw भाई up एक बार टॉप their 5 side. टीम क्वालिफाई कैसे Now, करेगी? when talking about it while भाई watching the एक बार interview, टॉप Max will 5 say, टीम "Well, how do क्वालिफाई you throw up कैसे the side? करेगी? He's एक holding a बार microphone." If you're at home and you know what it is and how to do it, then you kind of पिंकी understand भाई how मजे ले रहे हो क्या? ridiculous of a comment that is. But Max, अरे I want to भाई see you सिंपल सी provide बात है, what जो the अभी Faze fans 16 suck. टीम्स है, I've been दे आर trying गोइंग for टू like बैटल 5 minutes लाइक and ये is जो आपकी it अभी जो like टीम easy? खेल रही है, I don't, और bro, I don't रैंकिंग remember. बनेगी I कल don't के दिन पे, remember. कल के दिन पे फाइनल और रैंकिंग होगी It's this. सर्वाइवल स्टेज का, ठीक है? There. F. तो That's it. उसमें से टॉप Oh my 16 God, टीम्स yeah, होगी, yeah, वो yeah, जाएगी yeah, आपका yeah, लास्ट yeah. चांस के लिए। वो 2 दिन I got चलेगा, yes. सैटरडे और संडे। Okay.
I thought it was like उसके बाद जो something टॉप like you'd 5 have to टीम go होगी like वो that, क्वालिफाई हो and जाएगी फॉर द see. पीएमजीसी। I don't remember. समझे कि नहीं समझे? That's on कट ऑफ me. कितना होगा योगी Well, भाई? you're not allowed भाई to अभी pick हम FaZe Clan. ये I तो think कह it's नहीं a team सकते, to लॉबी watch, टू but लॉबी you can भी eventually डिपेंड get the करता है। अगर logo लॉबी so you can see येलो who ग्रुप you की got परफॉर्मेंस reject पे in आज पे there. डिपेंड Happy करेगा to see them actually talk to me about कि them. कैसा वो खेलती है। बाकी I wanna यस, talk about them हाईएस्ट टू mostly because I हाईएस्ट feel आप really 80 sad लेके for them. चलो, They 80 प्लस lost में their आप spot to सेफ the grand finals शायद in the से हो final सकते game हो, to TGK. Like, that शायद was क्या just an कंफर्म, absolute, like, शायद बोल लो my heart 80 goes तक out to टॉप all of 16 Japan right इस now after इतना that match. हाईएस्ट Felt देखा really नहीं आज bad, तक। but अगर I ये भी would हो have गया to तो वो say अल्टीमेट this चीज हो is the जाएगी, 80 PMGC तक where अगर the पहुंच गया। Japanese team has looked the strongest they have ever मिनिमम looked. मैंने Like, they've 40 been टू a 50 ही देखा है, hyper-consistent team 55 when they took some हाईएस्ट top games. It was अदर really, लॉबीज really में। confident अब wins. पता They नहीं were यहाँ की super लॉबी aggressive. वैसे I भी feel like हार्ड है ही, this, once again, is तो the अगर most आप ज्यादा भी aggressive लेके we have चलोगे seen the 65 टू Asian reject 70 in देखते हैं all बाकी। previous PMGCs where they have भाई participated. एक बार So 5 टीम I gotta क्वालिफाई say, कैसे my करेगी hopes are बताया ना really भाई, high अभी for them, आपने and I सुना really नहीं, hope मैंने we get to बताया see तो them अभी in the आपको। last chance, and if not, maybe making the grand finals. I think फाइनल्स they जैन have the 6 7 potential 8 to यस। make it अरे this. मैचेस कब स्टार्ट I होगा? think just like 2 South मिनट के Korea, अंदर we see 4:30, Japan 2 every year 2 just मिनट trying to बचे हैं। get better and better and better. कास्टर And ने thinking पी back to रखी है, what रेड ग्रुप को movies प्रिडिक्ट on कर रहा है। the first PMGC we had, Max, we अबे were pleasantly surprised at them. गाइस, But you know आप what, Sandstorm, क्या चल रहा है बे ये? Power, talk to me. I mean, भाई ये I क्या चल mentioned रहा it before, and I'm है? gonna mention it again, कास्टर mention it again. कास्टर की They गलती have है to या start फिर off with किसकी a massive गलती है change भाई? ये today. They need प्रिडिक्शन to वाले sort की of, at गलती है। least with the chicken बॉक्स और kind of i8 को रखा alleviate हुआ है some of that बे, pressure and the fact आज that तो they're in खेली नहीं last रही। place before we even start today's games. क्या That कर has रहे to हो भाई change. साहब? Skylights Gaming and Bacon, specifically Bacon, सैंडस्टॉर्म they did सस्ते get नशे। themselves a decent dinner, yes, but you need to continue अरे that performance भाई, if you मतलब want to कमी guarantee a कमी spot नहीं, in the कमी PUBG फील नहीं scene as होनी थी well. मतलब। Well, we're gonna find out soon. We're एनालिस्ट gonna be भाई, starting off हमारे the day एनालिस्ट here with भैया। our first match of 6. It's टुडे gonna नो be all एलजीडी, over यस मेरे Twitch, so भाई, we'll bring you all the नो action. एलजीडी। Put बाकी y'all गाइस, down. इफ यू न्यू टू द स्ट्रीम, हमारे चैनल का रूल है, मैच स्टार्ट होने वाला है हमारा 50 सेकंड्स के अंदर, तो हर्ट स्पैम कर दो गाइस। आईएचसी के लौंडे कहाँ पर है? आईएचसी वाले फैंस हमारे पीले हर्ट स्पैम कर दो, एसजी वाले नीले हर्ट्स, एचवीवी वाले ब्लैक हर्ट स्पैम कर दो या वाइट कर दो, लाइक वेम्पायर वाले ऑरेंज हर्ट्स। तो गाइस कर दो हर्ट स्पैम। मैच हमारा स्टार्ट होने वाला है विद इन 30 seconds ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। आ जाओ। Not all of them. I do think this is probably our weakest. ऐदा नहीं चलते प्यार सोनिए। डीडब्ल्यूजी भी आज फाड़ सकती है मेरे भाई। डीडब्ल्यूजी की हमने कल हमने ज्यादा बात नहीं करा, बट यस इनका भी हर कुछ तगड़े वाला सीन है। डीडब्ल्यूजी भी मुम्मा मचा सकती है। देखो तो मैच क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? हो रहा है ना ब्रो, 18 सेकंड। कास्टर कसौली में मालूम कह रहे कसौली में पकड़े जाओगे बेटा, ये नशा नहीं है पूरे। All things considered, I do think there's teams that should be below them. However, they have shown us सब्सक्राइब ठोको अभी को। यस मेरे भाई, सब्सक्राइब ठोको जल्दी से, ठोको ठोको सब्सक्राइब। चलो भाई, here we go, first match of the day, let's go boys। जय माता दी, चलो। We'll see what they can get done here. Honestly, a lot of these players you should be knowing, to be honest, by now. I mean, Duello, Reiji, Divine, just this. This is a एलजीडी कहाँ है? कल खेलेंगे मेरे भाई एलजीडी। कल फिर ग्रीन बैठ जाएगा और रेड आ जाएगा। ठोपा ठप बहुत बुरा लग रहा है, मतलब ठोपा ठोपा मतलब। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया रोहन भाई, you are playing very well. If you're watching, you are playing very well. आ जाओ। अयोगी भाई क्या हालचाल? दीपेश सोनी भाई बहुत ज्यादा बढ़िया। अकॉर्डिंग अ हार्ड फ्लाइट पाथ टू द टीम्स, होप सो किसी के क्लैशेस वगैरह ना हो, ड्रॉप क्लैशेस, व्हीकल क्लैशेस जो होते हैं सॉर्ट हो जाए मुद्दा। लेट्स सी। एक प्लेयर्स भी अभी के लिए बहुत मैटर करता है, स्पेशली फॉर द ग्रीन टीम्स, क्योंकि आज के दिन पे उनके 6 मैचेस होने वाले, तो ग्रीन टीम्स का रहेगा आज के दिन पे कि समझ रहे हो ना, कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स अर्न कर लिए जाए। बाकी लेट्स सी क्या होता है। Places up north will be harder to get to. कल मैं जीत गया इंग्लिश। ओके मेरे कल काफी लौंडे जीत गए बे। नोवा कहाँ है? नोवा ब्रो ग्रैंड फाइनल्स दिखेगी अब अगले साल, नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8 जनवरी को, 6, 7, 8। लव फ्रॉम नेपाल ड्यूड, थैंक यू सो मच रामचंद्र लमसाल भाई। लेट्स गो आईसी, लेट्स गो रोहन भाई, चलो। ओ बेटे नहीं, ओ मेरी ये क्या जोन आया बे। Yeah, this is a really rough one to start off the day here for a lot of these teams at the moment. Getting all the way up towards that north side of the circle is going to be tough. A lot of these teams should be making that early. Beşiktaş though, unfortunately, pace does go down इनको को मेरे को लग रहा है शेल्टर इज लाइक अ luckiest place to the teams यार। From yesterday, a fantastic amount of work done from basically just him with the support from the rest of his team. Currently sat
very high up in the rankings. व्हीकल भी उठा लिया, फिनिश भी ले लिया। अरे टीएम आ गई, टीएम के लौंडे के पास पिस्टल है, पिस्टल दिख रही है मेरे को। टीएम वाले लौंडे यहाँ से आ जा रहे होंगे, हार्ड प्लाट पता पकड़ा इसने। वो लगा देगा गाड़ी तो ले सकता है। टाइमिंग का फर्क होगा, 2 सेकंड का फर्क होता है, ट्रेसिंग हो जाती तो बूम बाम हो जाता भाई। 2 बंदे ले सकता था। बीजीके भी जा रही है। लेट्स गो ऐसे, लेट्स गो मेरे भाई। एसटी को आईएचसी ने पीएमजीसी से बोला था मिलते हैं, पीएमजीसी में मिलते हैं तुमको, लेकिन येलो ग्रुप में भी क्वालीफाई नहीं हो पाई। The PUBG Mobile battlefield. Stand out on एसटी the को आईएचसी ने battleground. ओके। The message पावर that आज icon खुश set, grab होगी, नो in एलजीडी। PUBG Mobile now. Absolutely. पावर खुश क्यों होगी भाई? पावर अभी सबसे बॉटम पे चल रही है और ग्रीन ग्रुप पे। आज के दिन पे 50-60 पॉइंट नहीं लिए तो बस खत्म है स्टोरी। Very jealous indeed. के बाजी यस मेरे भाई। And also, I'm jealous of all of you at home who do have access over स्पेशल towards क्रेड that ऑप्शन चला। 2022 अब तो गाइस मेरे को लगता है PMGC वोटिंग होना special कम break. हो That's गया running होगा from अब तो। December 5th, so जो not quite out ठीक ठाक yet. वोटिंग हो रही थी Through to S2G January BTR 8th, वगैरह but को, you अब have तो a वैसे भी long, स्लॉट long रिवील round to कर make दिए that up पबजी over वालों an ने। entire month. So make sure you are playing over Christmas. एलजीडी क्यों नहीं Spend खेल time रही with ब्रो? family as ग्रुप है well, ना, but ग्रुप also do ग्रुप make के sure you अकॉर्डिंग can मैचेस handle हो that रहे हैं। इट्स 2022 लाइक special break. ग्रुप अकॉर्डिंग मैचेस, Absolutely. Make ग्रुप के sure you're अकॉर्डिंग heading on मैचेस। over and checking that व्हेन विल out. एलजीडी प्लेइंग? Beşiktaş- ओहो Oh, आज क्या हो रहा है? मैं still इसी की going. चीज की बात कर Peace, रहा they था lost यार। one earlier, sure, but they are gonna बीजीके ने have एक their बंदा पकड़ लिया, revenge चलो एक on पॉइंट Satan मिला। this time around to be able to ये pick up a चीजें point. होती है गाइस हार्ड A हार्ड little bit फ्लाइट of a पर। ये boost to them, नहीं of सोचा course, था। in both of those teams' first games of this stage of the tournament. Shots going through, and बढ़िया। actually Skylights Gaming स्टार्ट नाउ इज 3 going 1 for 1 on the मिनट्स। trade. Ragnar unlikely to be able to get back up here. That is an impressive amount of eliminations that are going through this early on, John. डेथ, Honestly, I'm रैग्नार, somewhat जीके का पहला ही surprised. मैच बूम बम। However, that's fine. अयोगी भाई आपका Okay, फेवरेट टीम कौन it's सी है? the सारी Suns फेवरेट है playing भाई। path, right? नीमा It is फिनिश the लिया। Suns playing path. Moving up. जीके 2 100%, मैन है yeah, भाई, we're अब having a दिक्कत होगा lot of जीके को। crossings at this point in time. एसटी Geekay, कौन से प्लेयर obviously लेने losing वाले one of हैं their मुझे नहीं players पता there, ब्रो। क्या not सीन है एसटी great का? for कुछ them. प्लेयर उठा रही है क्या? And now we're even looking down towards Tem Entertainment versus Beşiktaş. Zessi, हिस्सा है क्या? Enjoy, प्लेयर Son उठा रही है क्या? HP नहीं looking to finish off this fight. Losing a player early in peace, not ideal, but भाई न्यू कट ऑफ speed में at भी which Zessi was able 85 to टू pick up that 90 individual प्रोबेबली। elimination, भाई kind बहुत of बोल दिया, ridiculous. 85 टू 90 बहुत हो गया, बट देखते हैं। वो डिपेंड करेगा Certainly लॉबी was. के I ऊपर, mean, कट ऑफ डिपेंड that करेगी उनके brought परफॉर्मेंस के ऊपर। देखते हैं आज येलो ग्रुप कैसा खेलता है। a little बट bit of जितने भी spice आज to तक their के हमारे life, I'm मैचेस sure. हुए हैं ना, Beşiktaş 12 मैचेस के बाद हाईएस्ट standing off on the west 65 ही side of कट ऑफ गया है, Yasnaya. जितना देखा हमने। Mariana, PMWI का भी Mariana. लिखा था, At the moment, they are मतलब kind 12 of मैचेस locked into बाद। this by Tem बट वहाँ की by Tem मेंटालिटी Entertainment. Tem Entertainment सिमिलर absolutely काइंड ऑफ ही pushing थी, forwards बट on this. यहाँ I पे कुछ wonder if अलग है Beşiktaş क्योंकि यहाँ rolled 2 up on दिन the है, वहाँ western पे side थोड़े ज्यादा actually दिन थे। after the loot came through. The double barrel TEM एंड in hand. Bevy on BGK, the बट top क्यों rope कर with रहे हैं the ये लौंडे? scar. समझ नहीं आया मुझे। Try and take some shots down, stop any pushes coming through, but Enjoy on the ground floor has a player on इससे the पहले inside भी to तो ये worry उतरे about. Double हैं, barrel एक ही of ग्रुप his में own, है, has a उस टाइम भी vector as फाइट नहीं लेते well. थे, बट आज क्या इनको फाइट लेने की पड़ी है? So cooking that nade, but so is Zessi. Putting them back. DW का बंदा है न्यू प्लेयर है। टोन भाई ऐसा मेरे को तो पता ही नहीं, आप बोल क्या रहे हो? किस में चेंजेस हो रहे हैं? ओ बेबी बेबी, PGK इज ऑन रिस्क। गई भाई BJK गई। एक HP गया, एक ही बंदा भाई। मोरमैन का फिनिश भागा, मतलब ही नहीं था बीजे। पता नहीं ये किसने एग्जीक्यूट करी फाइट। दोनों व्हीकल लेके तो आए हैं, बट किसकी तरफ से आई है फाइट? बट ये लेने का मतलब नहीं बनता भाई ऐसी सिचुएशन के अंदर। नो डाउट येलो ग्रुप के पास मैचेस होंगे, बट फिर भी जोनी अकेला नहीं जाएगा, सनी जी नहीं है। Son HP will just be leaving this alone though. चलो भाई भाग गया। Fend off against Beşiktaş, Son HP end for the win. चलो भाई If बेकन you don't इनको realize why, you know, you've got first to sixth place on the नहीं करेगी, rankings बेकन currently निकल with a जाएगी lot of पोजीशन, points here मोस्टली because पोजीशन के लिए जाना two चाहिए groups बेकन played को। 6 of their total 12 matches yesterday. बेकन नहीं रुकती And भाई। now we have our new group बेकन ऐसी टीम Yellow है कि coming in, बाद में दिखेगी आपको, लास्ट के एंड के सर्कल से बोलेगी हेलो This is our कैसे हो secondary भाई। group, 8 teams, and they will be playing their 66 games today. ब्रो शायद से कोई को लोन पे उठाया गॉड एलएसटी। मुझे नहीं पता ब्रो, ऐसा सीन है क्या? आई डोंट नो।
all the way up. Path, Inco Time pull up a little bit closer on the compound, and Bacon Time have to divert a little bit further south. Be chivied on their way on this northern side circle. I mean, Inco getting into position very quickly here. They're loving to set themselves up into some very central spots with this northern circle, though less than ideal to get towards that center early on, purely because there are going to be so many teams who have already made their rotation up on Power, this side of the map, most crossing the waters early. वाली टीम जिसको भाई कितना I क्रूशल think, मैचेस है Skylight's भाई, Gaming did a पावर good को हर job to मैच get से up 10 towards पॉइंट का Survey एवरेज as निकालना है they भाई did आज के fend दिन off पे some अगर teams उनको coming क्वालिफाई their होना way. है It's something that Box Gaming 10 struggled पॉइंट का yesterday, एवरेज which is पर getting मैच into a spot and निकालना then ही just पड़ेगा। really अगर not नहीं निकाल holding that पाते हैं same तो समझ presence, लो in कि which case हो गया later काम। on you essentially just became a stepping stone for other teams. So it's good news for Skylight's Gaming, बाकी लेट्स सी क्या especially in होता है। terms of their point scoring. 36 right now. I think if they want to look safe in towards those finals, they do need to pump लेट्स those गो scores आईसी, up to लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। आरसी A little काफी अच्छा bit. And of परफॉर्मेंस था। course, लेट्स सी आज today के दिन is पे the क्या last परफॉर्मेंस chance रहता for है इनका। Group Green to get those points on the दीदी card ड्यूटी कब as खेलेंगे well. मतलब? 6 games remain for them. Another docket on the menu for the yellow teams, but they'll still want to be putting as ओके much as they ओके can ओके। हार्ड up and शिफ्ट on the किधर की wall. तरफ, किधर Set की that तरफ आएगा bounty हार्ड high शिफ्ट if गाइस? you can. नहीं आया आज हार्ड शिफ्ट, HVVP क्या बात है। and आज IHC both सेंट्रलाइज शिफ्ट moving दे in दिए from the भाई। south side, west and east respectively. You see they'll have to make their way up and अगला most हार्ड likely शिफ्ट हो सकता है north शायद of the से, river. बाकी Most पता teams नहीं। have already committed to that north side though, so might be tricky. However, HVVP, it's kind of home भाई ground साहब ये advantage क्या on चल that रहा west है end, भाई? right? North George, their drop spot. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Definitely a possibility to be able to get themselves into a nice spot here. Inco though, again, Skylight's Gaming, torn apart. This team is looking very good, and it feels like that confidence factor is coming in clutch at the moment, and that is very essential for them. Like you said, Group Green, this is their last day of जोनाथन play के today. अचीवमेंट में That अरे अरे includes अरे Inco at the moment. So ये क्या they चीजें would चल like रही to भाई? bump their scores up तो from चीजें मत करो 63, बे। get themselves into a very, very solid position where it's very unlikely that they'll fall out. Skylight's Game, on the other hand, 36 points, losing a play like this early on, as well as being in Group Green. Their last day of play, they don't want to be going out with a set of bad games because it could quite They can easily play be like that today Exo. Skylight's Gaming get ऐसा 10 क्या? points on the day. That is something that could 100% happen, in which case yesterday getting that decent scoring in towards that medium bracket means absolutely. जाने दो लॉकडाउन किट है वो। अरे चलो भाई, रिजेक्ट एसटी एनवर आरजेड। बट ऐसा क्यों होगा? उनकी लाइनअप तो सेटल है ना एसटी का, कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? फर्स्ट अरे अरे नोवा एसटी मैच कब है? मतलब 6 तारीख को, अगले साल जनवरी। मतलब ऑलमोस्ट जब भी आप अभी देख रहे हो, बस अगला 1 महीना ले लो, 30 दिन के बाद। वेम्पायर आ रही जी गाइस, बिल्कुल एजिस से रोटेशंस, बहुत बढ़िया। 16 टीम्स अभी भी लॉबी के अंदर, सेकंड जोन आपका क्लोज इन होने वाला है। वेम्पायर पूरा एज एग्जीक्यूट कर रही है, कल के दिन भी मैंने इनको देखा था। एजिस में एम्प्टी स्पेस ढूंढते हुए रोटेशंस मारती है, बढ़िया। Could pose a bit of a problem, I think, for these two teams in particular, VPE and HVP, almost want to work hand in चलो hand. ठीक है। I know it's आईएससी a भी आज little खेलने bit वाली, crazy to कितनी say सारी it आज because they're in खेलने their वाली first टीम्स and है भाई। second place at the moment, but being वेम्पायर both होगी, in Group एचवीवीपी Green, होगी आपकी, and आईएससी both होगी। looking to essentially get the टीम्स last खेलती chance. है आज। Yes, right now it'd be great to be in first place because चेंजेस you नहीं, get न्यू that big प्लेयर आ bump in रहा है, prize 5th pool. प्लेयर। हाय ब्रो, It's not कैसे a हो massive अनुराग? bump मेरे though, भाई it's just बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। $1,000 up कोई every नहीं है, single इन्हें time बेक you कर jump दो। on placement. But for both these teams, it would be unwise to fight against one another when they both know that they're both very capable at taking each other out. So I think that for both these teams, yes, ओके लिए ये आया ना थोड़ा हार्ड slight शिफ्ट। distance from one another. It वीके के nicely पास comes गया इस down to बार, it, you वीवो के लौंडे के पास 1v1 एसजी in को that end निकालना game, चाहिए ये team मैच, versus बाकी team. लेट्स सी। That's when I think I'd full send it against one वेम्पायर another. बहुत But right बढ़िया, now, बहुत बढ़िया they वेम्पायर, have a mutual बहुत अच्छा। understanding that if they want to एचवीवी secure बहुत their प्यारा, position going एजिस into खेलने वाली टीम, tomorrow, Group Green एजिस पे ही है, हैंड almost जोन has फेवर to करा है, take बढ़िया। that approach in these games. बीजीके का लास्ट बंदा, लेट्स सी। I think a lot of these teams are just going to जीके be को shooting पहला। anything that moves, to be honest. It's not wise.
divert game hard when you know it's working. Into the lobby. Spotted है Game बंदा. Lord. GL. Game Up Lord. against their first, well, I say their first, well, they've already managed to get an elimination on the cards. Looks like Robs was able to secure one. Geekay have had a pretty tough Red time Scope of it so far OP this game. They are बैन down दे to दो their low हिट देने वाले player. को. Oh my Around god. the shooting range, Alpha 7 on the ये क्या सीन है? north side. They have moved from Severny. Just trying to take Pmgc towards the task. Oh, not quite fine. Revo, 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 Back Revo. down, and that's a double knock on the front there. But the challenge will be able to succeed, but there is shots from the back line. Hang on a minute, there was a second coming through. There was a flush as well. Last player for Tem Entertainment. क्या ही करेगा भाई, नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा. TM एलिमिनेटेड भाई, TM हुई है #16 पे एलिमिनेट. ओ माय गॉड, अल्फा 7 4 पॉइंट लेगी भाई आज, बहुत ज्यादा बढ़िया. हाय ब्रदर, कैसे हूँ? बढ़िया हूँ मेरे भाई. कोई नहीं, अभी गॉब्लिन से कंपेयर कर रहे हैं. यार मैं फैन हो गया हूँ इनको का, आईजीएल का. भाई क्या रोटेशंस करता है. ग्रीन ग्रुप में भी देखा, बहुत प्यारी रोटेशन करता है. एकदम सेंटर में बिठा देता है, क्लस्टर के बीच में से निकालता है, बहुत प्यारा. It's a bit of a rough area though, honestly. So much open area around this bit. The GK fencing एलिमिनेट होना always comes बनता into था. play where you've got nowhere else to play from, so you just send directly towards the fence. You hold up in that position. It's the only place to go, but more than likely you are not going to be making it towards that top 5 at that point in time. Alpha 7 though still have a good chance into this one. Vivo key towards the center of the map at the moment, as well as Son HP basically just roaming around towards that center and shooting range, trying to keep himself alive for as long as मेरे को possible. लगा कोई बंदा आया वीके के पास, कोई Yes, बंदा आया from yesterday, learning from a lot आउटिंग of these करता गाड़ी teams, लेके the बंदा आया pace वीके के of पास. kind of consistency really is huge right now लेकिन during this survival stage. Getting a few points on the game is absolutely better than going out guns इनको blazing भाई right बहुत at the बढ़िया. start. इनको के पास जोन मोस्टली रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए क्या? Position. ओ भाई गॉड, Goes for the अनदर southeast हार्ड shift. शिफ्ट, This is काउंटर 2 hard शिफ्ट shifts in खाया a row. बिल्कुल. जहाँ अगला Now जोन बना था we've उसके seen काउंटर पे further अगला जोन बना. southeast side. गेम Game लॉर्ड, Lord फेज, in the slice बार, and Faze clan as well. Who HVVP. remains. अभी होगी भसड़ टीम्स की, अब फाइट्स होने वाली है, इस With स्टेज पे फाइट bacon होगी. time as well. They have that HVVP, spot अल्फा in to be able 7, to operate SG, those मोस्टली SG के साथ फाइट. SG को वाइप कर रहेगी अल्फा 7. स्पॉटेड है बंदे सारे, देखते हैं. Decent enough हेलो योगी भाई, position. हेलो मेरे भाई, कैसे हो? अल्फा 7 IHC से भी अच्छा I think कॉन्फिडेंस है भाई, इनका looking at फैन हो going गया forward अल्फा with the 7 high का. ground, it's बहुत बढ़िया यार, not अल्फा a 7 का bad भाई thing for them to be पुरानी able टीम to है भाई, play इसमें from क्या this इंट्रोडक्शन spot, की. watching down towards a lot of these teams. भाई ये बंदा कब से सरवाइव कर रहा है, Unfortunately, क्या नाम है इसका? northeastern side Zone is HP. where it is a bit more difficult for them because they don't have a huge amount of sight lines up towards that area in the first place. So keep an eye on that. भाई ये Gonna be वेम्पायर तो slightly more PMGC का difficult for दोनों them, इवेंट but जीती. they will अरे वो be able to PMWI था have ब्रो, great PMWI था, angles नॉट down towards this PMGC western का side, दोनों. which is where most of these teams PMWI were able जीता to था make their उन्होंने. way across. Rozhok, it's not likely a lot of these और teams are दूसरा heading बाय द over वे वो towards फन that इवेंट था Bridge वो. side over Stalba. A lot of these teams decided to भाई sweep ने नहीं up किया towards फायर. that western side of the map, which is much more smart for them. नाउ इट्स अ On 4 that जोन, side, बट well, इट्स अ भसड़ वाला जोन. Oh, Yeah. Bacon time should have a clear idea of who's playing around them and which side of the map they need to be aware of. लो जी, बैक टू बैक 2 नॉक्स टू अल्फा 7. और निकाला किसने? वेम्पायर ने. Good. They're going to be able to confirm that one away. The AUG doing a lot of damage there on that northern side. Very, very smooth there. Western edge. रोस्टर चेंज अलाउ होता तो ग्रेविटी खेलता IQ की जगह i8 में. Vampire. अब क्या कर सकते हैं ब्रो, Suit. चीजें हैं हमारे हाथ में, है ही नहीं उसके बारे में. टिक्सी भाई ने दिया, ठीक है Vivo भाई, Keed बढ़िया. taking a lot of shots at the moment. HVP in a decent position. They've got Matic and Meku behind over towards that western side. So they do have a couple of backstops. Again, it's this careful play style. We saw this yesterday. आज थोड़ा हम गेम पे भी फोकस करते हैं गाइस, देखते हैं. आज थोड़ा चैट वगैरह करते हैं गाइस आफ्टर द लाइक मैचेस जो है, चैट वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे. बाकी आप भी गेम को देखो, देखो टीम्स क्या क्या कर रही है. चैट बीच बीच में अगर नजर जाएगी तो पढ़ लूंगा मैं, ठीक है. Figuring out that, you know, making sure they can sweep Okay, over BGK towards the sides of the eliminated. circles. There's not a huge amount of 14th central rank. teams at the moment, and they're able to pick up a lot of eliminations doing it this way too.
but it is getting fairly cramped now ऐसे on के this दो ही बंदे northwest बचे हैं, side. Mr. No Boro one's and really Mafia opted Boy, now the to go IGL towards and the Jord, center. So I think for HVP, Mafioso. this is probably the smarter playstyle, which is to really go on it patiently on this edge. Vivo Keed is going to be an opponent they will have to face, though. That's on their northern side. On the north, or from the I8 west क्रिप्टो होता edge. तो क्या मजा आता synergy में कितना भाई अब क्या कर सकते हैं Taking shots over towards I Faze get see clan, instantly hitting the deck there, like not wanting to take that shot, not wanting to take that challenge. Contest a little bit too nerve-wracking. racing भाई बढ़िया Shot spray down, push on the north side, really through on this crunch. RC क्या बात है There's certainly an बहुत opportunity right now बहुत for सही the crunch to come in from HVP. I like that Kitsune is sent down towards the south. अब तो गाइस भसड़ बहुत दिनों बाद आया हेलो हेलो नोवा किंग बहुत दिनों बाद तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ना ग्राइंड चल मेरे भाई ठीक है Heading down towards Kitsune and maybe trying to push through the circle towards Inko might be your best bet right now. Reject, on the other hand, have managed to slip their way into an insane position towards जी the पता center of है the वैसे तो circle बोल रहा inside a है very वो nice अगर होता compound, तो which they can start playing from. That's very much on the high ground too. And as their first game, their first innings, with one elimination so far, they're looking set for a decent match here. Unless something absolutely disastrous goes wrong on their side, it is unlikely they were going to see Reject be dismounted from this position at least the next 4 to 5 minutes. Inko as well in that central spot, looking decently good for themselves. I think for Inko, पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइट अगर ये जो मर्जी बोलो पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर एक मैच 10 का एवरेज इज नीडेड क्या हाल है योगी भाई लेट हो गया फिर मैं यार कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई Down one on the northern side, under close and attentive watch from IHC. गॉडलेस क्या कर रहे हो भाई एक जगह ध्यान है दूसरी जगह से Wait for a third party. They are able to dodge down one, suffering right now. Had a great day yesterday, fell off a little bit towards the end. 2v4 coming through from them as well, which was pretty damn astounding. You love to see that type of thing. Osal tries to move up in the UI, nice a very defended vehicle, but still quite easy to pop the players out from the sides through those windows. Favian now sending nades, everything he can to Vampire try and once clear out again, this बहुत ज़्यादा position with बढ़िया IHC in front of them, causing a massive problem for themselves. Osal gets back up though, surprisingly. Sun is IHC down, गई Forest 2 bleeding out quickly, so just Osal and Favian now remaining for the down one squad, but 3 eliminations. I think that Green Group once again is in top भाई Green Group की ही teams alive है भाई येलो अगर आप देखते हो फेज अलाइव है आरसी अलाइव है एंड गेम लॉर्ड अलाइव है इस टाइम तक राइट नाउ आपका फिफ्थ सर्कल है फिफ्थ सर्कल इज अबाउट टू क्लोज रेकन अभी तक अगर आप देखते हो सेम एक ही पॉइंट लेके बैठी है फाइट्स अब यहाँ से इनका गियर स्टार्ट होगा आई गेस फिफ्थ सिक्स्थ क्लोज इन होने के बाद से that likes to go face to face, fist to fist with a lot of these other teams. They will go for these boxing fights, and usually, yes, they'll take 1 or 2 knocks, but it's absolutely worth it for them when they're taking position. They're more of a messy team. Knocked by Beacon, finished by Vampire. SG wiped. इतने अच्छे पॉइंट नहीं आएगा इस हैशटैग 10th पे आउट हुई है Now from Vampire Esports. 3 players, 69 points so far, 8 eliminations. This is a very good start to the game for them. Inko also looking to get quite far into this game. They do get fairly certain. 133 finishes was not joke. Maybe given a yes, bit of yes, a dime भाई for the rest of these matches. ग्रीन वालों को ग्रीन वाला ही मारेगा massive येलो वाले improvement चुप in बैठे रहो performance, अरे and भाई this is that confidence factor. इनको Sending 4 into the ओके building,
There's Nenebete going down. That's their key player, though, and that's really bad news for them. And the rest of them getting crushed by Reject as they move in. Sweep the leg. Just this now. पार्टी चल रही है स्क्वाड हाउस में गाइस पार्टी चल रही है बढ़िया वेल पावर और एचवी की फाइट हुई एग्जीक्यूट बैक टू बैक ट्रेड्स यहां पे आ रहे हैं हमारा पीओवी अभी यहां पे अल्लाह से भाई बहुत बढ़िया राइट नाउ इज वन मैन अलाइव 1v4 popping off all over the place. नहीं निकाल पाएगा Massive damage on their side coming through from Game Boy. It looked bad for them as they took an initial knock, but they brought it back their way. Vitali running around, just trying to keep himself at bay, keep himself alive. He's managed to find his way into the building. Pulled the old switcheroo on them. You see even HVP on the ridge side now, looking to try and capitalize on the tail end of this fight. बढ़िया बट कितनी देर तक over the top. Schweppes takes down Fabio. कितने क्वालीफाई होंगे by 16 ही क्वालीफाई होंगे that's them now actually out. 6C takes another knock. They are really Dan को बोलो थोड़ा सा पीओवी नीचे भी कर दो शिफ्ट को देख लिया आरसी का डोमिनेशन हो चुका है स्टार्ट we have seen they've been cut off by the guys from power underneath them. Yes, they're sending casualties back their way, but the knocks are not enough. मुक्स करे हुए हैं ठीक है नेट नूट कर रहे हैं यूटिलिटीज आ गया इनको भी वाइप हुई इनको थी हैशटैग इनके अंदर वाइप फिर 2 एलिमिनेशंस बहुत बढ़िया Victor out in the open. It's Venturas looking to finish the fight there. भाई ये एचवी का पीओवी क्यों नहीं आ रहा है इतनी देर से we want एचवी पीओवी यार we're not quite in that high caliber of point scoring potential. हट दे भाई तगड़ी फाइट हुई है उनकी पावर भी एलिमिनेट पावर का डोमिनेशन है पावर ने एलिमिनेट करा एचवीवी को अगर आपको पता होगा एचवीवी आगे थी पावर पीछे थी जब तक हमारे पास कैमरा निकल के आ रहा था मतलब उनका एंगल था भाई ये बताओ पीएमडब्ल्यू में नहीं मिला मेरे भाई नहीं मिला उसको स्लॉट नहीं मिला decently done for them. Osal just waiting in the wings. Still VPE the big contender in this map up towards that northern side. पावर अपने भाई पावर तगड़ा कर रही है जो भी कर रही है इमेजिन गई पावर ने अगर आज उठा दिया ना पॉइंट 50-60 नीचे बीटी होगा टीम्स को भाई येलो टीम्स क्या कर रही है भाई येलो की सारी टीम्स अर्ली एलिमिनेशन गेम लॉर्ड टीएम आईएचसी बीजीके वीके जीके सब येलो टीम भाई इस हिसाब से ना कंपटीशन सच बता रहा हूँ फिर तो ग्रीन ग्रुप की मैक्सिमम टीम्स जो है टॉप 16 के लिए क्वालीफाई रहने वाली है भाई बेकन कितनी प्यारी टीम है भाई इतनी प्यारी टीम है ना भाई ये मुंह के सामने बंदे होंगे बट फाइट नहीं लेगी अनलेस एंड ज्यादा जरूरी ना हो बहुत प्यार से 6 जोन में निकली अब जाके और अभी तक इनका एक एलिमिनेशन है अब यहाँ से इनका गेम निकलना स्टार्ट होगा 6 to 7 अब जब से जैसे कौन है अब इनका किल रैंकिंग वगैरह बढ़ना अब स्टार्ट होगा धीरे धीरे देखना 3 किल से अभी देखना सिनारियो आगे पावर पहले दिन बहुत मुश्किल हो रहा है समझने में यस भाई पहला दिन तो कल ग्रीन का भी था भाई रेड वर्सेस ग्रीन वो तो पहला ही था यहाँ तो येलो फिर भी कुछ देख के आई होगी तो कल पहला ही दिन था पहला दिन और पहला मैच है वी डोंट टच बट यस रिजल्ट्स इज रिजल्ट बता रहे हैं हम आपको तो रिजल्ट शोकेस कर रहे हैं Reject. Good shots down towards Vampire Esports. Ravenclaw, the barest amount of HP remaining on him. Struggling to get back on his feet. In the meantime, Ventura. Power, RC, Faze and VP. भाई थाईलैंड रीजन की 3 टीम्स है टॉप अभी इस पोजीशन पे टॉप 5 के अंदर वैम्पायर बेकन एंड फेज बढ़िया Absolutely taken out by Reject. Divine sending bullets through, and that's 10 eliminations already for Reject. A great result from them in Group Yellow, and Vampire Esports are down and out. Noise looks for Tony K. He's moving up. This boy has done work over in their region before. Now into the thick of it. There's smokes everywhere.
It's him versus the world at the moment. Vintorius finally up here to back up his teammate. भाई दो बंदे हैं टोनी के एंड विक्टोरियस पर चढ़ ऐसे रहे भाई कि 4 बंदे चढ़ रहे होंगे बहुत बढ़िया स्मोक्स नॉइस तेरे को पड़ सकती है भाई यही मैं बोल रहा था नॉइस क्या किया बे तूने लो जी पावर वाले लौंडे आगे हेल्प करने भाई थोड़ी बहुत विक्टोरियस को गिराया players up and still going. Tony K extremely low. Bacon Time might have time to restabilize here, but it is unlikely. Molotov is ऊपर से आरसी को टाइम मिल गया. Capitalizing over the back of this fight. And again, we talked about how maybe Reject was in for the game. ले लेगा टोनी ले लेगा Bring them through to the last chance, and they're starting this off massively strong. ले लेगा टोनी ले लेगा. Oh! There's a jump out from the side. He's flying. Goes through the air, hits him with the wings, buffets him back. Too close भाई, too close. आरसी किधर है? Fall back up on their feet. Even grabs his teammate with the barest health remaining on his side. Might even get the first aid kit through. Bacon top 3 ले आई भाई. Disastrous scenario. Never give up every time happens for a reason. Yes. Keeps the pressure over towards Reject, who do still have to move in. Oh, nice try by Tony के यार, बहुत बढ़िया था. चल जो भी था सही था भाई. बेकन भाई टॉप 3 आ गई. यही बेकन का जादू है गाइस. पूरे मैप में आपको पता है बेकन को देखना होना कभी भी जब वो अच्छी फॉर्म पे है उसको बताऊं कब देखना. मैप पे दिखेगी नहीं आपको वो. थैंक्स टू अमेज भाई फॉर शेयरिंग दिस. इफ यू आर लिसनिंग पता कब दिखती है आपको वो रैंकिंग मतलब वो कब दिखेगी वो दिखेगी आपको कब जब होएगा आपका 6 जोन 7 जोन तब निकलती हो बाहर. बट बचा दिया यहाँ पे टीम. पावर का वो नॉक नहीं तो चढ़ गई थी भाई फेज. पावर का वो एक नॉक आया ना जो hospital robes, but they've got a gun in hand. They're making it happen. Aziz, nade over the top. Just this. Pick and four, man. Takes a knock there. This is not how Reject would like this. Yeah. If only Faze But the scenario is green group में power का comeback. They were in bottom पे थे वो बिल्कुल. But power comeback मारी है बे. First match पे काफी अच्छे points लेके गई है. 10 eliminations for RC. सेम मोमेंटम रिजेक्ट का मोमेंटम सेम कैरी आउट हुआ है जो उन्होंने छोड़ा था उसी मोमेंटम के साथ लाइक वैम्पायर खेली थी जैसे कल के मैच में. बहुत बढ़िया शिट है भाई. अजीज भाई ने दिया रेजियो को नॉक. 5 एलिमिनेशंस फॉर बेकन. रिजेक्ट वाले लोंडो क्या कर रहे हो? One other player from Reject down now, just one left remaining. 07 trying to do DEC कैंपर ठीक है भाई. भाई तुम एक ऐसी टीम को कैंपर बोल रहे हो? डिवाइन भाई. Can it be that Divine is able to bring back the game for Reject? He's working with very limited cover here, but 07, they'll have to drop out of the action very quickly. 11 eliminations found so far. Divine को निकलना ही पड़ेगा. Divine might be able to take them all the way, but he has since spotted. No chance. कोई chance ही ना था Divine के पास. Kante finds it. Power 11 eliminations. चुम्मा खेला भाई, चुम्मा खेला पावर में. He's gone to bed, woken up early. Noise, let's see 1v2. Noise now certainly has to bring the noise, bring the thunder, raise the boom. UT नहीं है क्या? UT नहीं है क्या? UT. These boys back with a sound wave that he's never. भाई noise भाई क्या कर रहे हो यार? इतना लेट कर दिया आपने. पहले क्यों नहीं निकाला न्यू? Moves outside, nade, crucial. Find the tree. ले. Maybe you can get a good amount of damage done. Both players laid very low by this. Has to make a good decision. 07 really can't move. This nade will be good. Huge amount of damage, and that gives time for 07 to move. Nice one power, nice one power. Bacon वही स्टाइल बहुत बढ़िया. जीजी कर दो यार एक बार पावर के लिए. बहुत अच्छा कमबैक यार. मतलब एक टीम ऐसी जो फर्स्ट मतलब 6 मैचेस में पहले दिन के बाद एक बॉटम में ये ई-स्पोर्ट्स है गाइस. बहुत अच्छा कमबैक. होप सो इनका मोमेंटम ऐसी कैरी आउट रहे. बेकन की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस. आज लग रहा था आज के दिन पे पॉइंट्स अर्न करेगी, वैसा ही उन्होंने करा.
क्योंकि गाइस जो बेकन की टीम है ना, आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि बेकन की टीम सेकंड डे पे कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल के आती है। अगर आप उनका ग्रीन ग्रुप भी देखते हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी गाइस जो लोग बेकन को कैंपर बोल रहे हो, और जाना मत कहीं, और स्टैंडिंग भी आने वाली है हमारी, और जो लोग बेकन को कैंपर बोल रहे हो, सो बेकन इज द टीम जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपका एवरेज है प्लेसमेंट पॉइंट का, किल्स है का एवरेज सबसे ज्यादा है बेकन का, सबसे ज्यादा बेकन का है इन ऑल रेड, येलो एंड ग्रीन। कोई टीम आस पास नहीं है बेकन के। ओवरऑल एवरेज बात कर रहा हूँ मैं परसेंटेज वाइज। तो जिसको आप कैंपर बोल रहे हो, कोई आपके नजरों में जो कैंपर है वो किल्स भी लेके गई है, वो प्लेसमेंट भी उठा के लेके गई है। सो डोंट टेल एनी टीम इज अ कैंपर भाई। उनका गेम प्ले, उनका गेम स्टाइल है खेलने का, प्ले स्टाइल है एंड बहुत अच्छा है, जो कि उनको हेल्प करता है। जो वो पॉइंट भी ले रहे, उनका एग्जीक्यूशन उसमें अच्छा है। बाहर से देखने में चीजें बहुत इजी लगती है, बट आप जब वो खुद करने में जाओगे वो बहुत टफ होगा। उन्होंने कितनी पता सालों मेहनत करी होगी उस चीज को डेवलप करने पे, जो चीजें समझ रहे हो कितनी गलतियां हुई होगी। आ गई है देखो, यस नोवा इज ओनली द बेस्ट टीम भाई। वो थम प्लेयर अरे जानता हूँ तुम बेकन का फैन नहीं है ब्रो। इट्स अबाउट द गेम प्ले, लाइक समझ रहे हो, गेम प्ले उनका अच्छा है, गेम प्ले वो नो डाउट। एंड गाइस वी गॉट द ओवरऑल स्टैंडिंग राइट नाउ बाय द वे। चलो गाइस जो लौंडे देख रहे हैं, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। एंड ये हमारी ओवरऑल स्टैंडिंग फर्स्ट पे है गाइस वैम्पायर स्पोर्ट्स एज यूजुअल्स, दैट इज 84 पॉइंट्स। फिर है HVVP 71 पॉइंट्स। देन है इनको गेमिंग, वो है 66 पॉइंट के साथ। एंड बेकन टाइम है आपकी 63 पॉइंट के साथ। गैप अगर आप देखते हो भाई क्या सीन है ये, 71 66 63 63 62 भाई ये क्या चल रहा है? टॉप 7 क्या कर रहे हो तुम? ये एलजीडी तो खेल भी नहीं रही है भाई साहब। क्या है ये ग्रीन ग्रुप, क्या कर रहे हो तुम ये भाई? अगर आप एक चीज नोटिस करते हो कि ग्रीन ग्रुप, एक चीज देखो यहाँ पे पॉइंट टेबल आ गई, चेक यस यस देख लिया मैंने। एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, ग्रीन ग्रुप की हर एक टीम ने ना कुछ पॉइंट्स लेके गई है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके गई है। नोटिस करो एक बार, कुछ ना कुछ लेके तो गई है। एलजीडी नहीं खेल रही, टाइटन नहीं खेल रही, निग्मा नहीं खेल रही, पीटीआर नहीं खेल रही, इनके 0-0-0 ये कल इनके पास मैचेस रहेंगे। पावर क्या बात है भाई, नाइस वन भाई। हैशटैग अगर आपको याद हो, कल इनके पॉइंट थे 16, सबसे बॉटम पे थी, 27 पॉइंट जोड़े 43 पॉइंट के साथ, बहुत प्यारा एक ही मैच के अंदर। तो गाइस एक अच्छा मैच चाहिए, एक अच्छा मैच चाहिए बस आपको। अगर आप लास्ट डे खेल रहे हो, एक अच्छा मैच, 2 आगे तो फिर तो क्या ही बात होगी। स्काईलाइज गेमिंग 2 पॉइंट, स्काईलाइज गेमिंग को पॉइंट लेना पड़ेगा, आज उनका लास्ट डे है, क्योंकि ग्रीन ग्रुप को पॉइंट लेना पड़ेगा। राइट टीम अभी और नीचे आने वाली, कल फिर से ऊपर आएगी क्योंकि वो खेलेगी। डीआरएस है, देन बॉक्स है, खेल नहीं रही है दोनों टीम, मतलब नहीं बनता। 4 राइवल्स भी नहीं खेल रही है, रिजेक्ट है। बाकी गाइस अगर अभी आप देखते हो बॉटम पे आ चुकी है आईगेट, फेज, गेम लॉर्ड, IHC, वीवो, TEM, BGK एंड GK की टीम है। बट अभी इनका एक ही मैच हुआ है, जो भी येलो ग्रुप है इनका एक मैच हुआ है। अभी 6 मैचेस के बाद अभी और ओवरऑल स्टैंडिंग टफ होती जाएगी जैसे जैसे येलो ग्रुप खेलने वाली है। चलो गाइस अब आपके कमेंट्स चैट पढ़ते हैं, आ जाओ। ओवरऑल स्टैंडिंग हम दिखा चुके हैं, बाकी आपके क्या व्यूज है ओवरऑल स्टैंडिंग के रिलेटेड आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चलो गाइस start and it started off with a 4-man drop on Gat. आ जाओ गाइस अभी आपके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एंड गाइस इफ यू आर न्यू टू द स्ट्रीम मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Noobs calling teams camper is the game is about survival, reject got disqualified due to less rank points. Green is toughest. Suk sea of zones, yes चल सुख चल। अरे सुख भाई क्यों आ रहा है, मेरे को समझ रहा है सुख क्यों आ रहा है चैट के अंदर। टॉप परफॉर्मर्स कैंटे भाई बढ़िया यार, वो फाइट मिस हो गया यार, HVVP वाला दिखाया ही नहीं स्पेक्टेड मोड पे, क्या सीन हुआ। वो रिजेक्ट का फाइट दिखाया जिसमें 4 बंदे घुस के एक बंदे को मार रहे हैं ऑब्वियसली, बट वो भी सोच रहे होंगे 1v4 कर देगा, चलो ठीक है क्या पता कर भी देता हो, बट फिर भी यार HVV और पावर का देखना था फाइट यार, मैं काफी देर से वेट कर रहा था। चलो कोई नहीं, ओवरऑल दिखा दिया मेरे भाई कबीर सिंह भाई, ओवरऑल दिखा दिया। थोड़ा सा स्ट्रीम पीछे कर लो। क्या लगता है BTR होगी क्वालिफाई? हो तो जाना चाहिए, अच्छे पॉइंट है उनके इस टाइम पे, जाना
चाहिए, अभी 6 मैचेस बचे। कल फैन क्लैश पे एक मैच लगाया, 1500 मिला नितिन नाम से। सौम्या नीलेश भाई क्या बात है, तो ज्यादा पैसा 1500 रुपए ले गए क्या कल? बढ़िया भाई। तो गाइज अगर आपको भी इफ यू वांट टू विन लाइक रिवॉर्ड्स लाइक कैश, अगर आपको भी लेना है फ्रॉम योर नॉलेज फॉर फ्री, लाइक फॉर फ्री, अगर आपको अपनी नॉलेज से लाइक यू वांट टू अर्न लाइक कैश, यू कैन डाउनलोड फैन क्लैश। पिन कमेंट के अंदर आ रहा होगा। कल भाई ने 1500 जीते, कोई बोल रहा है मैंने 500 जीते, कोई बोल रहा है 150 जीते, तो बहुत अच्छी बात है आप नॉलेज के अकॉर्डिंग। और मैंने भी अपनी नॉलेज शेयर करी है, तो जहाँ पे मैंने टीम प्रिडिक्ट करी है आज के दिन की, लेट्स सी टीम का क्या सीन रहता है, क्या सिनारियो रहता है, देखते हैं भाई बाकी। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर और लिंक पिन कमेंट के अंदर फैन क्लैश होगा, डाउनलोड करो एक बार एंड मेक श्योर टू गो टू द चैनल, जाओ एक बार देखो। कट ऑफ किया, हमने भी पिक करी है, मतलब इट्स नॉट लाइक हमने 4 टीम पिक करी है। पिक फैंटेसी अपनी जो टीम है मैंने पिक करी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स। वैम्पायर को पिक किया था हमने, वैम्पायर खेल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने कौन सा टीम पिक किया था गाइस? एचवीवीपी अर्ली आउट हो गया, चलो कोई नहीं, अभी पहला ही मैच हुआ है, अभी ओवरऑल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सीन होगा, देखते गाइस क्या रैंकिंग आती है हमारी। अच्छा समझ गया मैं भाई, सुख भाई वहां पर खेल रहे हैं, वो अलग मचा रहे, समझ गया मैं। सुख भाई का गुस्सा पता है ना किसका है? ओवरऑल रैंकिंग्स गाइस जिन्होंने मिस कर दी थी, देख लो एक बार करके देख सकते हो, जिन्होंने भी मिस करा था। ब्रदर भाई मंकी एस चैनल आइकन, सीरियसली पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा, बस भाई ऐसे अच्छा लगा था इसलिए, देयर इज नो रीजन बिहाइंड दिस, बट अच्छा लगा था बस। S2G लीडिंग BTR इन फैन फेवरेट, ओके ठीक है भाई, ठीक है। S2G ओके, ग्रीन शूट ऑल क्वालिफाई, दे डिजर्व इट। अभी तक तो गाइस ऑब्वियस सी बात है वो भी टॉप पे रहेंगे, क्योंकि उनके पास आपका मैच एडवांटेज भी रहेगा आज के दिन का, ऑब्वियस सी बात है ग्रीन ग्रुप भी टॉप पे रहेगा। बट कल पास से थोड़े से पलटेंगे क्योंकि ग्रीन ग्रुप बैठ जाएगा। आज ग्रीन ग्रुप को अपना फुल पोटेंशियल दिखाने का लास्ट डे है, लेट्स सी क्या होता है। सब हेलो भाई फ्रोजन, कैसे हो? वट सुख मैटर कुछ नहीं, सुख WBG से खेल रहा है, विवो कब सुनने में आया, तो क्या मैटर होगा देखते हैं भाई। और वहां पे सुख शायद मार रहा है, तभी ऑडियंस बोल रही है सुख पागल हो गया है। ये जोन को मैं अपने पॉकेट में रखता हूँ। सही है भाई, तुम्हारा भी सही है। तो गाइस हियर वी गो, मिरामार का मैच, एंड मिरामार में आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन कौन सी रही है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। LGD HVVP हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग मैप में, ये दो आपकी टीम्स काफी स्ट्रॉन्ग खेलती है। कल के दिन पे वेम्पायर अगर आप देखते हो अच्छे पॉइंट्स अर्न करे हैं, अल्फा 7 पे अगर उनके नियर बाय जोन रहता है तो काफी अच्छा एग्जीक्यूशन है मिरामार का। लेट्स सी क्या होता है आज के मैच में। I would say if it ain't broke, don't fix it. So I'm thinking that should be the approach. अरे ये सुख भाई को रोको, क्या होगा सुख भाई को? If you're safe in like the middle of today for the teams of Group Green, then ज्यादा मार देगा सुख भाई? A little bit, try things out. But I would say if you're your vampires, HVP, like top 6 teams currently are all teams from Group Green. So if they want to experiment a few little things, they can, but don't change drastically. Like you're still not 100%. A7 भी मिरामार स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंजर भाई यस मेरे भाई, वही बोला मैंने, अल्फा 7 के लिए मैंने बात बोला कि नियर बाय जोन्स अगर फेवर होते हैं तो उनका एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है। A much bigger prize. Like Maxim said, it's not broke, no need to fix it, just keep going at the same pace that you're at right now and you should be perfectly fine. But we would like to see a change when it comes to the last chance stage of the tournament. अपनी न्यू मस्टैंग GT पर मॉम को राइड करा ही दी। वाओ, going with power, going with bacon time. I sure don't have these backwards. WBG है क्या PMGC फाइनल्स में? नहीं मेरे भाई, WBG नहीं है, ISC चिकन लेगी, देखते मेरे भाई। I just took your picks out of the impression right now, Sunstorm, but I gotta say, Power. ISC भी गॉडलेस की मिनी, अरे मॉडल रिसोल्यूशन करता है। Okay, hopefully I don't curse him. I hope not, but I do think Power showed some really different approach and really good aggressiveness. वर्ल्ड वाइड टॉप 5 प्लेयर्स तुम्हारा व्यू में। रुको PMGC की बात करते हैं। अगी भाई इनकी पिंकी पोंकी गाना सुना है क्या? किसका? नहीं मैंने नहीं सुना। Okay, well Sandstorm, your picks, you had Beşiktaş. I don't know यार, सच में WBG चला हुआ है क्या?
अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है भाई. So you had Beşiktaş and Tem Entertainment. Both these teams dropped in Yasnaya. One team on the east, one team on the west. है तो बहुत And बढ़िया है. बाकी देखते वर्ल्ड kind वाइड of like the फाइनल. state of ओके play ओके. in their group stage, and the fact that it's happening again in these games, but we're seeing Tem take the fight to Beşiktaş at the start, and the fact that they were split at the start of the game, they lost a couple of members, and Tem managed to get a couple of kills. Same thing for GK. They hot dropped near Dom 1, near School, and near Rosa. So guys, let's go. Match is about to start within few So minutes. this has to change. मैच स्टार्ट हो ही जाएगा. You can have hot drops. You need to start over. You need to चलो get some भाई, points in these अब games. हो जाते थोड़ा कंधे The सीधे next करते. match is almost ready to kick off here, ladies and gentlemen. We'll be back with you in just a few here to get things going to our second match of the day. 50 seconds guys. 50 seconds के अंदर हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है. So we are going live. मैच नंबर सेकंड मेरा मार. Let's see कौन निकालता है. चलो बॉयज स्टार्ट करते. आ जाओ. लेट्स गो मेरा मार बॉयज. इतिहास गवा रहा है जिसने कंसिस्टेंट मेरा मार खेला है ना भाई, उसका पॉइंट और रैंकिंग बहुत अच्छा रहा है भाई. चलो बॉयज. गेम स्टार्ट. मैच नंबर 2. लेट्स गो बॉयज. आ जाओ सारे सारे. ठीक है भाई, अपना लॉस लियोनी सिटी पे आरसी की टीम एंड टीएम के लॉन्डे होंगे. कोई दिक्कत की बात है नहीं. इसके बाद अगर हम रेस्ट ऑफ द टीम्स को वेकन, आई एम लुकिंग फॉर द वेकन. बढ़िया. किसने उठाया? टू क्लोज. बेकन वाले जस्ट पहुंच गए थे, बस भाई आया अपना और कर दिया भाई इसने. चलो कोई दिक्कत नहीं. ऐसे यूगी को प्रैंक करते हैं, मेरे को ही बता के प्रैंक करोगे भाई. बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. जो यार क्यों बीजीके क्यों कर रही है बीजीके? मेरे को समझ नहीं आ रहा बीजीके का सीन. बीजीके का लास्ट मैच भी खराब हुआ है ड्यू टू दिस. द वर्स्ट केस सिनारियोज गाइस ये होते हैं जब व्हीकल का सीन होता है ना. 2 बंदे स्टार्टिंग में ले लिए गेम लॉर्ड ने. यार फॉल बैक मार रहे. बढ़िया भी है, फॉल बैक मारना भी चाहिए. फर्स्ट ब्लड गेम लॉर्ड. बेकन की किस्मत खराब बोलूंगा मैं. जस्ट पहुंच ही गए थे व्हीकल पे, वो गेम लॉर्ड का बंदा उतने में पहुंच गया. चलो कोई नहीं, बट आई रियली डोंट नो बीजेके का क्या सीन है भाई. इनकी पिंग क्या होती है ब्रो? आई डोंट नो, पूछ के बता दूंगा. वाई डिड नॉट प्ले एलजीडी, प्लीज बता दे भाई. एलजीडी इसलिए नहीं खेल रही है क्योंकि उनका रेड ग्रुप है, एंड रेड ग्रुप के मैचेस कल रिज्यूम होने वाले हैं. सो 2 ग्रुप खेलते हैं एक दिन के अंदर और 3 ग्रुप टोटल है, तो इसको राउंड रॉबिन फॉर्मेट बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा ए इंटू बी के मैचेस, ग्रुप ए बी, वैसे ग्रुप रेड एंड ग्रीन एंड येलो भी हो रहा है. कल रेड एंड येलो का होगा. सो दैट्स द पॉइंट मेरे भाई. पावर कहाँ गई ब्रो? ड्रॉप. पावर कहाँ गई है ब्रो? रुको जी, बता देते हैं आपको पावर कहाँ गई है. भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा बीजेके वाले लॉन्डो का सीन क्या है. हाँ जी 1v1 कौन बोल रहा?
अरे हल्ले सुखी भाई गलती होगी माफ And कर we're दो back. It's me, Blank. I'm all by myself. Don't worry about it. It's fine. John is just on a little ये bit of a मैच वैसे ना vacay at the एसजी का moment. अच्छा He's जाना sorting चाहिए things out in मेरे his own अकॉर्डिंग time, but एचजी we'll का get him मैच back ठीक to you ठाक as जाना soon चाहिए as ये possible. बाकी Beşiktaş लेट्स here. सी Obviously, you've been watching, you've been enjoying the game in the meantime, which is great to hear. I like to see it. फॉल बैक मार PPE लो तो currently बढ़िया है बीजेके 84 वरना points, आईएचसी so निकाल very सकती far है भाई ahead. आईएचसी का Looking like they're कॉन्फिडेंस in a अभी good टॉप नॉच spot चला in है terms of Group Green. HVP जैसा कि down to भाई बारा 71 आईएचसी points, फाइट trying to निकालने get as वाली है many points as they would have liked that last game, but there's not a lot of teams catching them up here. Power, though, 43 points. That's a big jump up for them. That was happy days. They've overtaken Skylights Gaming there, and A7 put themselves in a decent-ish position over with 62 points. Remember, this is another one of our teams that will play out बीजेके their final टर्की यस भाई games टर्की today. बट We had मुझे 6 games from ऑनेस्टली Group भाई बारी Green की आईएचसी yesterday, फाइट and निकालेगी भाई now पक्का obviously देखते हैं 6 बाकी more आई games डोंट for नो Group Green today too. That will be their 12 matches concluded heading into tomorrow. Group Green will have to cross their fingers and pray that they do not have that issue coming through for themselves. Power though, 43 points. That पावर last game was भाई very nice. आपका They do जंक keep यार्ड putting up स्प्लिट those लिया kind of पावर ने performances क्योंकि though, यहाँ पे क्लैश हो considering गया था the ऑलरेडी day they had आईएचसी एंड yesterday. बीजेके का That is what ऑलरेडी happens दो when टीम you don't उतर get गई a थी nice buffer तो on. पावर ने In the जंक यार्ड meantime though, स्प्लिट ले लिया था Beşiktaş मेरे भाई already lost one of their players, which is really not a good start for them coming through from Group Yellow. Luckily, they will take down मेरे को IC अभी भी here, लगता है so आईएचसी being निकाल able to लेगी pick up that elimination. However, is it too late for them? With the rest of IHC actually being able to converge on their position, this is still a हु इज case of एसटी two न्यू teams प्लेयर battling head-to-head एसटी at न्यू the प्लेयर moment. क्यों And with मेरे not को a lot समझ of नहीं आ loot रहा in सब this न्यू प्लेयर area क्यों बोल for रहे हैं एसटी का Beşiktaş to be able to comfortably grab moving from building to building, they might be struggling slightly. Game Lord back on board with them. 2 eliminations so far, so doing very, very well for themselves. Still at 4 players as well, ब्रो which is योर रिव्यूज nice to अबाउट see. एचवीवीपी देखते हैं भाई We'll be इस looking for मैच a में little bit more हाईएस्ट points किल in this होंगे game. अर्ली एलिमिनेट Unfortunately, a होगी total of only यही 4 from बोलूंगा that व्यूज last game, व्यूज क्या which यार is not really कंसिस्टेंट good. So टीम है they यार do need a bit of a pop-off game this एचवीवीपी time जैसी around. कंसिस्टेंसी And देखी if नहीं they भाई don't बहुत कम grab देखी that, अरे भाई again, that रॉब्स भाई buffer, बहुत it's अच्छा a मारा little bit आपने rough. Now, Rob's over towards मुझे the शाओ की याद आ गई Game रॉब्स Lord भाई region अरे over in भाई Western Europe was just the ये नेट भी king काफी अच्छा मारा of आपने अरे 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 PMGX अरे itself. And it looks like they're absolutely putting in the damage, putting in the work, and Inco Gaming suffering heavily because of it. Hopefully I'm back, Blank. Hopefully I'm back into the mix with Game ये Lord चेक on the एसटी hillside, इंस्टाग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग ओके ब्रो right चेक next करते to हैं इसके Inco बाद as I just get back up to speed with what's फाइट been देखते हैं going अभी on. गॉड Blank, it looks like there's been a little bit of chaos जीएल here on गॉड Miramar ले so आता मैं far गेम at लॉर्ड the start of the game. और जीएलडी लॉर्ड Game Lords, they've taken a knock, but they've got a whole chunk of points coming on through on this eastern side. Hacienda looking at pretty well एलेक्स controlled right now. आईएससी के कितने Beşiktaş लॉन्डे getting बचे हुए enveloped 3 by the blue लॉन्डे near IHC. Both teams with 3. This is all the way out in Al Zahar. They're sort of क्या locked बात into है this combat एलेक्स flank. No one really with the बहुत vehicles प्यारा to get out of there at the moment. Alex now looking over towards Beşiktaş. His boys are now out in the blue, so a little bit rough for them, but will start to make their way in. 7 minutes into the game so far, so blue will A7 be कमबैक moving. आएगा There's आज only भाई a couple देखते of हैं teams out on देखते the हैं देखते outside. हैं Beşiktaş, obviously, as well as IHC के and विवो Tem Entertainment down towards that southeast side. Hope, Geekay, looking up towards Vivo, Keyed, up on the highest of heights, and you could also be up on the highest of heights in terms of elation and enjoyment when you do grab yourself that 2022 PMGC special crate. So make sure you're heading in game to pick that one up over on PUBG Mobile. WBG सुक इनकमिंग सुनने में तो आ रहा है भाई कि ट्रायल आउट्स वगैरह चल रहे हैं बाकी लेट्स Got सी plenty of time, Blank, plenty of time, but it's Tiago- not out just yet. You've Diego. still got to wait. I know it's the first day of December right now. We've got 4 more still to go before those will start to run. Circle on that northwest side. ओ Just about to तेरी pop, की but again, भाई it goes northwest. HVVP साहब controlling a massive भाई triangle of कितनी area बार हो there. गया ये मतलब Sees इतना that हार्ड south शिफ्ट आता है outpost. और एचवी के Looks पास like ही not a lot जोन of जाता है teams भाई अलग ही Yes, सीन it's है और not really a एचवी पहले position where एक ही you टीम want ऐसी होती है जो HVVP to जोन के start आसपास या regrouping. नियर बाय होती है कल भी That हमने high देखा ground था that ये Tix सीन is currently on is absolutely gargantuan बट in आई terms थिंक of एसजी being का able ये to अच्छा मैच perform आना from चाहिए there. क्योंकि एसजी We have seen नो a lot of times in the दिस past though प्लेस through बेटर several क्योंकि ला different regions, कॉब्रेरिया especially इज in देयर PMPL, but प्लेस if you take up this position, आई थिंक it's not एसजी इस as मैच में अच्छा कर सकती है insurmountable बाकी लेट्स as सी you might hope it would be. There's a lot of teams, including Inco's position, which is just off towards that eastern side. They can roll up towards the top. You can easily get up there with a buggy and quite quickly too. You could even head through La Cobreria. And that's what's difficult for about Tixie's position at the moment is because the circle is so towards that HVVP northern side, split यस मेरे doesn't भाई make it देखते हैं massively बाकी priority for HPVP, but they still have to hang on to it just for informational gain and also for
a little bit of that presence sake, right? You want to make sure that you have that ability to head up there later on if you want to hold out in that position on the high ground, taking shots. ये टीम पता है उन टीम्स के लिए अच्छा होता है, हो सकता है रोटेशन वाइज ये वाला सीन फॉर द लाइक टीम्स लाइक जो आपकी मूव करती है ईस्ट पार्ट से। अल्फा 7 का रोटेशन नेक्स्ट उस तक सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय पिक। अल्फा 7 IHC because they are in Al-Azhar एंड ये दोनों टीम एजिस खेलती है एंड इनका मूव करने का एक जो तरीका रहता है जो एक क्लस्टर के अकॉर्डिंग चलती है, सो मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छी रोटेशंस इनकी हो सकती है ईस्ट पार्ट से जो भी एंट्रीज डाली होगी। Tries to get away with it, but there's an off angle. Ragey looking to lay down the mini 14 shots, and it will be good to find Tony K. We'll be able to get the teammate back up and Faze. बाकी लेट्स सी गाइस, नोट करके रखना और मुझे याद दिलाना, मैंने कुछ ऐसा बोला था अगर हो। Narvalo able to land the shots over to MR5. Plank on the hillside. Ragey pinches it away. I mean, for Narvalo, just the moving shots with the DMR, honestly, with that kind of scope as well, it is very impressive, to say the least. I think he realizes that there was other teams that area, so he had to be quick with it. And he was able to get up there, get that elimination done and dusted. And I think that looks more like the Narvalo that we expect and love. And I think there was Pro ST का न्यू प्लेयर निर्जाड लगाता है। ओके ओके भाई, ऐसा है क्या कुछ? A little bit more, get a little bit more done. Unfortunately, that was not the case. And getting through from PMGC points alone with the state of things over in that championship was very, very unfortunate. So I do think that when you're looking at it at the moment, this is a good start for them with 5 eliminations coming through. HVV के लिए हर्ट बोलते हैं। अरे भाई, अगला जोन देखते हैं। सेकंड जोन क्लोज इन होने वाला है। बढ़िया HVV के बराउंड होने बढ़िया बढ़िया चीज, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया है। मैप स्ट्रीम प्लीज, मैप स्ट्रीम प्लीज, रोटेशंस देखनी है। मैप स्ट्रीम Dodge around the bullets from Maki right now. Actually working out pretty well, like an Oh my god! Frosty, but unfortunately there's 2 players right in front of him. SG He gets the safety on one angle. He's भाई साहब, what a rotation! प्योर तो सही है भाई, ये टीम नीचे से मूव करते हुए आया है, क्या बात है? HVVP suppressing these positions. I think they might be as well. पूरा empty, easy peasy, ऊपर से rotations. Really difficult in this valley. Good. बढ़िया, क्या बात है SG guys? क्या बात है SG? Good morning मेरे भाई. Alongside with the rest of the teams. Great nade though. We'll take down Noise. Nice one SG, nice one. Time with just one player remaining now. Next level study कर गया SG भाई, क्या बात है? Position in the first place. Perhaps they could have taken down. Mafia boy the Jord. Point John in the sense that there is very little amount of area that you can take in this. काफी अच्छा स्पेस रहेगा। स्पेस के मामले में बात करूं, एसजी के पास काफी अच्छा स्पेस रहेगा। लेट्स सी आगे एग्जीक्यूशन क्या रहता है। अभी तो वैसे भी 30 जोन बना है, अभी 12 मिनट हमारे हुए हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। मिक्कू पाजी ने दिया नॉक, निकाला एक और नॉक। मैटिक ने 2 नॉक, मतलब मिनी से मिक्कू ने फिर मैटिक ने एक नॉक दिया टीएम के बंदे को। बढ़िया, you can do when you've got those angles when you're playing 3 at the top as well. हमने दिल तोड़ दिया भाई। फैंटम लाया था, वो कैरी आउट नहीं कर पाई। विक्के ने एलिमिनेट करा यहाँ पे रिजेक्ट को लास्ट मैच बैंगर टीम को। बढ़िया, Gonna be holding off against Reject and actually just hold them straight on out immediately. Reject eliminated from squad to nothing, burnt to ashes there. Really unfortunate. Vivo Keyed picking up 5 eliminations so far on the game. Brazilian team looking good to start off their BC इस बार फाइट ले ली। अरे भाई BC अगर क्या पता नहीं BC का सीन हुआ होगा कुछ, मोस्टली भाई वो फाइट नहीं लेते भाई। 10 में से 1 केस है कि कुछ हो गया होगा। फिर से नॉक, नेट फेंक दे, नॉक आना चाहिए। आया, एक ही बंदा बचा है। पावर गोइंग अग्रेसिव, potential eliminations here and 3 knocks. There's not much more they can do, but a beautiful nade that comes through. In the meantime, Game Lord is getting. मैं वही सोच रहा था नेड करा किसने, जो ये बंदा फटा पावर का। मुझे लगा कोई और टीम आएगी, एकदम से देखा मैं अपने बंदे ने फाड़ा। Meanwhile TEM I guess eliminated guys. TEM eliminated once again. Not a good one. पावर भाई, पावर आज लेगी ना भाई पॉइंट तो समझ लो कर दिया पावर ने सी। मीनवाइल बीजीके के 2 लॉन्डे लाइव है। वेलकम टू Azhar. Player up on the hillside, very low. Probably going to be looking to heal, but Rob's taken away. Actually, HVVP मिक्कू पाजी are going to be able to command that one.
Player on the outside as well, as HVVP continue to use this dominant high ground position. Shots coming through, and Game Lord swept aside. Yeah, this is always a fantastic Buzzard, spot, especially when you're Buzzard, HVB able ठीक to है. take Guys, as मैं many इसी shots चीज as की you बात like कर रहा down था for the towards this SG. area of the map. And again, it's that clearing potential, and HVB certainly has it. Next circle, though, heads up towards that northwest side, so they will have to leave this ridge side. Now, they've let their presence be known. A lot of teams should be aware of the eagle up in the nest now. Power certainly will be. ये मैच से पॉइंट निकाल लिया ना एसजी ने, तो एसजी 100% क्वालिफाई हो रही है. इस मैच से अगर उन्होंने पॉइंट निकाल दिए, राइट नाउ एसजी इज इन ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स. अगर इस मैच से अगर 20 पॉइंट्स का बैंगर भी निकाल लिया, तो एसजी इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर श्योर. ये मैच का ये गाइस ये मैच होते हैं, ये उन्होंने खुद बनाया है. टॉप नॉच रोटेशन थी. थर्ड जोन पे हमको देखने को मिला. बहुत टॉप पीछे से जो घूम के रोटेशंस मारी, एरिया काफी स्पेस था इनके पास, एंड जोन का यूटिलाइजेशन इस पॉइंट पे एसजी का देखते हैं कि किस तरीके से इन सारी चीजों को वो एग्जीक्यूट कर पाती है अच्छे से, एंड यहाँ पे अपना निकाल पाती है. लगी भाई नमस्ते नमस्ते पंडित भाई, कैसे हो? थोड़ी शायरी मार दो पंडित भाई, बड़ी देर से मिस कर रहे थे. RC got it. Trying to take shots over towards Geekay, but getting peppered away. I think there was a third-party angle coming through. I imagine from HVVP, they continue to leverage their position. You can see them moving westward along those ridges. We'll be trying to control there. Vampire up in La Copraria. One of their players down, Schwepp, is close by, which shouldn't be... should be a little bit trickier maybe than you'd like to get up and get for that res. Power on the hillside against Beşiktaş. Beşiktaş trying to roll on through at the moment. Peace is very, very low. He's been picking away at the points for the nice rest one, of the nice one. lobby, Power, well power. Power. Let's go, boys. Off the back of a chicken dinner. Power. क्या बात है? Bring them down in मोमेंटम तो है guys. पावर का मोमेंटम तो है. Be up to 5 eliminations now, which is good stuff. Tixi does go down. That's from A7. Carrillo takes a lot of damage in the meantime. That's from Matic. And now Mythic looks to try and administer the medication. However, some good shots coming through from HVB will keep that position nice and held down. Again, this is one of the spots that maybe they would like to pass through onto. So for them getting a lot of those knocked over towards power, which opened up a lot more. एसजी का नीमा बना देगा सबका कीमा. अरे भाई देखते हैं भाई, ये वो मैच निकालना, एग्जीक्यूशन इस मैच में आना जरूरी. पॉइंट्स चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन इक्वल टू पॉइंट्स इस मैच से आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत समझ रहे हो, आगे जाके मिले ना मिले ऐसा सिचुएशन अभी है. तो लेट्स सी, होप सो कर लेगी एसजी, कर लेगी. व्हाट आर रोटेशंस बाय है ये भाई. A very, very nice compound towards that north side. No one's challenged him. That could be a very easy spot that HVP could send. भाई HVP ने 5 किल कैसे निकाले भाई? यही तो सीन है भाई. बेकन का गेम स्टार्ट होता है, मतलब जो वाला 5-6 के बाद किल निकालना. HV का गेम पहले स्टार्ट हो जाता है किल निकालने, especially on the Miramar man. EK with 2 players still alive. Hope down the side, trying to spot out these Vivo key players. Next circle could really change things up for them, and in fact it will do. On that south side, it's really going to isolate those teams who have been on the high ground for so long. Actually, Skylights Gaming with their 2-2 split in some really priority positions. Yeah, it's a beautiful spot for Skylights Gaming, but now Vitali's position becomes really, really influential. Now this is where I'm saying that, you know, HVB could definitely send out towards this क्या spot. बोलूं भाई? क्या भाई एसजी, लेट्स गो. पॉइंट चाहिए भाई, एसजी पॉइंट चाहिए भाई. कट ऑफ पक्का 90 तक जाएगा. देखते हैं भाई, देखते हैं भाई, जितना भी जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है. लॉबी टू लॉबी डिपेंड करता है. DWG क्या बात है? Down one gaming, rolling up on VPE. 2 heavy hitters heading against one another. Already Fabian starting things out strong versus Fluketh. I believe in Vampire, I guess. Vampire. I believe in Vampire. देखते हैं क्या करती है Vampire, क्योंकि Vampire अभी टॉप नॉच है फॉर्म पे. फॉर्म इन द सेंस कि मोमेंटम इन लॉन्डो का गलत ही बैठा है. I think निकाल लेगा Vampire. देखते हैं बाकी. There's not a lot you can do. Stop. Alex ने दिया संको. Drops out. Thanks to IHC. Through from a third party. IHC entering the mix of things. Running across the road. That smoke on his front left, just about to
fade away, and IHC are covering this crossing. A very, very difficult move to make for Vampire, but they're just trying to stay alive at this stage, Blank. They'll take what they can get. IHC are on every single side of them, but for some way, they managed to drop those smokes, allow themselves through that path, stops, gets across to the wall. It was always going to be difficult to leave this position, and भाई you might think because क्या we बोलूं भाई always मैं say क्या this, you बोलूं don't छोड़ो want to head into मेरे a पास city वर्ड too नहीं है early, but बोलने के I लिए think for these players, they realized that there wasn't देख भाई really इनको anywhere को else for them to आईजीएल go तो at है this point in यस मेरे time, भाई heading towards this इनको का area लौंडा was ऑन द the सेंटर safest bet that they picked गाइस up. बिल्कुल सेंटर पे And बैठा हुआ है going out भाई in the open zone, you're more likely going to get shot at by Skylight's Gaming, or assume that there is a four-man squad over towards where ये ड्रॉप Inco आउट कहाँ लेते Gaming हैं and Vitali is हासिंडा currently हासिंडा playing, से getting यार shot चलो at by ठीक है भाई them. बढ़िया So overall, a difficult push for a lot of these players. Vivo Key do find at least one over towards Geekay. Currently trying to make their way through in the blue, but two go down. That's from HVP. Tixi as well भाई as ये टीम तो Kitsune भाई ये heading टीम in फाइट for the ले रही है ना backstab here, acting against HVVP the तो rogues in stealth, रिजल्ट and they drop out. मैक्सिमम टाइम Will गाइस hit the वही होगा ambush. HVV ही निकाला है या कुछ भी है बंदे गिरे हैं चाहे ना गिरे बट HVV ही पॉइंट निकाला होगा Going to be vulnerable. The center crash बोला it मैं might have been आपको solid, it might have been good, but they decide instead they just want to take control of more area in these final circles. चलो भाई एक फिनिश मिल गया भाई को हमारे जीके एलिमिनेट हुई बढ़िया गाइस अभी भी ग्रीन टू की टॉप 5 टीम अभी स्टिल इन द लॉबी उसके बाद 10th 12th पे भी ग्रीन का है फेज बढ़िया देखते क्या करती है निकाल लेगा एचवीवीपी 8 एलिमिनेशंस निकाल चुकी टीम एंड 2 एलिमिनेशन मेरे को लग रहा है नजर आ रहे हैं इनके सामने मेरी शायरी किसने डिलीट करी है मिक का माइक है एचवी का हुक का eliminating some of मैटिक these teams down towards the मैटिक south side and clearing out निकाल one लेगी by बे मजे one, से निकाल and it's लेगी much easier than taking to those दिक्कत teams की on the बात ही north नहीं side. है Sure, they might be able to do it, but at what cost realistically? Right now, they're picking up 9 eliminations. पंडित वेलकम बैक यस मेरे भाई Almost free, to be honest with you. Dramatic repositions after the shots came through. Tixi keeps them on the swivel. This is solidly how you deal with a player. व्हाट्सअप मेरे भाई कैसे हो Tixi has taken a little bit of damage from it. Meku still चांस ही नहीं भाई keeping those बचने का sightlines clear, keeping them covered off, maintaining some high ground presence as well. Agrelin, last player standing for Vivo Key. किससे ही बचोगे यार किससे ही बचोगे नेट से बचोगे मॉली से बचोगे फोक से बचोगे किससे बचोगे गई भाई वीवो गई वीवो डाउन It really took their time with that as well. They didn't want to lose as they have a great single opportunity player to from any this silly match they little can knocks or flushes like coming through. It मतलब बहुत happens सारे far points too ले many सकते times हो that I can count where you have one चलो player भाई that you go up I'm against getting a and you call win the fight, sure, but you HVV lose और a player in the aggression में process. एलिमिनेट हो Going जाएगी 4v1 नहीं मुझे being नहीं dropped लगता down भाई to उनका 3 ओवर after अग्रेशन that नहीं है ब्रो is not something उनकी you feel आप बोल very सकते हो good स्किल्स है about. Now, उनका like the ग्राइंड है Meku उन्होंने अपने आप remained को in the खेल back खेल lines, के they वो understood that they only needed कॉन्फिडेंस है 3 उनका players for that if they took a समझ रहे हो smoke. कॉन्फिडेंस There wasn't अलग a lot दिखता of है मैं तो sightlines HVV from का the north side that could really challenge them out. Now, HVP hold a very strong spot to just take some really good sightlines up towards that northern side, especially as a 4-man squad. They have a lot of angles that they can cover. They can cover their back easily. And again, they're playing this 2-2 split almost. You have 2 on the outside watching towards the blue, making sure there's no one coming through from those unexpected angles that have happened so many times. And you just really like this type of play. It's a team that has a massive engine in them that they can start burning when it needs to go. But in the meantime, they keep it on idle when it needs to stay cool. Vampire continue with 3. हेलो 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 चलो 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 Did go well, but लेट्स गो वैम्पायर लेट्स गो बॉयज further now. HVV वर्सेस अल्फा 7 नीडेड भाई ये भाई 4 more points to top 1 अबे भाई out the back, giving them the old swivel. Alex spotted. That's done one on the third party engagement there. Around the side, around the edges. Osal Forest with those off angles. Rather off angles. The high ground position will be good. HVVP dispatch power in the meantime, but IHC actually doing a lot of work. One player down, looking for the flush, will be able to find it. Steps out, doesn't take any damage. This is really masterfully played here. ले लिया बे ले लिया वैम्पायर ने ले लिया IHC को but HVV अलग ले रही है पे भाई 11 एलिमिनेशंस भाई मिरामार स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कल क्या बताया था आपको स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मिरामार
Yeah, I mean, Alpha 7 is in a really tough spot. यही टीम थी ना मीरा मार पे Those स्ट्रॉन्गेस्ट City टीम were कल के दिन पे भाई अलग available and अलग परफॉर्मेंस है angling भाई मीरा themselves मार का towards what Alpha 7 were playing. HVVP Meku का picks himself अलग up a परफॉर्मेंस massive भाई 4K साहब there. Really good stuff coming through from him. We'll just clear out a huge amount of space. Not भाई the 4K, just the 3. So Revo's still up and kicking. नाइस वन Meku, फॉरेस्ट oh dear me. I think without the level 3, that could have been game over for him. अरे भाई ओम दिखी मेरे Aggressive ओम भी assault, दिखी he आज did तो भाई hold onto टिक्सी that for a बाजी long ओम while. चला रहे भाई How looted and booted these guys are. Even with the AWM, looking to put in the hurt. बदले लिए जाएंगे गाइस बदले लिए जा रहे हैं भाई फुल ऑन भाई साहब SG 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 गोइंग That is a bold बढ़िया shot. I'll give him that. I like that he went for it. He's going for another SG as ने well. ले लिया Not going जोन to be वाला able to land them with the AWM. इनको भाई Sensor circle कहाँ for बैठा Tali. लौंडा Stay भाई alive this whole time. चलो भाई In a fairly undetectable spot, actually. To be fair, it's covered off from a lot of angles. Unlikely that anyone actually is भाई going to detect ग्रीन this ग्रुप until का भाई it अलग ही becomes the focal डोमिनेशन है point of गाइस the next 5 circle. टीम अलाइव है 5 Inco नहीं Gaming जाओ is playing 5 for 6 last 7 chance. टीम That अलाइव है is 7 में से about एक it टीम है so जो far. येलो I ग्रुप think की that है they've एंड had some 6 great टीम आर games, but फ्रॉम on top ग्रीन of ग्रुप that, they've also been able to कल हैंडी hold some डोमिनेशन very भाई good central positions बैक टू बैक and 2 find मैचेस के themselves अंदर in an इससे area पहले where it रैंगल पे भी works out for सेम them. सेम Fabian सिचुएशन underneath the थी vehicle. Tixi ऑलमोस्ट अरे क्या still बात just है trying to find these डैमेज shots. Gets a good one. Doesn't quite eliminate the player. हेलो Four shots coming through, and that little bit of damage is all that they needed हाँ to put the rest of the hurt in. है ना दामवान गेमिंग DW Vampire extracting their points as well from the down one roster. HVV को They चिकन get लेना pulled चाहिए apart at the देखते seams भाई by everybody. 15 eliminations now for HVV HVVP. है फॉर्म This में early लॉबी into पूरी the game, डिप्रेशन at में 26 सबको minutes with पसंद है 13 M4 players सबको still पसंद है alive. M4 जो This is स्नाइपर से वाइप mad करते वो है coming हमारा through from the जोकर squad. Tixi lands another orm shot and Kitsune picks up the point for them. 16 eliminations now. Matic moves down the hillside, बढ़िया playing a 2-1-1 right now for HVVP in the final circles. Oh, this is a disgusting game coming through from HVP. Matic spots the player, but it's quickly reframed there what from a Meku. shot बे Great stuff. 17 चलेगा फेज eliminations. एलिमिनेट This will होगी see बट them very nice far up one the table nice if they can secure nice themselves the chicken dinner as well. 2011s would set them up at 35 points, sailing them directly towards triple digits. Tixi's still got bullets in the magazine for this bad boy. let's go यार Looks चिकन है like raw HVV का once again, just like Captain with highest Tixi. elimination for sure guys HVV भाई मान जाओ All तुम extended mag मानो there, ना मानो 7 मुझे rounds ऐसी as वाइब आ रही है well in HVV का that चिकन है orb. भाई कॉन्फिडेंस Fierce नेक्स्ट sight लेवल है भाई in the hands of कौन बोल रहा HVVP था on the ओवर high ground एग्रेशन में as well. मरेगी HVV भाई देख लो Pivotal in their control there. ओवर एग्रेशन में भाई ये इनका Last नेचुरल place गेम standing प्ले for भाई Vampire, done साहब very, very well भाई to इनका ना गन फाइट get एग्जीक्यूशन out के of लिए La निकालना Colonia, but बहुत स्ट्रांग है the fact भाई that Vitaly is still in this बहुत ring, ज्यादा he's स्ट्रांग है nutty. 1v1 की He अगर is आप in बात such करो a ये टीम से sequestered little spot as well. There's no angle where you can see him जिसकी तो हम until बात you कर रहे push थे him, भाई and that's साहब gonna be HVVP's task. I think for Inco Gaming, they'll be hugely pleased with this, and I think it'd be very unlikely not to see them Ex going Navi. through the last chance now. The amount of times they've been able to go for this, playing possum, get towards the end of the game, is great news. I mean, I don't expect anything massive coming out from them in last chance just yet. I still have my reservations about this I'm team, vibing but what I will कि say is that they are absolutely dogged and determined to get towards the end of these survival stages, get there with a massive amount of points remaining. In the meantime, though, HVP have absolutely revolutionized their gameplay. Unfortunately, it is Nima with the backtrack, finds one, that's Meku. No real availability to go back and pick him up now, so for the rest of the team, it's about getting that damage in, getting that utility मैटिक thrown. पाजी निकाल लेंगे भाई क्या बात है भाई और एसजी के साथ able to pick up a एसजी fleeting एसजी kill एसजी on that करो भाई side, कुछ looking to put a barbecue on for the rest of Skylights Gaming. Oh, Vitaly's down. I think they managed to pick that one up. So Inco are out. With the chaos being sown by the forward position from HVVP, there's potential to go for this res. It looks like they might be able to do so. And Ravenclaw is capitalizing on it as well. Goodness me, that is a mad crawl. So bold. निमा coming पाजी through निमा Nima. द सेवियर Good, just over the wall. Is it too short? I think it didn't quite make it over and stayed on the cover for HVVP. They did get the res out on the back as well, which gives SG HVVP बस 4 1 kill players and a position near to the
एचवीवी building. भाई As they अलग roll on अलग up to the हो रहा है wall. भाई, एक होता है ना Hitting on that door गैंगस्टा frame, it was वाइब्स, bold. It was in full sight of that door, but the smoke was there. एचवीवी You know, लाइक गैंगस्टा it वाइब्स was a भाई, necessary pickup on that. अलग ही अलग ही अलग ही Not माहौल their है भाई fault, एचवीवी Maku, but का I think what enables that is Matic getting that भाई Molotov एम्पायर block, का in लौंडा which मेरे को case लग they रहा है प्लेसमेंट पॉइंट immediately ले send जाएगा, a player किल्स नहीं मिले backwards तो 'cause they क्या know है that भाई, they're gonna be प्लेसमेंट पॉइंट उठा लेंगे। restabilizing within the building, not likely to gonna be challenging any of those doorways. So a very, very smart move there. चार Yes, it मैन है doesn't अभी, provide चार मैन, elimination, but it और does इस give फोर you वी फोर it's वी more वन of a फाइट है, even लेट्स सी, fight to इनको खुद take को पता होगा versus 9 the बंदा, एक guys बंदा कोई और from होगा, इनको पता है 4 बंदे वो है, This circle, if HVP लेट्स can सी, get them to a position इस down 4v4 का towards the फायदा south होने वाला है side, फॉर you श्योर। know, it will be a एचवी case of वर्सेस Sky एसजी, Zone लेट्स गो। having to leave this building into the sightlines of HVP. Of an AUG in Kitsune's hands and the accuracy coming through from these guys. Hey, it's going to be super Mikko difficult for Paji. me. Maku already finds one. And there's another as well for Tixi on the off angle. Skylights Gaming, they had to move, you're right, Blank. But hang on a minute, there's an answer. There is a shot over towards Meku, and Ravenclaw is still here. कैसे Skylights हुआ are भाई? down, 3 players standing, and Vampire make it all the way up to second. But you're right, over 20 eliminations now on the cards फटा, for कोई तो फटा, HVP. Legendary coming कोई on तो through. फटा गाइस। That nade एचवीवी का steps out, चिकन gets a डिनर little गाइस, too big क्या for your boots, खेला and है this इस is टीम the ने। HVP that topped ओ Group Green for 2 days straight, Blank. ओ This is ओ the ओ squad that ओ we've ओ wanted ओ to see for ओ so long. ओ, And they don't even seem that flustered by it. Look at that, I Kasune know. congratulating the team. I mean, it just seems so calm. आहा गाइस ये क्या था, इनका इस 1200 लोग जाना मत, ओवरऑल स्टैंडिंग आने वाली है, बट क्या खेला है इस टीम ने भाई, एचवीवी पे न्यू रिकॉर्ड, 22 kills. It was just so well played. There was hardly any mistakes that were made all the way through, and it also something has occurred with the team. It's just a case of the lads Okay, are now figuring boys. out when to play passive, पैन when to क्लैश play में careful, किस and किस ने when to रखा था bring एचवीवी out को, सच that बताना inner कमेंट lion that करके, they उसके have तो within मौज लग themselves, गई आज। because this entire team has 1500 suffered 2000 for 3000 तो all कहीं too नहीं गए long, फ्री के। even maybe 2 years back, a case of being भाई too साहब aggressive क्या at the कर wrong रही है times, being एचवीवी, maybe too यश unaggressive भाई, other times. वेलकम टू द 3 योगी आर्मी players मेंबरशिप with मेरे भाई। 1,000 damage is We kind got of the overall insane. And standing again, guys, we this got is the what I'm overall talking about. standing, रुको Tixi, जरा सबर 6 करो, winners, 7 we got the rounds. overall standing। अरे भाई मैं क्या बोलूं भाई, क्या क्या सीन है भाई ये। ओ भाई साहब 37 पॉइंट भाई 22 बंदे इन्होंने उठाए, मतलब कितने कितने लॉबी में 64 में से 22 बंदे मिक्को आइडल भाई यार, ये देखो 37 पॉइंट सिर्फ एक गेम से। द रीजन वाई वी कॉल्ड देम गन फाइटर्स। थैंक यू सो मच फॉर 101 यूपीआई सपोर्ट, जिन्होंने भी हमको करा है, थैंक यू सो मच भाई, आपका नाम मैं पढ़ता हूँ अगर आप चैट देख रहे हो, थैंक यू सो मच। बट हाय हाय भाई, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे, अल्फाज। एंड गाइज एक चीज नोटिस करो, चलो एचवी के पॉइंट देखो, वेम्पायर भी यहाँ पे 15 पॉइंट लेके गई है, इनको 8 पॉइंट लेके गई है, अल्फा 7 9 पॉइंट लेके गई है, दामवान 7 पॉइंट लेके गई है, एंड बेकन गई है 1 पॉइंट लेके। अगर आप ओवरऑल देखते हो इस पॉइंट के अंदर, बेकन आ चुके टॉप पे, ये टीम कहीं ना कहीं सेफर साइड पे टॉप 16 की अगर आप बात करते हो। एलजीडी मैच नहीं खेला, कोई दिक्कत नहीं। स्काईलेस गेमिंग 11 पॉइंट लेके गई है, 49 पॉइंट, एंड अभी आपके टोटल 4 मैचेस बचते हैं, 4 मैचेस के अंदर 20 पॉइंट का ले लो, 20-30 पॉइंट ले लिए तो स्काईलेस गेमिंग भी एक सेफर हैंड पे चले जाएगी। एंड हो सकता है, नथिंग टू वरी। निग्मा गैलेक्सी खेल नहीं रही है, पार 5 पॉइंट, बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड पे लग रही है, माइंडसेट काफी अच्छा है। बेगेट्रॉन खेल नहीं रही है, डीआरएस नहीं खेल रही, बॉक्स नहीं खेल रही, 4 राइवल्स नहीं खेल रही, रिजेक्ट खेल रही है, रिजेक्ट आ चुकी है टॉप 16 के अंदर, आई8 आ चुकी है नीचे। बाकी की टीम्स आप देख सकते हो 2 मैचेस खेलने के बाद, अभी ये लो ग्रुप की टीम है वो बॉटम पे, वो ऑब्वियस सी बात है वो बॉटम पे रहेगी, क्योंकि अदर टीम को 6 मैचेस का एडवांटेज है, जो रेड ग्रुप की भी टीम्स है। बट ग्रीन ग्रुप अलग शाइन करता हुआ, बहुत इंसेन है, नेक्स्ट लेवल मारा भाई, मान गए भाई, मान गया एचवीपी।
भाई इनके जैसा नहीं कोई, क्या रिकॉर्ड है भाई। 1100 टिक्सी फाजी थोड़ा डैमेज में कम रह गए। एलिमिनेशंस भाई उफ, पिक्कू पाजी क्या बात है भाई इनसे, बहुत प्यारा बहुत प्यारा भाई। इन्होंने रिकॉर्ड है क्या गाइस, ये इससे पहले है किसी का है? मानो ना मानो ये लोग मैं बहुत लेट हो गया। येलो ग्रुप पॉइंट्स टेबल बताओ, बताया ना भाई सारा का सारा, अभी देखा नहीं आपने? एस टॉप 3 कहाँ था ना? यस यस भाई बोलो HVV लव है। बोलो भाई मैं तो शुरू में बोल दिया था HVV का स्ट्रांग है मेरा मार भाई, अभी भी बोलता हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट ये मैं कल ही अनाउंस कर गया था। गन फाइट एग्जीक्यूशन ना HVV जितना 1v1 में अगर आप किसी भी टीम पे देखते हो, लाइक अगर फाइट हो रहा है उनका किल्स निकालने के मामले में दे आर डैम गुड। अगर उनके पास प्लेसमेंट पॉइंट नहीं HVV के पास, अगर वो आउट भी हो जाएंगे उनके पास किल्स रहेंगे, तो किल्स का एक अपर हैंड उनके पास हमेशा से रहता है। जो हमारी स्ट्रीम कल से देख रहे थे नो, मैं कल ही ये चीजें बता चुका था। फैन क्लैश पे मनी लगाना पड़ता है क्या कि ब्रो? शुभम भाई नहीं, अगर आप नंबर से रजिस्टर करोगे तो आप वहाँ पे फर्स्ट मैच फ्री खेल सकते हो शुभम भाई, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री रहता है, आप जाके खेलो, कोई भी अनाउंस कर लो वहाँ पे, फिर उसी की विनिंग की जीतते उससे करते रहो, कोई पैसे के थ्रू करते रहो, बाकी आपकी उस पर वो है। बाकी गाइस हमारी टॉप आज के दिन पे टॉप टीम परफॉर्मेंस अगर हम बात करें कौन कौन टीम चली है भाई, हमको अपनी टीम भी देखने दो। HVV प्रैक्टिस के लिए आई है, सर्वाइवल अच्छा प्राइस पुल भाई, प्राइस पुल भी मैटर करता है मेरे भाई, प्राइस पुल इज द बिगेस्ट थिंग, प्राइस पुल भी तो ले जाना टीम को। HVV का कितना नुकसान हुआ है पता है प्राइस पुल में, और डायरेक्टली ग्रैंड फाइनल से क्वालिफाई होती है, समझे कि नहीं समझे? प्रो अलाइव भी थे। यस द डोमिनेशन कंटिन्यूज, यस मेरे भाई डोमिनेशन कंटिन्यूज। फाइनल देखने में मजा आएगा ब्रो, फाइनल वाली वाइब भी है, इट्स अ फाइनल वाली वाइब, ये फाइनल वाली वाइब से कम नहीं है। Well, you know what, Sandstorm, you've been hammering on Group Yellow today, but one thing we should at least mention is they didn't play yesterday, right? This is their chance to get warmed up. However, I would say this. I expected them to be a little bit more prepared, knowing they had the opportunity yesterday to just watch the matches, watch them unfold as they happen, hoping they had a plan and were ready to go. But gentlemen, did you know the Sony Xperia 1.4 and Xperia stream was created in collaboration with Mr. Boro the Clutcher, yes, अरे वो वन साइडेड डोमिनेशन ग्रीन ग्रुप में भी और यहाँ भी तो भाई तगड़ा सीन है, बट जो मर्जी बोलो। And guys, if you are new to the stream, make sure to like को video. Past PMCO that were able to do it, but the Xperia stream, you can play PUBG Mobile 90 Hz with this total cooling system and mobile ports for intensive gaming and streaming. But I will, well, maybe I won't watch you play competitively, Max, but I will watch you stream. The last time we इसमें भी प्राइज है क्या? इसमें भी प्राइज है मतलब भाई, इसमें क्या प्राइज है? अरे ब्रो प्राइज मनी सब में है मेरे भाई, इफ यू डोंट नो 3 मिनट के अंदर मैच स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखा देता है। एंड गाइस इफ यू न्यू टू द स्ट्रीम लाइक कर दो। एंड थर्ड मैच शैनॉक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कल के दिन पे, वेम्पायर वंस अगेन काफी अच्छा शैनॉक, वेम्पायर नहीं HVV काफी अच्छा शैनॉक खेला कल उन्होंने। देखते आज के दिन का अल्फा 7, लेट्स गो गाइस। ओवरऑल स्टैंडिंग हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, थैंक्स टू ESPORTS हमेज into 2 कर देते थोड़ा सा। चलो भाई तो फाइनल में फैन क्लैश में किस किस को लूंगा, सभी खतरनाक टीम आया है। अरे अरे भाई कोई नहीं भाई, वही देख लो कंसिस्टेंसी, वेम्पायर HVV को जिन्होंने आज रखा होगा कैप्टन वाइस कैप्टन, तो उनके तो लग गए होंगे इन द सेंस कि भाई समझ रहे हो। I think would be currently the biggest surprise / upset of what we've been seeing, because they sold us absolute like gold into the league stage during Group Yellow. Last place currently, I do expect a comeback coming out from this team, but not the start we were expecting after what they did. मैंने कैप्टन बनाया था HVV को, लग गया सर्वेश भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। You can obviously look at matches yesterday and kind of get an idea of where you think people are going to be going or whatnot, but teams have to adapt to drop spots because there's an entirely new 8 teams in the lobby, right? So it's really hard to predict if people will commit to their spots they had before yesterday. Will they change things up today? अल्फा 7 अभी भी लग रहा है गाइस कर सकती है, बाकी लाइट सी क्या करती है, क्या कर रहा है ये, रुको it didn't work out too well in the last match if I remember correctly. You see Maxman
I mean, at some point you had to go with Game Lord, right? Yeah, I just had to like the small चलो French भाई portion लेट्स of me गो just had गाइस to pick हमेशा Game से Lord एक चीज याद eventually. रखना कभी भी They had a कोई really भी good start ऐसा to this सीन previous चलाओ game. ना Like, they were एचवीवी fragging out, they कभी भी went लॉबी पे up एचवीवी against पे the आंख team बंद was करके going भरोसा full रख लो even, like, they just were fragging out, getting आंख eliminations बंद करके all over एचवीवी the ऐसी टीम place. है टीसी का And स्क्वाड then है they क्या do this really मतलब weird rotation नेक्स्ट into HVVP's नेक्स्ट मैच high ground प्रिडिक्शन ब्रो position प्रिडिक्शन next to तो क्या create a नेक्स्ट मैच build. पिक होगा That हमारा I did not understand. नेक्स्ट मैच So I पिक just would like to see हमारा maybe a little bit more scouting and prep on their rotations. देखते But गाइस मैच स्टार्ट होने they're जोन looking देखते हैं aggressive, which योगी at भाई least they're तुम्हें not playing टाइटन का reserved क्या like they लगता did है potentially फाइनल in खेल previous पाएगी क्या PMGLs where they हाँ struggled versus टाइटन के top tier डिसेंट teams. पॉइंट So है मेरे भाई this, I feel like a change of टाइटन mentality, डिसेंट which is पॉइंट good, पे but we need to see still a little bit more when it comes to at least the IGLing for Makashi. Okay. Well, Sandstorm, you went with power again, which I can understand. But GK, एंड यस why'd you हमारे go with that? भाईजान श्रोतागन ने हमारे को So यूके for सपोर्ट किया था GK and एक for बार नाम पढ़ लेते Beşiktaş, हैं भाई it जी kind का of goes हमारा कौन for भाई है both. हमारे You mentioned that teams are still kind of suffering from hot टाइटन drops, कर and it लेगा यार seems to दे be आर उन happening सेफर yet साइड again भाई for टाइटन GK क्यों नहीं and कर for पाएगा Beşiktaş. टाइटन के The अच्छे second पॉइंट्स game है that we've seen, and we've seen Beşiktaş drop with IHC and TM टाइटन so से far इतना in प्यार the क्यों games. लगा And when it एचवीवी comes to प्लेइंग GK, लाइक they're क्लासिक kind of भाई dropping a अलग little ही bit खेला further भाई away from their usual मजा आ गया BOI. So I want to see what they're going to be doing since we're getting to the end of the first half of today's games. Is there going to K7 be a change in डोमिनेट that? Or what's करेगा going to इधर happen? एंड ऑफ डे All right, टू well, टॉप Sandstorm, देखते हैं yesterday I आज threw this लास्ट to डे भाई Max ग्रीन Men to ग्रुप have का a अल्फा chance to 7 do it, ग्रीन but I ग्रुप want to में see है you throw a Tarkasha चार using मैचेस your बचे best लेट्स सी French accent. It is time, ladies and gentlemen. We are going to give it over to Zika. I don't know where the heck that accent went to, but let's go over to the casters. Merci beaucoup. Thank you very much. We're going to be heading into the next game, I अगर भाई guess. भाई तुम्हें तो टाइटन का With क्या that, लगता है I फाइनल suppose, खेल yeah, पाएगी we're क्या heading right in there straight away. भाई कितनी बार Brilliant, क्वेश्चन पूछोगे एक ही आंसर long दूंगा shots भाई from all the teams, I suppose. But I don't know. That was odd to say the least. However, straight into the game. Quick shot of the players here. Faze clan just went by. But yeah, excited for the Sandhawk. Things got a little bit hectic there, but goodness me. HVP there, ब्रो आज absolutely का प्रेडिक्शन फैन क्लैश में वही slamming था that last game. क्या था मेरा That's the type of game HVV and in Vampire तो थे sprint ही type format that HVP will खेल see you safe. Now, ही I was आपको going to talk about this last game, but there really कि wasn't हम much रखते ही chance रखते to हैं भाई the amount of अपने action that was happening, John. HVV But को most of the कुछ time, ना we'll कुछ look तो at a हमें करा है championship caliber किन्होंने team करा है as like an 11 पर point नाम पढ़ देता average, हूँ एक से एक रुपए का and सपोर्ट तो that एक बार नाम is पढ़ लेंगे what हम you realistically want to hit. And to hit that for any team here, चलो over गाइस 12 क्या बात है games, that would be 132 points required. Right के now, ए यार you've got के HVP ए currently कपिल भाई 108. कपिल जैन भाई So थैंक यू सो more than मच on अगर आप target स्ट्रीम so को देख रहे far, हो with still 4 थैंक यू matches सो left to play, and that मच will see कपिल him जैन भाई very happy towards the top of the standings. It'll be quite difficult to beat. कैन The एसजी only team that's क्वालिफाई really close यस right ब्रो now 20 is पॉइंट निकाल the लेगी guys तो from बस Vampire Esports. आपकी Remember, सेफर एंड पे they're चले playing the जाएगी rest of their games out today, and then it will be over for them as well. Yeah, of course, those teams out the top will set that चलो benchmark. भाई तो देखते you'd जोन expect कहाँ जाता है there कल वैसे to जोन be का the शिफ्ट 8 अलग आया game था लेट्स teams सी आज towards कहाँ the जाता है top, नीचे but ऊपर किधर की जाता है फर्स्ट आइलैंड we'll कौन have सा to wait आइलैंड and पे जाएगा see who देखते हैं else is going to join them थर्ड from आइलैंड these से groups. कहाँ At the जाता है कहाँ moment, जाता है the कहाँ top जाएगा team that जोन has only played 6 is LGD, so ये they are going to be a बातचीत nice little टेंपल ले लिया benchmark इन्होंने potentially बढ़िया for teams to start to look at. They ended the day ओ on the माय first गॉड day on ये क्यों 57 हुआ points, कैसे हुआ and they will इनको be की टीम 7th place overall है right now, set just behind Bacon Time there. So teams who are just playing today, that is इनको वर्सेस in आईएचसी yellow group, आईएचसी will be भाई looking to क्या try and chase सीन that है one down. आईएचसी का Currently, the most points from a yellow group team, 2 games played by Rejects, VGK 23 के साथ points. क्लैश हुआ And अभी one of इनके those साथ games क्लैश हो was रहा है भाई their, I think it was their 21 pointer, I believe it was, with third place in 11 eliminations. They मेरे only पास get कई 2 बार points देख in के the last ऐसा game, लगता है which कि is वो not नहीं है great. It did give them that buffer though, and that's what you want from those big games, because realistically, again, the 11-point average has been hit for Reject over the last 2 matches, that and then some. So Reject still doing well here, but now they need to get some performances on this game, right? On Sandhawk or on Miramar, you need to बता get दो some भाई more क्या बताएं points. आपको Again, getting that 10 क्या points जानना over चाहोगे on जितनी Sandhawk is की maybe a little bit more चामता ऑल difficult ओवर than कौन people कौन make it सी out to be. Without the healing strat involved anymore, it's no longer a case of just huddling in a shack outside of the blue and going for the heal and quickly and easily picking yourselves up some points. It would be funny अरे to बाबा one point, भाई चिल I चिल was चिल waiting for the चिल day where you भाई just saw all 16 एचवीपी teams just वो sitting on ना भी all है भाई corners of एक्स the ना map, भी वाला just रोस्टर है healing वो out towards
towards the end of the game, and it's whoever got the most med kits won. And unfortunately, or fortunately, depends on how you look at it, it has been fixed before that could happen. It's almost made me slightly sad, John.
I don't think you'd ever have a world where you have all 16, right? I'm going to take किस्मत a हो ridiculous तो ऐसी situation हो and take it seriously, Blank. जियोल जैसी Wouldn't किस्मत happen. होनी चाहिए गाइस अगर होनी चाहिए तो ऐसी बाकी नहीं You'd imagine चलती that at किसी least one team would just go to the middle and then just win. HVVP end, इक्वल 'cause टू everyone नावी else यार is ऑब्वियसली healing. सेम ही तो रोस्टर है Which would mean नाम ही you'd have नाम चेंज हुआ probably है maximum, I would say. प्लेयर वही है Maybe 10 teams. I could see 10 teams reasonably doing that with solo players left. I think क्या it felt अलर्ट like कर दूं that in चैट our में previous क्या अलर्ट करना है भाई PMGC बताओ finishes. So I think when which everyone thing do you कौन सी चीज अलर्ट करनी है एक बार चैट में बता दो realized that everything was on the line, and Sandhawk being the last match, you know, everyone's healing, everyone wants those little bits of points that's going to jump up you in terms of actual money gained. Quite a bit, to be honest with you. Inco now over towards Hainan, IHC. Yeah, boatload of damage on their side. It's all hits the floor. Icy sending off the right side, John. Nenobete not quite being able to land the full spray there. You'd expect maybe to get one or two more bullets in, but you're right, there's Icy repositioning, trying to cross the river seemingly, and could be really quite pivotal if he's able to find landfall on the south side of Reject if they don't spot that out at the moment. HVV आदत से मौजूद Godless स्कैम कर रहे क्या स्पैम कर रहे still HVV watching out. Has spotted Nenobete, knows his position. देखते हैं भाई Bacon time with 8 games played, not quite hitting that average that they were looking for. A little bit more of a struggle. I think for them, they're pretty happily. Actually, that's a very nice average for me. It's pretty good. That's a very nice average, considering that is literally just 8. 8 games played, 8 points per game. The group distribution was too harsh on group. Beautiful. Anyway, बोल that's सकते हैं made यार me group very green group pleased. I was like, oh, I'm going to work this out results on the screen fly. के सामने Do bro maths here, and I was results like, are wait, on your screen I remember my multiplication tables. It's also blank. I'll let you in on a little secret. On the right-hand side of the screen, it tells you how many points they've got. Oh, yeah, I'm working out their average, though, you know? Oh, I see. Okay. Yeah, their average is just 8. Oh, I thought it was okay. Whatever. Yeah. Very good. Congratulations. Thank you. You get a Very gold good, star well done. on the chart. IHC still taking this fight with Inco, and this is Icy's position. This is the river crossing coming through to pay out dividends, Blank. A nice little pick up there onto Squash. Gives them a little bit of power. I'm looking at HVP's position as well on the Northwestern Island. Vivo Of course you are. dropped. I always do, Blank. I'm always super interested in this specific rotation. As well, because Vivo Key did drop around Camp Alpha, and it seems like HVVP fully adjusted back to the position that we saw from them in the European Championship. Yeah, up towards the Northwest Island, heading down towards the Confluence. I think your major issue for HVP is now that we are changing up the groups. It's also changed the play style of this match. A lot of times when we were watching Group Red and Group Green, you saw a lot more teams over towards Quarry, a lot more teams up towards कल रेड ग्रुप का कमबैक आएगा आना चाहिए भाई देखते हैं क्या सीन होता है लेट्स गो इनको वर्सेस आईसी आई डोंट नो ये फाइट क्यों हुई है बट आईएचसी के बैक टू बैक ड्रॉप क्लैशेस नॉट अ गुड वन and reject towards the south side of boot camp. So HVP is crossing much more difficult. So it might be a consideration to head up towards that northern side instead, rather than trying to get the battering ram and move through this position. Reject taking shots towards HVP now as well. So I have spotted that one out. Faze, it's not going amazingly for them. 16 points so far on their game, but nothing to scoff at. I mean, 8 points per game is still decent enough. They're getting quite far into a lot of these matches, but we do have a lot of low earners so far coming through from Group Yellow. Beşiktaş, Geekay, Tem Entertainment, as well as IHC. 6 points, 4-2-2. Really not ideal. Sure, but then you've got to remember that even after the first couple of games, HVVP were on minimal points. I think they were on about 8 after the first 2 games, and look where they are now. So things can absolutely change for these squads once they find their feet on today, once they get warm. Nenobete trying to heat things up down the stairs for IHC, but it's just a little bit too much. क्या भाई क्यों भाई Death Knoll. रेफरल कोड क्या है देवेश भाई देयर इज नो रेफरल कोड जस्ट लिंक से डाउनलोड करो Now just Vitali left alive. We saw him last game, left alive for a long time actually. Oh, they pick up some good placement points, but nowhere near the center of the circle with Sandhawk.
not really advisable to pick up vehicles and just send it through, as it is very open and you will be heard and spotted very quickly, and those spray downs are a little bit easier here on Sandhawk, with the map being much smaller, less opportunity to go for those 400-meter distance sprints in the vehicle itself, where you're outside of the line of sight of a lot of these players. Geekay taking damage from Faze, so towards the south side of the circle itself. That's on the north of Quarry. Bacon time. In Paris Resort, have a very central spot here to play from. Now, HVP looks like they're making that consideration now to head up towards the northern side and pass over the bridge. They will be running in towards Power as good. well as अरे अरे VVP. मनी के Two very अच्छा तुम strong अपना teams. देके तुम अपना करवा लो बढ़िया बढ़िया ठीक है भाई तुम मस्ती छाप लो विजय की तरह मस्ती कर लो and made landfall on the north side of boot camp before. See if they do opt to go for that rotation. IHC will be moving up the side of these hills now, picking up points as they go, losing Alex in that initial engagement in that first scrap, but hoping to try and keep the rest of them alive. Icy has to reposition away from last player Vitali from Inco. He wants a little bit of revenge, but they're looking to deny him that chance. Reject. They've lost a player now, which is not ideal, but you still play on. You play with 3. South side of boot camp as well. They're going to have to rotate away from this position blank. They're going to have to try and get on up north, potentially going back through boot camp, as long as HVVP or no other teams have moved on. अयोगी भाई मुझे जस्ट फैन क्लैश से कॉल आया आपने चैनल पे कमेंट किया तो आया क्या सौम्य नीलेश मुझे क्या अयोगी भाई मुझे जस्ट फैन क्लैश से कॉल आया आपने चैनल पे कमेंट किया तो आया क्या मतलब मैं समझा नहीं ओ हाँ मे बी आपका कमेंट पढ़ा गया होगा सो गाइज फास्ट सर्विस गाइज आपने कुछ कमेंट किया होगा जो आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो शायद आपको कॉल आ गया होगा इंडस फेनिक्स भाई वेलकम टू द स्ट्रीम भाई आ जाओ They're going to have to do some rescouting, but they do find at least the knock over towards IHC, get a little bit of revenge there, and also open up the opportunity to maybe head back up towards that northern side after clearing out the stage. It's been such a problem behind them for so long. Reject made the conscious decision to rotate from the south of boot camp over to this compound to try and cut out this rotation from IHC. Seems like they've succeeded as well, but in the meantime, Dan want to move through. Hang on a minute, we're over to Geekay. Nice one. Dismantled their last nice duo one. will fall. Finally a good match. That is not going to be good news. Confidence boost up. चलो जी बहुत बढ़िया. All present. New admission present bro. अरे भाई. बढ़िया बढ़िया. Proxy तो नहीं लगा रहे आप? क्या बात है दीवान भाई बढ़िया. Lands the shots. Will be able to get the heel off its zone 2. IHC once again, not a good match for them. Only 6 points for 3 matches. 10 points for 3 matches. एक मैच का comeback needed है भाई. कुछ point लेके जाने पड़ेंगे. GK और IHC early eliminate हो चुकी है इस point पे. And TEM, Vivo, RC. These are the team अभी जो लेके जा रही है. Meanwhile, Matic, HVP भी zone का damage लेके. Did rotations. पीछे से वीवो अगर आपको पता होगा अपना कैंप अल्फा पे वीवो थी नीचे टेंपल की तरफ को थी आपकी कौन सी टीम एचवीवीपी काफी अच्छी एंट्रीज मिल सकती है एचवीवी को वेस्टर्न पार्ट से घुस सकती है अभी ज्यादा टीम्स है भी नहीं अभी के टाइम पे पीछे से भी वो भी आ रही है वीवो आई गेस दे वेटेड कि वीवो को जाने दे मे बी काफी लेट मूव करा उन्होंने भी Like they are going to head back over towards that Skylight's कब लेगी kill? Skylight's giving up still in the lobby है ना attention ना लो बे Skylight's giving को 20 point चाहिए and they spotted इनको बढ़िया but इनको guys जो कल का इनका comeback आया था ना आज वही सा performance देखने को नहीं मिला है for Inco. He's been doing so much. I mean, we talk a lot about Nenebete from the squad, but Vitali today expected था Vivo versus oh किस्मत हो तो ऐसी हो भाई earning those points for the roster. Vivo keyed come into conflict with HVVP and at an inopportune time as well. They've just come out the blue zone after having been there for quite a long time. It leaves them low, forced to heal out, and that's going to leave HVVP power from Saudi. HVV equal to Navi. इसमें भाई HVV Navi है. Side and the nade is there, coming in for an excellent backup. Diego tries to do a little bit of work, but can't quite find Matic पाजी पहले out हो गए. Down. Hang on a minute. In the meantime, so leaves HVVP on 3, but it's only Cielo from Vivo keyed on the west side now. Yeah, I mean, HVP being able to get out and इनको वाइप हुई
happens. नॉट अ गुड When मैचेस, HVP are अच्छे able मैचेस to बिल्कुल keep नहीं गए watching इनको के। behind them, they're maintaining इससे that पहले अगर आप presence, देखते हो इनके का एक ही maintaining बंदा that बचा था, idea that, लास्ट you तो know, उस there might कंपाउंड be a पे team जोन on आया, our backside अपना with पॉइंट keep वहां से उठाया, that उन्होंने under उठाया। control. 3 eliminations इनको का now कोई found आज for them. ज्यादा Sure, अच्छा they're onto the परफॉर्मेंस 3 नहीं रहा है। players, कल but के दिन पे they जैसे मैंने बोला should था be able जोन to नियर get बाय up उनके towards the map ड्रॉप्स if you're able लोकेशंस to के थे, keep watching तो उन्होंने behind them. काफी अच्छा They're एग्जीक्यूशन निकाला maintaining था। that आज के दिन presence, पे कुछ maintaining that सीन्स idea नहीं that, देखने को मिल there रहे, might बाकी be a लेट्स सी team on our backside with आगे क्या keep होता है। that under control. 3 eliminations now found for them. Sure, they're onto 3 players, but they should एनी be able to मॉड्स get up प्लीज towards रिप्लाई, that bottom डीआरएस टीम side. किधर गया? Damwon are डीआरएस heading टीम up जो है their मेरे way भाई, though. मॉड्स क्या मैं रिप्लाई Will देता हूँ, be डीआरएस something रेड that ग्रुप पे might है। be a आज little रेड bit ग्रुप की scary. If जितनी they भी get टीम्स the है वो full नहीं squad खेल back रही है, onto अगर the आप podium, नोटिस भी कर रहे nice होंगे, little तो कल से refresh खेलेंगे on मेरे the भाई। gear. But Damwon has been still looking very good throughout these games. एचवी Maybe प्लेइंग for वेरी HVP, एग्रेसिव, it's यस a यस। little bit too late for them, as they have been slowed down a lot. Couldn't quite decide whether to head down towards the south or up towards the north. This is just because of this rotating lobby. It's difficult to make those decisions on the day, especially when you only play this map once. Taking time, they've taken a knock, but should be somewhat resible. The smokes have popped, so they are going to try and commit for a rotation over that way towards ice. स्टैंडिंग और सर्वाइवल स्टेज I डजंट mean, मैटर। it is in स्टैंडिंग और a सर्वाइवल really, स्टेज really difficult spot. मैटर They करेगा have to lay आपका down जहाँ some पे cover प्राइस and पुल आ fire जाएगा। to suppress those positions ऑब्वियस सी to बात allow है, the जो फर्स्ट रैंक pullback. पे टीम रहेगा उसको ज्यादा प्राइस Won't पुल be मिलने allowed वाला है though, भाई। as Victor पीजे गेमर gets the वेलकम final dink. टू द He's अयोगी making आर्मी time मेरे down भाई। to just थैंक यू 3 सो players मच in a फॉर द central मेंबरशिप मेरे compound, भाई, so थैंक we'll यू सो see मच how फॉर द much सपोर्ट। further they can jump on up. तो स्टैंडिंग Moved का that फर्क पड़ेगा मेरे parasite भाई, result nice and ये वैसे early. रीसेट हो जाएगी कल के दिन Headed पे, 3 towards दिन game सर्वाइवल block's स्टेज खत्म होने previous के बाद, बट compound फर्क where I think पड़ेगा Probs आपकी and और Victor उस were प्राइज मनी playing, पे so भाई। it was a good प्राइज idea मनी for है, them to क्योंकि actually आपको move जितना आप towards जीत that रहे हो उतने northern पे प्राइज compound मनी भी early रहेगा। on, give them a very central spot for this next circle. एचवी प्लेस It's फ्रॉम even रशिया better for प्लेइंग them. अंडर But साइबेरियन this फ्लैग। is a really ऐसा good क्या, मुझे opportunity नहीं now पता for इसे, Game Lord. मैंने And इतना again, डीप तो I've ध्यान नहीं said दिया this फ्लैग so many ग्रुप का, times in बट the ऐसा past. है। Use that I exact don't know. phrase, and Game Lord have dropped the एचवी ball. हमेशा So now टॉप it's पे time for रहती them है to क्या? prove themselves once again मोस्ट ऑफ द that they टाइम्स। can hold onto these central spots, that they can strike out a little bit more gumption than we saw from I them. guess quality got Duello, used. just about makes it in. Oh, भाई। On the moped. We'll be able to get a heal off. Only the They one shouldn't first aid. We'll been invest it here head instead start of going point. for those No bro, there is bandages. no head start point. Letting the The stick pick zero it से up. reset होगा. There is Suppose no you head just wanna start get as point. close as you can. It's Attempt simple format है entertainment on जो his है। south side as a 4-player Head squad. start It's gonna be point very, आपका very zero से tricky, start होगा, like to Saturday को। get जो too top much 16 further. teams That's होगी send ना away. यहाँ से, वो सैटरडे संडे 2 दिन 12 मैचेस खेलेगी, एंड जो उसकी टॉप 5 टीम्स Actually, hang on a होगी minute. Duello's all the way नेक्स्ट over on the ईयर other side. ग्रैंड HVP in the फाइनल्स खेलने meantime, वाली है 6, 7, 8 को। on मीनवाइल up against Damwon. A lovely HVP little once spray again there from Meku. डैमेज 3 देते players हुए from HVP बढ़िया। bringing Damwon to task on 4. Those away. A7 का चिकन लिख के ले लो, कल भी A7 का मैच अच्छा गया वैसे शानोक का, #2 पे उन्होंने एंड करा था। लेट्स सी आज का मैच। एचवीवी ने कल भी शानोक के मैच में काफी अच्छे पॉइंट्स निकाले, आज पे मीनवाइल उन्होंने वीवो को बीटी करा है, क्योंकि इनको एग्जैक्टली पता था वीवो ये नहीं गई है। उन्होंने उससे पहले एंट्री मारी, उनका गेट कीप करा, उनको बीटी करा, बहुत बढ़िया। ओके, एसजी इज नाउ 3 मैन। उसाल, लेट्स सी। Struggling, I think there's 2 players on either side of him. It's a good first engage. Will get the knock. Meku rezzing out in the open. Kudiya This is knock terrible finish. news for them. Oh, that's Not sure really, what he really thought. unfortunate. I don't think they knew Osal was there. They wouldn't have moved up into nade range like that. Tixie didn't peek back. They didn't see that nade coming There is through. 1 man alive for But then HVVP. the heal attempt Kitsune from Paji. Meku. Rest of Really them are most down. disastrous part of Dixie that. Paji 4 down पड़ा। eliminations for HVVP, but they really पावर dropped आई the पीछे ball से on भाई, what पावर seemed ने like a क्या long आज fight. के दिन पे कमबैक करा है गाइस। 48 Went a पॉइंट्स little bit निकाल गई too ये टीम भाई, hard 48 on that one, I पॉइंट्स। think. That's ये for 10 प्लस कितने HVP, पॉइंट्स so थे इनके time आज for के those दिन पे, old इन्होंने habits काफी अच्छा do निकाला है die इससे। hard फर्स्ट मैच themselves. सेकंड मैच में भी ठीक, मतलब Soon it 4-5 might be able पॉइंट to get लेके गई, Tixie हर back on मैच his से feet, पॉइंट लेके जाएगी तो potentially. निकाल लेगी बे, निकाल Clarity सकती है। Damwon looking your way. Maybe तो unlikely, शाउट I आउट think, दे दो but मनी कैन saving भाई, लो भाई grace for शाउट आउट HVP at the moment आपको। is the power also आप क्या has शाउट आउट eyes मार on रहे हो over towards Damwon, यार? looking to push into this one. Aziz is on the flank. Tixie still crawling back. Kitsune by the rock. Burns out one from down one. एसएमजी ट्रॉफी ना उठा ले जाए, कोई नहीं, देख लेंगे
लेंगे, जो उठाएगा अच्छा, जो अच्छा खेलेगा वो लेके ही जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। लो जी वेम्पायर वंस अगेन। बस वेम्पायर ना इस पॉइंट में आगे निकल जाती है, ये पॉइंट है वेम्पायर का इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट पॉइंट, मतलब इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग ना वेम्पायर अच्छा खेल जाती है, जोन निकाल लेती है वेम्पायर।
HVVP और वेम्पायर में अगर आप पूछोगे थोड़ा बहुत जो फर्क है, HVV का क्या सीन होता है, कई मैच तो वही बहुत तगड़े बैंगर के साथ फिनिशेस निकले होंगे, फिनिशेस इनके प्लेसमेंट पॉइंट आते हैं, बट सीन क्या है, कई बार वो डाउन भी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे फाइट लेके खेलते हैं ना, कई बार आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, कई बार नेगेटिव मिलेंगे, बट वहां पे भी किल्स उठा के जाते हैं, बट वहां उनको प्लेसमेंट पॉइंट का नुकसान हो जाता है। बट वेम्पायर मीनवाइल एक ऐसी टीम है जो पोजीशन जो कांस्टेंट लेके जाती है एंड उसके साथ साथ किल्स उठाती ही उठाती है। अभी देख लो, जैसे आप पोजीशन, अभी तक वेम्पायर ने कुछ नहीं करा है, कैसा कुछ नहीं घुसा है, जैसे ही आपका अब ये जोन बनना स्टार्ट होगा, अब ये भी एजिस से घुसना स्टार्ट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेगी कहाँ कहाँ पे फाइट्स हो रही है, कहाँ पे जाके थर्ड पार्टी कर सकती हो। अगर आपको कल का इरेंगल का मैच याद होगा, जब एसजी की फाइट हो रही थी, वो पीछे से रोटेशन मारा, ठीक है, उसने देखा टाइमिंग कि भाई इसकी फाइट हो रही है, अब जाके पुश करना चाहिए, थर्ड पार्टी किया, देन पोजीशन लिया। ठीक है, गेम प्ले है वेम्पायर का। थोड़ा थोड़ा मिलता है बेकन से, बट बेकन का कुछ ज्यादा ही स्टेबल गेम प्ले उनका, बहुत ज्यादा रुक के खेलते। Alpha 7 and Beşiktaş continue to clash. Peace takes a knee. एसएमजी का मुश्किल है क्योंकि उनके साथ खेलते हुए अच्छा होता है शांति। कोई दिक्कत की बात नहीं। शाउट आउट क्या होता है? शाउट आउट मेरे को भी नहीं पता है। शाउट आउट नहीं भाई। प्ले जोन ने अल्फा 7 के बंदे को लिया, प्ले जोन से टीएम का बंदा नॉक हुआ, बीजी के वंस अगेन अर्ली एलिमिनेशंस, टीएम का एक बंदा बचा हुआ है, वुमेन डाउन, माफियोसो एंड कारिलो बचे हुए हैं, एंड कारिलो भी गया एंड माफियोसो भी गया एंड अल्फा 7 एलिमिनेटेड मेरे भाई। अभी गाइस इस मैच में काफी अच्छा ओके एसजीबी एलिमिनेट 0 पॉइंट के साथ। प्लेसमेंट पॉइंट मिलेगा #8 का। #8 पे डब्ल्यूजी हुई है। Probably pretty soon for it as well. Damwon Gaming out of the fold. Game Lord still holding on this eastern edge. They are really powerful in this spot. Tixi makes a cross and stays up. जिला के नाम लेना शाउट आउट होता है। To be able to move a little bit further, but you're right, those meds really lacking. कल पता चल जाएगा कौन सा first aids, only the one stem is our बढ़िया almost necessary at this stage. EM Faze trying to backstab on power. It's going to work. Yeah, Silhouette, both of the knocks that HVB were able to pick up, but luckily for them, now it's just one player from power remaining in front of them. Like you said, no utility, no nothing left for HVP. They need some of these loot crates to come their way, but it's such a far run for them. Faze, 2 players, 1 player extremely low. This is really just a battle of attrition. EM not performing. Yes, your chat is clean. Up towards some hard cover. Tony K has eyes on. Not able to quite finish off the players. PM ने heal battle करके 3 points well on that position on the push from Bacon time. Player down on the front, but there's only 2 of them remaining now. And moving as a duo really hard on this terrain. Aziz is the only man survival. 2-2 split right काफी important match है power के लिए भी, points लेना काफी important। 6 teams बची हुई है, Bacon still under the top, बहुत बढ़िया nade, nice one। A nade over towards Shirty gets the flush however. Robs ने meanwhile Vampire के लॉन्डो को knock दिया, Fluke ने यहाँ पे trade निकाला। If it's able to land, it could get the flush if nothing else. Robs is being taken down by Vampire on the north side as well, and Game Lord seemingly spreading themselves too thin blank. This match is going to a fight on too many fronts at the moment. Robs moves up with the DBS, gets at least one, but Bacon immediately returns in kind. 5, yeah. Fight fire with fire, DBS with DBS. Style. Himself a nice grenade elimination, but Vampire Esports looking set to take a very का क्या चांस है भाई? चांस तो सभी टीम्स का है भाई। जितना देखो ना, सिंपल सी बात है, जितना भी टॉप की टीम अच्छा खेलेगी उतना नीचे की टीम का चांस बनता रहेगा। HVP behind him. It looks like he's looking up towards that position. MR5 by himself below. Really 2 contenders. जितना टॉप की टीम अच्छा खेलेगी नीचे की टीम का चांस बनेगा। कि जब ऊपर की टीम टॉप खेलती रहेगी तो नीचे का थोड़ा स्लॉट बढ़ेगा, बट कंपटीशन भी बढ़ता रहेगा फिर नीचे वाली टीम के स्लॉट के अकॉर्डिंगली। बात है वैसी। बीबी की लटीका वाली वीडियो में टीटू मामर Tony nades over the top, still looking for noise, but that Pro TM को कैप्टन रखा था फैन क्लैश में। मनी कैन भाई, आप हमारी वीडियो क्यों नहीं देखते? हमने आपको अच्छे से बताया है कि कभी भी कैप्टन वाइस कैप्टन रखना है। अरे भाई बड़े नॉइज भाई, रखो एचवी पे आंखें बंद करके। और वैम्पायर तो अच्छी खेल ही रहे, तो वैम्पायर को रखना चाहिए था आपको।
और अभी बेकन खेल रही है, बेकन का एक बंदा बचा है, बढ़िया, सॉरी एक बंदा ही बचा है अभी, वेम्पायर का मोस्टली चिकन हो सकता है ये मैच, एंड टिक्सी भी आउट हुआ, राइट नाउ इट्स अ टॉप 4 टीम्स, बेकन एक मैन, 4 मैन, फेज, देन गॉड, गेम लॉर्ड, इस बार अच्छा कमबैक आया है, अगर नीचे से देखते हो अगर आप, येलो टीम्स अगर हम बात करें, बॉटम पे थी गेम लॉर्ड, प्लेसमेंट पॉइंट लेके जाने वाली है 10 तो मिनिमम यहाँ से। Thai teams coming through here is VPE. Really enjoyable team to watch. Super aggressive and really knows where to put the hurt in. I think Now it's 2. क्या बात है भाई, गेम लॉर्ड का लंदा अच्छा प्लेसमेंट पॉइंट निकाल गया, फिनिश भी निकाल गया, बहुत प्यारा। चलो भाई, वेम्पायर का चिकन डिनर वंस अगेन गाइस। आज तो फैन क्लैश में ना लोग अमीर होने वाले गाइस, कहीं मैं जाना ओवरऑल स्टैंडिंग दिखाने वाला हूँ भाई, जिन्होंने भी कैप्टन वाइस वेम्पायर को बना रखा होगा उनका तो क्या ही हो रहा होगा गाइस अंदर ही अंदर से। तो ऐसा बढ़िया भाई, बढ़िया। आइए फैन क्लैश क्या बताओ मुझे भी प्लीज ब्रो। फैन क्लैश इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके अपनी फैंटेसी के थ्रू अपनी टीम पिक कर सकते हो, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग यू कैन प्रिडिक्ट द टीम, सॉरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अपनी टीम ले सकते हो, पिक कर सकते हो, नॉट प्रिडिक्ट, यू कैन पिक फैंटेसी अपनी टीम बना सकते हो वहाँ पे, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी आपको अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, दैट्स द पॉइंट। HVV एंड VP, अरे भाई HVV एंड VP हो रहा है, मैं तो अरे भाई सही में HVV एंड VP हो रहा है भाई। SGD disappointment, अरे भाई। Very pleased with this one. They moved quite far to get into position. लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, कर दो गाइस। हियर वी गो द ओवरऑल स्टैंडिंग गाइस, आ जाओ। थर्ड मैच ही हुआ है अभी हमारा, फोर्थ मैच एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ मैच बचा हुआ है, तो कहाँ है स्टोरी। तो हियर वी गो गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है यहाँ पर लाइक मैच नंबर थर्ड के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग्स, कभी HVV ऊपर कभी वेम्पायर ऊपर, बस यही चला है गाइस। बट बेकन भी आ चुके हैं 17 पॉइंट लेके, जो कि बहुत 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 ओपी चीज है, 17 पॉइंट लेके आ चुकी है टॉप 3 के अंदर। आज के दिन का अपना सीन था कि बेकन आएगी एंड बेकन आई, क्या बात है भाई, बेकन बहुत बढ़िया, जीजी। इनको गाइस आज के दिन का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं रहा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन अल्फा 7, दम 1 गेमिंग, देन उसके बाद LGD खेल नहीं रही है, पावर खेल नहीं रही है, टाइटन खेल नहीं रही है, सॉरी पावर खेल रही है, 5 पॉइंट लेके गए, डिसेंट वन है। एंड पावर के भी 3 मैचेस बचे, तो पावर को 3 मैचेस में ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स निकालने हैं। स्काईलेस गेमिंग को भी सेम पॉइंट निकालने हैं फॉर द सेफर साइड, 3 मैचेस बचे, ये मैच ज्यादा अच्छा नहीं आया है। एनिग्मा गैलेक्सी खेल नहीं रही है पैकेट्रॉन नहीं खेल रही है, ये सारी टीम्स अभी नीचे जाएगी, अभी नीचे से भी टीम आने वाली। फेस क्लैन ने काफी अच्छे पॉइंट्स लिए, रिजेक्ट गेम लॉर्ड 16 पॉइंट लेके गई है, I8 Vivo, IHC, BGK, TEM and GK. So these are the team guys. रेड टीम के पास still have a chance, बस ग्रीन टीम के पास नहीं है। एंड ग्रीन टीम अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऑब्वियस ही बात है ग्रीन टीम टॉप पे ही होगी, क्योंकि इनके ज्यादा मैचेस भी हुए, क्योंकि 9 मैच खेल चुके। फिर भी गैप अगर आप नोटिस करते हो, काफी अच्छे पॉइंट्स निकाल रही है ग्रीन टीम। तो ऊपर का जितना ऊपर का कंपटीशन होगा, नीचे वाली टीम का कंपटीशन भी नीचे के साथ बढ़ता रहेगा, अगर आज के दिन वो डाउन परफॉर्म करते हैं। बाकी लेट्स सी, फैन क्लैश में पैसे अगर लगा सकते हैं या फ्री में, फ्री में मेरे भाई जुगल भाई, फ्री में फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको फ्री में मिलेगा, सो फ्री में जाके कर सकते हो आप। Are starting to perform. Faze, this is the second time they're ending up in the top 4, top 5 as well, so they're getting themselves a decent amount of points when you compare. चलो गाइस, हम लाइव करते 6 मिनट के अंदर गाइस हमारा अगला मैच स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ गाइस, टीम ने फिक्स कर रखा है कि पहले स्टार्टिंग में चोक करो, बाद में फिर कमबैक करो। यार क्या करती है टीम भाई, आज इसने इज्जत डाउन कर दी भाई टीम ने। इतना अच्छा मोमेंटम, इतना अच्छा फ्लो भाई, सब कुछ उस टीम के पास है, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है कभी-कभी। Okay, well, we're going to jump back to that in a second as we have to talk about 150 प्लस कट ऑफ होगा ये में है, 150 प्लस हो ही नहीं सकता भाई, 16 का बात कर रहे हो, 150 प्लस हो ही नहीं सकता, लिख के ले लो मेरे से। 150 प्लस हो गया तो भाई क्या बोलो, जो आप बोलो वो, अगर 150 प्लस चला गया भाई। मोहम्मद अली भाई बहुत हो गया। I know you have it, Jason. I do not. डिजिटल अगर टच हो गया वो अपने आप में बड़ी बात होगी। For everyone on the stream, roll it, Steven.
Special segment, yeah. Also, big shout out here to Prime Gaming. So with Prime, you can claim free PUBG Mobile items, premium content, and other Prime benefits as well. Max, I do have this video. I'm looking over at my Sony Xperia 1.4, and I'm thinking I probably shouldn't post it. So we're not going to talk about it. One thing we will talk about, though, is the macro play you were discussing while watching, talking about Vampire and HVP, in your opinion, Max, being the two best macro playing teams we have in the lobby at the moment. Exactly. Okay, we could talk about HVP, but like this game is going to be mainly focused on Vampire, and of course, first place, 1 point ahead of HVP. These two teams are looking so good, but and I don't know if you agree with me, Sandstorm, on this point for Vampire, but I have the impression they can just flip a switch. चलो भाई BTR के कुछ सबसे बात हो रही थोड़ी. Aiming for good positions in the circle to this hyper aggressive team that's just going to nuke down all the teams around them. Like we saw them the moment they won that 70-80 जाएगा टफ. अरे हाँ यार उतना ही जाएगा 80-85 इतना ही जाना इतना ही चाहिए. बाकी देखते हैं. ये भी बहुत हाईएस्ट केस है, बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट केस है. बाकी देखते हैं. If Game Lord, like you said, had stuck to that position and actually grouped up together, it would have been a different story. But again, we go back, second page of the overall rankings, we're seeing the likes of Vivo, IHC, and Beşiktaş still trying to get over the 17 points of Ayogi Esports. But keep in mind, again, Ayogi played 6 games, so it shouldn't take that much from the rest of the teams from Group Yellow to just get over that hurdle, at least on day 1, and then we'll see what they're going to be able to do on day 2. I'm a little bit worried, though, for Reject. A little bit of a flash in the pan from that first match where they did actually get in a 16th place, but they've been kind of non-existent since. I'm not a fun time. आपकी 5 टीम ओके बताते भाई बताते हैं गाइस. जितने भी लॉन्ड हो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को. ये बोलना हम जरा भूल जाते हैं बट कर दिया करो, दिल से अच्छा लगेगा हमारे को. एंड ओवरऑल स्टैंडिंग तो हम आपको बता चुके हैं. आपकी 5 फेवरेट 5 टीम गाइस. मेरी फेवरेट जो 5 टीम है, रुको भाई मेरे को ना एक बार चेक करने दो. मैंने ना आज टीम क्या बनाई थी. 2 मिनट रुको जरा सब्र करो. माय एंट्रीज and to contest पे. But we got Max, I have a treat for you. You have an interview over on the stage. It's with your boy, not Tixie. It's actually gonna be Meku to talk about HVVP. एक मैंने जीता है 19 रुपए को. लाइव है ठीक है. मैंने टीम क्या बनाई थी आज. Ladies and gentlemen, welcome back. You're currently tuning in to the PUBG Mobile Global Championships 2022. My name is Flavor, and hopefully you guys are having an amazing time. आपकी 5 फेवरेट टीम, मेरी 5 फेवरेट टीम. अरे भाई साहब कौन आ गया हमारे स्क्रीन के सामने. इंटरव्यू सेशन भाई क्या बात है. Unleash your roar with the captain Messi. Messi को लिया यार मजा आ जाएगा. Amazing PUBG Mobile actions happening throughout the whole day. And of course, before we continue on, ladies and gentlemen, just to remind to you guys that Captain Messi is joining the PUBG Mobile Battleground, packed with Messi football icon set and more collaboration team items until the December 31st, 2022 to help you stand out in the Battleground. Make sure to grab them in PUBG Mobile समीर चैट में कि अभी कौन सी ऑर्ग में हो भाई. कोई भी ऑर्ग में नहीं ब्रो. We are free. We are free agents. From a representative we have here from Team HVVP. How are you guys doing no today? Free agent. I'm free agent. Okay, I guess that's the translation, right? It's very apparent and clear. And of course, okay, guys. So, your whole team played very well. And in the second game today, आपकी 5 फेवरेट टीम, मेरी 5 फेवरेट टीम मेरे भाई. HVV की आईजीएल कौन है? HVV का आईजीएल कौन है? HVVP का आईजीएल कौन है? आपकी 5 फेवरेट टीम कौन है? 90 प्लस सेफर साइड टीम. जस्ट 90 प्लस तो बहुत सेफर है. 85 प्लस भी होगा. बाय द वे आ जाओ गाइस, रुको जरा सब्र करो. Это была наша домашняя зона. Мы просто отконтролили круг, потом закрыли край и выиграли игру. Yeah, so it was our home zone, and we basically just controlled like the whole our side and won the game after that. I'm very confident. Based on the response itself, I believe that they kind of knew what they were doing throughout the whole day, and it is a brand new HVVP we're looking at right here today. And of course, final question here is that what do you guys need to focus on to keep the ranking in the top today itself? And what do you think is the most important for the following games, the next 3 games that we're about to witness? Смотри, что нам нужно делать, чтобы остаться в топе в течение 3 следующих игр? Думаю, что продолжить играть так же агрессивно и до конца дня постараться играть стабильно, и тогда мы закончим на первом месте. Basically, we need to play as aggressive as we used to play today and try to be confident in getting points in all the next games, and so we will be at the top 1 at the end of the day, basically.
There you have it, ladies and gentlemen. Team HVVP bringing their A game right here for day number 2 in the survival stage. And all the best to you guys. Thank you so much. Amazing interview we're having right here. And of course, for those who are tuning in, we still have 3 more matches to go. Don't go away. After this, we'll be passing it back over to our analysts and we'll continue back with our remaining matches right here at the PUBG Mobile Global Championships 2022. See you guys in a bit. Let's go. Bye-bye. Okay, I do have confirmation from production that we are each being sent one of those sweet swagger outfits. However, Max Bands is going to be made entirely out of denim. I already got that. I would like a skin with full denim actually in the game. Does that exist already? I'll have to see. I mean, I'm probably not going to pull it anyways because my luck is just horrendous, but I would like it. We'll think about it. We'll think about it for the finals. Maybe we can somehow fit you out in the denim tuxedo. But teams to watch. Who do you guys go with here going into match Grand Finals में number 4? audience We're actually भी already रहने past वाली the है. halfway point of the day. Vampire, it's kind of a cop-out decision there, Max, to be fair. Oh, let's go. It really is. It really is. But I'm going to talk about the other 2 teams, I think, then. Damwon, I gotta say, completely different approach and playstyle we saw from yesterday. Like, they seem a lot more passive. I think, like, they're struggling to take these fights. So, Damwon's slowly been falling off, actually, throughout today. So, just making sure they're still going to be in a safe position. But as we said, Root Green are not playing anymore after today. So, you want to just be as safe as you possibly can after these next 3 matches. So, Damwon, I want to see maybe just a little bit of a step up in these next 3 games. It's a good point, actually, focusing on teams that will have no matches left to play after we're done today. We can see Sandstorm going vacant time and HVVP when it comes to that, but also Power mixed in yet again. I mean, one thing we do know about you, Sandstorm, is your consistency in your picks, even if the team is doing horribly. Though Power isn't necessarily doing that bad. Talk through your picks. Yeah, I mean, look, Power, 100%. They were doing horribly on day 1 of the survival stage, but complete change, comparing them to the likes of Damwon, they start to slide down, but Power are starting to climb back up slowly but surely here. The 3 games that we've had, they've constantly been able to get themselves some placement points, so very good for them. HVVP, there's no need to talk about. They're trying to fight for that first place between them and Vampire, and it's just deadly 1 point difference. I want to keep looking at that and seeing if it's going to change. And for the last pick, Bacon, again, the team that ended up with a chicken dinner on day 1, and they're keeping up the consistency in day 2. So I want to see if they're going to be able to keep it going for the rest of the day, for them and for Power. Well, look, we're going to find out how those 2 teams are doing here as we hop over to our casters for the next match of the day with John and Blake. It is really starting to come down to the crunch now, Blank, for a lot of these teams from that green group middle pack. Of course, those teams towards the bottom of the 9-game teams are going to have to really put in that effort, put their best foot forward. I'm looking mostly at Skylights and Power here as teams that absolutely need to play blinders to see themselves a little bit safer. Yeah, Skylight's Gaming currently right on the precipice at the moment, 10th place with 50 points total. Enigma Galaxy and Bigatron, obviously, they've played 6 matches so far with 49 and 46 just underneath them, so very close to overtaking them with also 3 matches still in pocket to make that happen. So for them, Skylight's Gaming in a very worrisome spot. Power, though, they've been playing pretty well today, honestly, all things considered. LGD कल आएगी, DRS Gaming कल आएगी, IET कल खेलने आएगी guys. जितने भी audience जिनको नहीं पता है, आज Red Group को रेस्ट किया गया है, वो मैचेस देख रहे हैं. It's not a major difference to Skylight's Gaming at the moment, but I think with the amount of good plays we've seen from them, these next 3 games will have to be critical. Keeping up that kind of momentum to see them up towards maybe top 5, top 7, which is a little bit shaky in terms of position, but should be enough, should be. बताऊंगा जब आपको ना 16 टीम playing path from the eastern side over Novo up to Stelba. यहाँ से क्वालीफाई होकर टॉप 16 टीम Early drop out from IHC heading over to Novo. And 7 actually out early as well. Looks like they're not going to go to Povka. PL highlights, there is no raffle code, just download Fan Clash. And कल एक लॉन्डे ने भाई 1250 रुपए जीत लिए भाई. Party भाई party दीजिए भाई party दीजिए जिसने भी जीता है. Yeah, this is a bit of an awkward playing path overall. Sending players up towards Stelba's side. Most likely, I'm feeling a Western Circle is going to hit our screen very shortly here, John. I feel like this is what we're going to see just with how awkward some of the circles have been today.
कई लौंडे Make तो it ऐसे time भी होंगे against जो towards कुछ ना middle कुछ to तो लेके power, जा ही नहीं pretty होंगे standard हमारी for them. कल हमारी भी काफी अच्छी They गई played fairly 243 well from हमारा that स्कोर था position. However, एंड I 260 think हाईएस्ट Bacon with the स्कोर था हमारा scoring result कैप्टन that और they वाइस found कैप्टन का ही फर्क themselves पड़ा है जो हमने कल टीम over बनाई in थी their particular group, it's a इनको little ने bit थोड़ा सा odd to me एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल seeing लिया वैसे them, इनको तो किसी ने not get सोचा these नहीं होगा massive wins. All in बट all, though, डार्क third हाउस place निकल is के आई थी still कल very के दिन पे strong, आज के दिन पे 81 भी points, ऑलमोस्ट अभी but तक that ठीक is चल रहा है overshadowed by the इमेजिन आज के दिन 40-point की मेरी gap टीम्स क्या थी between जिन्होंने them and मेरी वीडियो second and देखा होगा third place, बेकन 121 वेम्पायर and एचवीपी 122, एंड just been टीएम ने तो हक दिया absorbing all the टीएम पे points. डाउट था And that's बट why it's ठीक है भाई difficult, even in your particular groups, not only just for the group stage, but भाई also फैन for the क्लैश कैसे survival यूज करे stage, because you're बताओ always playing with those teams on the days that you have ओके your भाई 12 मेरे matches. Little bit of a बताते struggle आपको इस for मैच की them. बात करें इस Either मैच के way, खत्म होने के बाद Bacon बताएंगे Time फिर से यार still need नहीं to find यार some other points क्यों during कर रहे हो these last बीजीके 3 वालों matches ऐसा and not क्यों allow कर रहे हो HVP टीएम and वालों मत VPE लड़ो to run भाई away अपना with अपना all लूट of them. कर लो क्या रखा है Certainly इसमें don't want लड़ने that में to भाई happen. Blank, you couldn't have been more wrong on the circle. It is very far east इन्होंने on the अपना shift. We येलो saw ग्रुप that तो pop निकाला बड़ी from शांति the से plane अभी पता path नहीं क्या हो गया picture इनको भाई earlier. And it will drive all these यूज कैसे teams करें to, I बता दो मेरे imagine, इस stay मैच के बाद इस fairly मैच के close बाद to one पूरा आपको another. डिटेल में बताया It'll be जाएगा interesting पूरा to का see पूरा का पूरा डिटेल में just where these teams are going to be able to claim position and where they're going to fold themselves back on in as well. Game Lord, a little bit of a hot drop scrap with power, playing 1v2 right now in their current scenario. Game Lord playing a little bit southeast of them. भाई I imagine कास्टर power a little bit ओ easier माय for them गॉड to पहले regroup बताते कास्टर का fast. साउंड कम करने को मैंने They're gonna have a वॉइस little के लिए bit उठाया हुआ था better यार मैंने इतना कुछ equipment as बोला well, तुमको सुना bit ही of नहीं a होगा greater area that they can loot between these two players going through. Robs, imagine you just want to disengage for this from Game Lord, but the vehicle in possession of power. चलो भाई ऑल सॉर्टेड आ जाओ Able to just move out and away from that. A nice little pickup there for power will give them opportunity to get towards the circle a little bit quicker. Again, Game Lord still around that area. Don't want to get popped out the vehicles nice and early. HVP picking up some more vehicles. But their troubles, obviously, this is very, very far away from their original drop spot over in North ऐदा नहीं George. चल And दे with प्यार playing path as well, सोनिए this is ऐदा नहीं really चल switched कास्टर up साउंड for कम these करो guys कि overall. कास्टर It means साउंड the कम looting कर दिया is मेरे gonna be भाई difficult. कर दिया मेरे Picking भाई up a position within the map is going to be difficult. फैन It क्लैश में looks like गॉड they're just लेवल going पे to हूँ head बट back over towards North George, just get some free That's loot good. over on that side. Yes, it's going to take them a little काफी bit ऑडियंस है longer. फैन क्लैश पे Only हमने already पहले भी 3 किया था minutes एक बार 30 जितना into मुझे the याद आ game. रहा You है ideally we want have to a be lot building of your loot audience for from Faze फैन by क्लैश now, अच्छा and बेस है हमारा considering फैन where to क्लैश go का next. नाइस वन But I think for HVP, they are आई गेस much प्रणय happier हमारा मॉड है playing on उसने the भी edge anyway, फैन and they're क्लैश में अपनी expecting by the नॉलेज time they come out of North पिक्स George, के हिसाब से और most teams will गाइस already be inside that circle. I'll be कम looking काम to करो कास्टर certainly, का and that is, साउंड as कर I've दिया said राहिल भाई before, राहिल where भाई we कर see दिया some of the और बताओ और strongest कुछ play सेवा from कर सके HVVP. They're क्या going to बात है sort भाई out their aggression एवरेज according डैमेज to सबसे 6 ज्यादा किस किस over का on है that भाई interview सुकी आज खेल stage. नहीं रहा है फिर भी So रैंकिंग के अंदर hopefully है that is just what they're going to play to, their strengths. And Vampire won't let them have it easy though on the north side. Saverni occupied by them. I imagine they're going to be playing from that Stauber outpost that Stops has moved on over towards. We did see a substitute as well, I believe, coming through, stoned in for Fluke out on the Vampire roster, going back into Erangel. So they are going to be playing that way around. Keeping Stops in, who hasn't seen a lot of play over the first couple of days. We've seen him a couple of times, but yeah, you're right, not a huge amount. And for VPE, they have been playing highest kill by team in very, single very match in fast-paced official this entire tournament time. by I think PUBG for HVVP, they've had some much more कर दिया भाई मेरे comfortable पुनीत भाई wins, कर but I दिया think that's कास्टर from साउंड इज some नाउ great setup. For VPE, on the other hand, it's very much a case of just brute forcing their way into a lot of these circles and taking a lot of difficult fights, a lot of difficult crashes to find that optimum position towards the center. Very कल different यहीं पे play पेटियां बनी styles थी from both these वैम्पायर वालों teams, की but और I think एचवीवी I would वालों say की जब that उनका VPE's क्लैश हुआ था playstyle is a यास नाइस little एंट्री bit मारते more और फायदा उठाया था डीडब्ल्यूजी ने wearisome. I'd say it's one of those ones that you can't really keep up for too long, but it's great for this 12-match sprint, in which case you want to get as many points अच्छा as मैं समझ possible, गया in which case these players can start to think about the last chance. But again, it's 5 days. It is 5 days in a row, and you have to make sure that by the time you get to that last chance, you better be ready to go. And although, yes, Green do play out all their matches, finishing today, it does give them that extra rest day coming into चैट last डिले chance, which could अरे be अरे भाई quite useful. अब ठीक होगा गाइस तो मैंने long दूसरे fall फोन and a पे short कर stop. ओके Imagine बॉयज out the side of a building, no one सुने nearby, so पाजी it was just full damage that took him और out. जूम करो और You've जूम got to कर लो wonder how that और happened, जूम कर लो to be honest. How are you taking damage in the first place to allow yourself to
fully go Which down. player had the most assist in the group By the stage? way, should be a simple res. Okay, We'll slow them 11, down a little bit more. 21 He assist said है that they'd be HVV में wanting मैट to get on the road soon. We're now up to the की फुल 6-minute mark. सपोर्ट डैमेज अच्छा हाँ एक इंटरव्यू भी मेरे को Looking at याद आ रहा है rotations, मैटिक they का should be एक on इंटरव्यू their भी हुआ way था out मैटिक का now, जहाँ पे but उन्होंने Ekin बोला भी doesn't था even have कि a डैमेज Vez. सबसे ज्यादा आपका है लाइक असिस्ट Yeah, आपके ज्यादा it है is फिर limited टिग्जी ने looting सबसे ज्यादा time. फिनिशेस Yeah, उठाए थे you याद get है a res off, that's even less looting time available to you. And the circle is encroaching quite quickly. You can be comfortable outside the blue for a little bit, but that's usually on the consensus that you've already been looting for quite a while and you've got a lot of meds on board. You've been able to stim up. Looks like, you can see exactly what he was trying to do there. Trying to go to the next window. A little bit of speed as opposed to having to run through the building all the way up the stairs. Could have been good for them. Fortunately, Ragey, कौन सी टीम as थी well ये as the rest, गेम लॉर्ड the बुरा guys लगा यार from दिल से Reject बुरा will लगा just भाई देख के absolutely दिल से बुरा send लगा Game Lord packing. There is really nothing you can do about that when you're caught unawares. Reject playing it pretty nasty, to be honest. This is a wild split still coming on through from them because the other pair are over by Sunken City right now, over in the northwest, sorry. So really, really wild how far apart they are. Yeah, requesting they do regroup soon, but I imagine Duello and Just This will be bringing a lot of loot over towards them. Geekay wants to take a little सेम bit of a स्प्लिट stand here. गाइस Usually स्प्लिट you में बैठ wanna जाओ toss grenades आरसी down वाले the लौंडे भी stairway, लाए भाई bounce स्प्लिट it कर लो upwards to लो where जल्दी Ragey is currently playing. That usually works out very, very well. And Game Lord just didn't opt to go जीके for वालों that one गलती से either. अंदर They मत didn't चल have the जाना nades available, कब्रें the बन जाएगी utility. कब्रें And I think for anyone going straight down into shelter, always has to be something that you do consider. There's some players just playing quite sneaky down there, so yeah, almost confusing that they would रेफल fall कोड नहीं prey आ to रहा that फैन one. देयर इज Either नो way, Game रेफल Lord कोड down मेरे to 2 भाई players. रेफल कोड है ही नहीं Saw a reject in a way, but they're waiting for the rest of the team to regroup. ओके दे नो could be interesting. I mean, those death crates will absolutely give the game away that there's been scraps over down there, so they'll know there are players down there, certainly, for Geekay. But looks like they don't want to push in, and why would you, really? As long as you can control that exit, it's very, very hard to push out of it. Yeah, you can even prop vehicles inside the entrance, making it very difficult for anyone who's underneath to actually leave. क्रिप्टो कौन सी टीम में है क्रिप्टो कौन सी टीम में है ब्रो क्रिप्टो आपकी टीम पे है QOL that is unicorns of love the rest of his team as well. सही है How they have either side covered. एम्पायर इस जोन में ऊपर से एंट्री भाई क्या They बात do, certainly. I mean, this is nice. It Actually- gives Reject that way HVP out ने as काफी well. लेट मूव कर दिया बे That is a hard shift, Blank. Very, very hard. Why? On the east side. यहाँ पे भी Keeps- HVP है I ना would say HVP probably की about एंट्रीज भी यहीं 50% से of होती the है जहाँ पे circle is वेम्पायर playable है at this stage. कल इज द बिगेस्ट In this early of a एग्जांपल circle, that's gonna वेम्पायर really ये cause a जोन lot of problems इनको का with अच्छा the जाना playing चाहिए path as it कल was. के Teams मैचेस are में 2 already मैचेस close हुए थे by जहाँ to पे one इनको का another. बहुत अच्छा So I एग्जीक्यूशन imagine आया था that ये team जोन number's gonna drop ये जोन fairly soon. तीसरी बार बन गया आज Yeah, के and दिन you, पे you मतलब even कल have को मिला probably के कल less के than 2 that दिन और आज का available, तीसरा दिन considering एंड no one's वेम्पायर really फर्स्ट gonna be टाइम तो hitting them स्ट्रगल towards करी थी Milton सेकंड Tower टाइम this उनका early काफी on, अच्छा so मैच गया है there's इसी just टाइप this के जोन और barest सेम edge on the एंट्रीज डाली है side to तीनों टाइम maybe वेम्पायर like की एंट्रीज 40% ऊपर से ही हुई है realistically. It's very upsetting. अगर आप Wow. कल के 2 मैचेस भी देखोगे तो वेम्पायर की Okay, एंट्रीज bit of a tumble तीनों there on टाइम the ऊपर से roadside, मारी but उन्होंने इस will बार be जो able क्लस्टर to भी ऐसे उनको maintain. लाइक टीम ज्यादा नहीं IHC मिलेगी playing समझ रहे close हो by तो on rotations to Geekay, इजी who इजी moved away from इजी that पीजी shelter जाएगी position. They crashed far and fast जैसे into इनको the ये east टीम and मिल गई north ठीक है bit यहाँ of पे the काट दिया Delta IHC ने Peninsula, मार but दिया वो उनके साथ नहीं होगी IHC यहाँ have पे similar ideas, and their claim seems to be stronger ये वाली this भसड़नी time होगी उनके around. साथ बढ़िया Shots starting to ring on out. Alex be looking for the shots. Hope, but Icy's down, so they'll have to figure out how to get that one back. लेट्स सी In the रेस्ट ऑफ द meantime, टीम on the कैसे north निकालती side, मीनवाइल Power वेम्पायर ने पकड़ा suffering पावर to को Vampire, who नॉक are दिए क्या in बात their है final फिनिश 3 पे games निकाल now, दिया Blank. They लजे are trying to play it up, keep that points total to try and match HVVP, but both of these teams, quite frankly, have already made it out of this पावर survival के stage. कितने बंदे गिर गए पावर के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है इट्स फोर्थ मैच आई गैस इसके बाद आपके 2 मैचेस बचेंगे तो यहाँ से पॉइंट ले जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस मीनवाइल BGK There is a lot of opportunity for other teams to jump up over that 53-point margin. I mean, you already have a few of these teams underneath. Reject, Faze, Game Lord, all on track to get towards 50 points by the end of the day, sending Power even further down the SG lobby. के लिए इंपॉर्टेंट है It मैच is a से little bit scary पॉइंट for निकालना Skylights. I mean, इस a मैच lot of पे this has happened just purely because of पावर VPE के लिए and इंपॉर्टेंट है HVP इस able मैच से to पॉइंट be निकालना this point sponge DWG towards the एंड top of the अल्फा lobby. 7 तो I mean, निकाल ही that's लेगी क्योंकि दे आर इन pretty लाइक much ठीक 80 ठाक पॉइंट है points वो जितने भी उनके overside. पॉइंट है That बाकी लेट्स सी 40-point barrier between them and third place that has been almost sucked टोनी away की ने from नॉक the दिया rest IC of को anyone ठीक in है Group Green.
which does make things incredibly difficult for them. IS is still And in struggling a way, guys. you almost feel Alex sorry ने for दिया Green in a way Ventoris को. that they have these two फंस रहे हैं powerhouses guys, फंस रहे हैं, in वो them एच that पे head फंस रहे towards हैं. the survival stage alongside. But if you want to make it towards that last chance, you eliminate as much of the competition as possible that you can. HVP and BPE Faze. certainly have been doing that. They've been really on a tear as well. VP का आइजल Honestly, at कौन this है? अरे stage, फैन they're क्लैश पे कौन pretty सी much the स्ट्रीम only two लगाऊं भाई fighting बता for दे. top spots in आज का general मैंने for that देखा है first ब्रो, आज place का वीडियो prize. देख लो, आज But का that मेरा drive रीस moving into that last जाके chance as well. अच्छे से Nobody बताया हुआ है कि really, क्या क्या कैसे it's कैसे certainly करना है. Group बाकी Yellow इसी has स्ट्रीम पे given स्टार्टिंग them पे a मैंने बताया, run बट for बेटर ये it. रहेगा आप मेरी आज की वीडियो Reject देख लेना. playing on रिसेंट वीडियो जहाँ पे मैंने टीम के ड्रॉप under a लोकेशंस को 10-point बताया हुआ है average right एंड now. जहाँ प्रेडिक्शन कर आज Not की जो वीडियो really रिसेंट looking like they're powerful enough to take that one के back. पहले अपलोड करा हुआ है And you've वो. got teams चलो भाई, playing on बहुत बढ़िया 6 वेम्पायर, games, sure. बहुत That is बढ़िया again बेकर. a क्या बात है, brutal ऑलमोस्ट ऑन द shift. सेंटर. That takes it all the way HVP over की the एंट्रीज Popka. एज एक्सपेक्टेड यहीं से होनी Still, चाहिए थी, that's यहीं like से हुई. बाकी 30% काफी लेट दे दिया playable उन्होंने right now, रोटेशन, Mike. मे बी ड्यू टू द Yeah, the वेम्पायर आई Popka गेस, held आई by डोंट नो. bacon time. He moved up from mill to power. You wonder if they took a एक्सपेक्टेड था boat मिक्कू to get पाजी जा into रहे this हैं position. देखने के लिए. Geekay up इंसान towards थोड़ा their south. There really is not a इन्फॉर्मेशन lot of प्रोवाइड spots करेंगे. available here. There's a few ditches and areas around the trees, forested areas, hard cover to play. But yeah, very few decent compounds within this area to actually move out from, to actually Check play from. So power HVP IC. finally make their way in on that northern बढ़िया. side, very close towards BPE. Meantime, IHC really putting the hurt on Faze. पावर Not के लिए had काफी इंपॉर्टेंट एंड the क्रूशियल मैच. most luck, to be honest with you. I think they've still played good, Yeah. everything considered. So difficult to move on these hills now. Still 16 teams alive. I'm surprised that we've come this far with this many teams. But they are starting to bleed out. Game Lord down to 2, Geekay down to 2, Reject looking like Big they're going to gun, be on 2 yeah. very, very soon. एक फिनिश उठा लिया Power as इन्होंने. well, Faze. फेस का All लौंडा of एक. these teams losing players and a little bit of momentum. Vampire Don't, even he's not losing playing. a player on that north edge. स्विमिंग पूल चलो प्लेइंग Trying ब्रो. to मिस्टर keep डेंजर खेल themselves रहा है in वो. it. They are in the circle अभी for now, but वो हुआ ना फ्लूक have to आउट push किया further ना, forwards. ये Next. हुआ इन हुआ. Faze down to 2 players. अजीज Again, अजीज अजीज. all things considered, with them losing players so early on in most of these games, they have still done a good job to keep that point scoring average up, which is good to see from them. I mean, 29 points is nothing to scoff at. Reject similarly with 29 points as well. But again, you got to remember that Reject, the majority of their points came from their first game with 21. They really have not added to that very much throughout the rest of the day. Game Lord also a decent-ish showing, 26 points. This feels a little bit more of a consistent scoring from Game Lord, but it's not quite enough to shoot them towards the top of the tables. And you're looking around about 100 points if they keep up this pace throughout the rest of the tournament. And you do certainly want to be keeping up here. It is the survival stage after all. HVVP, they've played in from the north. They've been scouting on that north side for quite a while. They should be aware of Vampire at their back left. उसाल पाई क्या बात है. As they approach this IC को दिया engagement उन्होंने. against Beşiktaş. So maybe IHC they're not gonna go for that full यार, send unless they IHC get a पाई knock. जी, They're IHC just gonna IHC hold को out on बेटी the ना हो north side of this जाए. compound, which is actually, to be fair, probably pretty priority considering where the circle is likely to go on the next shift, hoping it comes back landwards. But you imagine that this भाई compound Alpha very, very 7, likely to be TDS, really solid in मादो, this next circle. बढ़िया smokes हो रखे हैं. I mean, this is, like you said, an insanely good compound. The fact that HVP have been able to roll up on towards it without Beşiktaş saying too much about it says a lot. Mythic in the smoke with another player. Has to just madly spray through it to try and find at least one of them. IHC also suffering from Mafioso up on high, taking a good spray up towards them. Icy falls. Now, 2 players left remaining. पड़ा. Some good angles that they have. बहुत प्यारा नॉक भाई, क्या बात है. After ages guys, after ages मैं देख रहा हूँ नॉक्स यार, स्नाइपर से मजा आया देख के. Oh, you felt it a little bit in your gut, but Revo felt nothing of the kind. Won't need to go to the barbers though, he's already been shaved by that one. Not quite going to catch it, fortunately. Circle does pop, comes a little bit back to the land. वाटर सर्कल लूटिंग भाई मजा आ जाएगा. वाटर सर्कल लूटिंग अब तो वो भी नहीं है कि लैम्बो लुम्बो को सादी लैम्बो एक साइड घुस के मार रहे हो भाई. सिंपल अब तो लैम्बो लुम्बो वाला भी सीन नहीं है ना, गाड़ी का जो ग्लिच होता था, अब तो वो भी सीन नहीं कर सकते. जैसे तैसे मैंने एफसी पर टीम बना दी एक्समैन. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. काफी सारे लौंडे खेल रहे हैं हमारे साथ, बहुत ज्यादा बढ़िया.
from the Flames. They're like spotted on the off. शॉट में satisfaction था भाई, गंदे वाला satisfaction था भाई, तगड़े वाला। मैं हमेशा देखा, मेरे को स्नाइपिंग शॉट्स बड़े सही लगते हैं, जो कनेक्ट होते हैं ना भाई। स्नाइपर के मतलब स्नाइपिंग वाले नॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। लंबे टाइम से दिख नहीं रहा था, किल फीड पे दिखता था, बट ये कैप्चर हुआ, अच्छा लगा देख। On the compound, Vivo keyed, trying to move in, playing with all four of themselves as well. See, they're starting to spread out, leverage it. They'll figure out which buildings are occupied, but Down One are going to let them know all about it. A 1-for-1 trade right now. Faze eliminate. Down. Ground floor held by Forest. Fees 29 decent points है अगर आप बात करते हो top 60. Good start for the hold for Down One. देखते हैं भाई आगे से. Is down though. Luckily, there's another player in the तो building. Unfortunately, fight they've करा, just been taken out. but Will be the last to fall, but Favian has fallen in the process. And Vivo Down once One again will hold the compound on the southwest side. Yeah. 11 point है भाई. They will have to move, but yeah, that's strong and good news for them. For Down One Gaming, just ब्रो पहले looking at आपका their नहीं points so पता था, far, इस I mean, सीजन ही fourth आया, place, अच्छा लगा, मैं अब 74.78 से now यहीं with those स्टिक करूंगा. eliminations added. इससे पहले It's लूटे not के वाला quite चिप where देखता they'd था अभी like to भी be, लीग considering में. the performance they had yesterday, which looked so अरे good. भाई ऐसे क्या कंपेयर कर रहे हो भाई, Unfortunately, it's just a सब case बेस्ट of है. VP and HVP just overshadowing it. जहाँ आपको अच्छा that लगता है ब्रो today वहाँ because they देखो. have been so strong and so on the money. And that's that adaptation day coming through for both these teams, About the realizing field, what they bro. need to do, how they need to get it done, what maybe was going wrong yesterday. For Down One now, they're just trying to replicate what happened yesterday. Not quite finding the groove yet. Not quite yet. Let's go Alpha 7, let's go भाई. भाई तुम कई बार ऐसी बातें बोल देते हो ना जिसका मीनिंग ही नहीं बनता. 7 भाई क्या बात कर रहे हो यार. Even direct qualification in sometimes blank, but भाई then it just started to feel like it was slipping away, and they paled in comparison to the powerhouses that pursued them. And they were, in the end, taken out of those top 3 spots. Hopefully tough they win can in this hold match, on need here. to They're get looking finally. fairly set. If they can breach 100 today, it will be an excellent result for the Korean squad. That's exactly what they want. And Power? for a team that has क्या बोलते हो पावर made पे? leaps and bounds in terms क्या of बोलते हो performance, पावर पे? it's good to see, and this circle Yes, will power give पे. them at least a ये little जोन bit of बना था modicum of आपका, control मुझे over the याद next आ रहा circle, है, ये next बना है shifts. BMOC राउंड 4 HVP पे तो still शायद. हाँ hell bent on trying to take this compound away from I guess Beşiktaş for that next BMOC shift, राउंड though. It 4 might पे be an ये idea जोन to move बना down है. towards that south side. मैच नंबर Emulate बताऊं something they saw कि their याद आ buddies जाएगा. I guess pressing मैच over नंबर Mad 3 I Bulls guess मोस्टली मैच नंबर pick up, 3 मैच which नंबर was 4. one of those ditch spots over towards SGHJ where Power क्या was बात currently है, playing. यही पॉइंट की जरूरत Down थी. there. गेम लॉर्ड को Game वाइप करा lords एसजी वालों removed ने, बहुत by बढ़िया. 2 Starlight पॉइंट Gaming. निकाले, एक बंदा नॉक पड़ा है. मीन Starlight वाली Gaming यहाँ with पे 4 players टीम earlier on, जा and रही that's है गाइस. history with one HVVP knock देखते हैं through. रिजल्ट्स 2 क्या देखने को मिलते eliminations, हैं. यूटिलिटीज not का quite यूज होने enough वाला है yet. तगड़े वाला. स्मोक्स करे क्लोज इन करने के लिए. अब यहाँ पे Is a जाएंगे. crucial team as एक well. नेट पड़ा है, Only those यूज 3 होना games left to play. They need good results here. अच्छे से. Tower. ये ओपनली अपना स्मोक कर HVVP सके. rolling बढ़िया. up Oh to what a Beşiktaş nade. finally. Ooh, gonna have to take the fight. There's a Oh, big night nade from now. The Sun HP pressure around on from the back HVVP. lines, and पक्का in आगे comes the मूव इन push. किया Why जाएगा. not? उनको पता है 2 बंदे HVVP नॉक playing पड़े. 2-2 on the स्मोक हो split. रखा है. Kixi मिक्कू wants पाजी to move सबसे in पहले for a फिनिश होने retake. वाले. Meku's too close for comfort. मिक्कू पाजी Should be फिनिश हुए. spotted, taken out. सारा Flush प्रेशर Tixi टिक्सी gonna के try ऊपर. and hold टिक्स out इज द ओनली for मैन Max, but सर्वाइवल. backed off by the ओ nades, 2 taken बंदे very, very low 2 as बंदे. well. हील्स भी हीलिंग Flooding भी around नहीं है the बंदे edge. के पास. एचपी भी डाउन है. They're down to 2. टिक्सी That was a टिक्सी big टिक्सी. nade from Sun HP. That Disaster nade strikes from भाई. Skylights Gaming actually to try and take their turn at the batting post. Oh, HVVP eliminated with 2 points. Really And very the fast by breakthrough Beşiktaş. was that Good news nade for जिसने Vampire, 2 but they're बंदों picked को the वहां पे top. नेट से Yeah, पिंग legitimately किया. a disgusting send over from Sun HP with that nade over the top. I think there भाई was भाई भाई some भाई help भाई. from Zessi as well, where the initial grenade popped and then they timed it so well that it was just 2 nades. popped at the HVV is same time in a 90% very similar chances. area, in which case both players go down almost immediately. Very, very well done, very well set up, and it felt और like चिकन Beşiktaş जोन were था playing it BMOC में very ये वाला. slow, but just were waiting for HVP to get a little bit too close. And I think for HVP there were different options. They were talking about नाइस वन यार, नाइस वन यार बीजे के, बहुत बढ़िया. स्पेशली दैट नेट, उसने सारी काया पलट दी भाई. अगर वो नेट नहीं होता मे भी सिचुएशंस में डिफरेंट, बट यस दैट नेट वाज इनसेन. बट वो सीरियसली टू पॉइंट out the rest of the game as a 4-man squad. एंड ज्यादा
नेट से सारा काम खराब कर दिया। यस विशाल भाई, वो नेट यार, विशाल भाई वो नेट ना उसने बूम कर दिया, नहीं तो शायद कुछ और रिजल्ट होते, आगे देखते तो मजा आता, बट यस दैट नेज वाज इनसेन, आगे का देखने का मौका नहीं दिया, इतना प्यारा नेट कर दिया भाई ने। टीएम अगर तुमने ये फाइट हगा आज के दिन पे तो समझ लो यार क्या कर रहे हो यार, इतना प्यारा मोमेंटम था यार, आज इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, निकालो बे मॉरमैन, लेट्स गो भाई, यू आर द चैंपियंस, गैस लो, लेट्स गो बॉयज, टीएम निकालो। नॉइस मीनवाइल एज को नॉक दिया मिनी से, Mormon launching the nades into the back, not really finding too much, but slowing Beşiktaş down if nothing else. Shots from across the way. I think there might have been Peace coming on through, but there are south shots from Power who are looking to put in the performance as well today. One elimination so far, 2 players left on the game. ये जगह 6 में और टीएम ने थोड़ा सा मेरे को ना अचंभे में डाल दिया भाई। अचंभा भी वैसे ही है जैसे ग्रुप स्टेज में था कि मारेगी येलो में, मारा भी कब लास्ट में जाके, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती फिर टीएम निकलती है भाई, हम हैं यहाँ पे, हम यहीं पर है, हमको बुलाया था क्या, याद कर रहे थे क्या, ऐसे वाली बात आ जाती है, जब भूल जाते हैं तब टीएम कुछ करेगी। भाई क्या बात है, बीजी के 7 एलिमिनेशन है, बीजी के वो भाई इस मैच में बीजी के ने मार दिया वे, नॉइस ने भी निकाला, Spray over towards Skylight. Your boy down and will be out to Peace. Just looking to put up those points. Bacon time on the northern side. They've been holding. आज का 6th मैच आईएचसी चिकन होगा, देख लेना और याद रखना, ठीक है ठीक है, ये आपने बोला याद रखूंगा। टीएम ने मिला बीजी के नेडर को दिया नॉक, बट मुझे लग रहा है कि यार नहीं निकाल पाएगी टीएम, नहीं हो पाएगा टीम, पता नहीं, अगर निकाल दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट लेट्स सी। टीएम रिकॉर्ड तोड़ रही है हद, अरे भाई कालिलो आईएचसी गॉडलेस नॉक दिया, माफियोसो ने गॉडलेस को फिनिश मारा, चलो बढ़िया। आई गेस आईएचसी का एक ही लौंडा बचा है अगर मैं गलत नहीं हूँ, यस अजीज ने यहाँ पे नेड मारा है टीएम के लौंडे को। आई गेस टीम इज अ 2 मैन राइट नाउ एंड नॉट इन गुड सिचुएशन। बेकन मीनवाइल फिनिश उठाते हुए, कल एलजीडी वाला जो रोल है अभी बेकन फुल बूम बाम ट्राई कर रही है एक साइड से क्लियर करने का, बढ़िया। भाई हिमाचल में इलेक्शन कब से हो गए ब्रो? इलेक्शन तो हो गए, हमारे तो हो गए यहाँ पे, आई गेस 8 को रिजल्ट भी आ जाएगा। putting up some pretty decent साल numbers and playing with the best of them. They're 76 now. और मैं नॉक पड़ा है। A good game here would be pretty decent, and they are slap bang in the center. नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। टीएम वन सेकेंड वाली एलिमिनेशन, टीएम जो तुमने आज दिल तोड़ा है ना भाई, याद रखूंगा हमेशा। भाई सब्सक्राइब करो, कर दो यार, भूल जाता हूँ बोलना है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, भूल जाता हूँ मैं। एसजी राइट नाउ नॉट इन गुड सिचुएशन। लास्ट के 2 मैचेस में अंधा प्रेशर होगा एसजी पे पॉइंट लेने, अगर ये मैच अगर हो गया एलिमिनेट 10 पॉइंट 10 रैंक पे, मतलब 3 पॉइंट मिले होंगे उनको। 3 पॉइंट मतलब 53 पॉइंट, भाई गलत सीन है, एसजी को निकालने पड़ेंगे 2 पॉइंट। इनको चिकन इनकम देखते भाई, निकालना चाहिए इनको, कल इधर के जोन्स में अच्छा खेला है वो। अल्फा 7, अरे अल्फा 7 बात है भाई, रेवो माफियोसो फुल ट्रेनिंग मोड ऑन, ट्रेनिंग ग्राइंड वाला मोड ऑन भाई, ग्राइंड चला हुआ है भाई। बेकन 6 फिनिशेस निकाल चुकी है, आज की कैप्टन टीम थी हमारी ये। फैन क्लैश में आज हमने कैप्टन बनाया था इस टीम का, पर सारा बेड़ा किसने पलट दिया पता है? टीएम ने। टीएम खेल ही नहीं रही भाई। Engagement over on that northwest side. So many teams cuddled up. वो सिस्टम कब से लागू हो रहा है जब सिर्फ चिकन के 15 पॉइंट मिलेंगे, बाकियों को एक भी नहीं, सिर्फ फिनिश के मिलेंगे? पहले होने वाला था ना ऐसा कुछ कुछ भाई, ऐसा मैंने पता नहीं यार, जब से मैं हूँ मैंने तो सुना नहीं ऐसा। चिकन पे 10 पॉइंट का सुन देखा है ना, पता नहीं भैया आप क्या बोल रहे हो। प्लेसमेंट पॉइंट खत्म हो जाएंगे तो फिर मुद्दा ही क्या रहेगा ऊपर तक आने का, फिर सब किल के लिए नहीं खेलेंगे। इतने सारे पॉइंट्स कल ही निकालेगी, पर वो पता नहीं यार। Inco playing central, 7 eliminations for Alpha 7.
Been through the walls they have. On that south side, they'll make their stand on the hill. Zone 7, Bacon time, repositioning. A7, let's go boys, let's go. Cheers, cheers मेरे भाई, let's go. 6 eliminations निकाल चुकी टीम. क्या कहूँ अभी आगे है इनको. भाई इनको का यार पोजीशन, इनका आईजीएल पता करो बे, कौन है बे इनको का. गाइस किसी को पता है इनको का आईजीएल कौन है भाई? इंसेन भाई, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पोजीशन दिला रहा है टीम को. बहुत अच्छा पोजीशन. जितने भी मैचेस हुए, अगर आपने नोटिस करो, मैं आज छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा देख रहा हूँ. जोन्स काफी अच्छा दिला रहा है इनका आईजीएल. बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि जोन्स के अंदर अगर आप जाओगे तो पूरी की पूरी टीम है. कई बार ऐसा नहीं हो रहा, मैक्सिमम टाइम बंदे कम शम रहते हैं, बट यस जोन्स दिला रहा है आईजीएल. इनको कुछ ज्यादा बुरा मान गई भाई, ये तो रुक नहीं रही. नहीं भाई, इनको पोजीशन वाइज अच्छा सीन है पोजीशन वाइज. Probably looking at about 70 Alpha 7 versus इनको versus Bacon भाई 4v4 फाइट है भाई. चलो कटेगा जोन 8वां फिर 9वें में, तो पता ही है आपको जोन ऐसी क्लोज. Bacon लेट्स सी, स्मोक्स वगैरह कर रखे हैं, बग्गी पे आगे जा रहे हैं. चलो if not going to be competing with the top of the tables, they will be certainly looking to secure their place in that last chance stage. Knock. अच्छा नॉक. मिथिक भाई बहुत प्यारा. Alpha 7 playing damn good. Also doing some good work here, John. Like you said, a little bit far down the rankings. Yellow group play like open things up just a little bit. Inco, 3 eliminations for a little bit more. These guys just hold on. They wait it out. इसमें कौन सी टीम का पोजीशन क्वालीफाई करेगा? 16 मेरे भाई, टॉप 6. आने दो ओवरऑल रैंकिंग सबसे पहले यहीं देखने को मिलेगी, कहीं जाना मत. Really, we should put the Piggy logo over towards Inco Gaming because they do like to. And make sure to hit the like button and subscribe कर देना guys channel को. Well, still playing as 4 though. Squash gets back and gets healed. Looking fairly healthy. 3 eliminations right now for Inco. As I said, they've been fairly quiet today. ये वाले जोन में और चिकन आया था बीएमओसी में. तो ये बॉयज मैं बोला था ना, एक बीएमओसी का राउंड 4 का मैं बता रहा हूँ. डे राउंड 4 आई गेस 3 था वो. थोड़ी याददाश्त कमजोर है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहती है. Hopeful sign for things to come for them. Over the wall. And Alpha 7 look for the crash too. वो भाई दाद देनी पड़ेगी इस वे में. इन्होंने संभाल के रखा है सीन में. 4 nades still available to him. Meantime, Bacon time get towards warehouse just behind. He's in this moment. Whilst Inco are distracted to get into a better position. शॉटगन हमने इतना देखा नहीं यार, जितना अपन देख रहे थे ना. शॉटगन का इतना कुछ वाला क्लच सीनारियो हमने नोटिस नहीं करा गाइस, है ना. इनको सैंडविच हो सकता है. मैच नंबर 3 या 4 था मोस्टली. They do have to keep investing these smokes to make sure the sight lines भूल नहीं are सकता गाइस clear मैं वाला for मैच. Bacon and Inco. They're playing the waiting game. Eventually, this circle will pop off the fight between Bacon. रेवो से बच के गाइस, रेवो से एक बारी. बेकन वालों कल की तरह मत खा लेना फ्रीक की तरह रेवो से. खा लो भाई, खा लो तुम. हग लो भाई. क्या कर रहा है 1v2? चिकन बे, अल्फा 7 का चिकन. नाइस प्लेड यार अल्फा 7, बहुत अच्छा खेला यार स्टार्टिंग से एंड तक. बहुत 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 ज्यादा प्यारा. रेवो का ऑफ एंगल काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है. माफियोसो चलो भाई. Down the warehouse alleyway, but the nades can start to pour on. Nice one. Mythic challenges out Vitalia, wins it, and Alpha 7 once more have the lead. Difficult stuff here. 3 apiece. Rez came through in the meantime. Mafioso now moving up to flush and finish. Drops the deck. There's a guy in the back, but Rebo still going strong. This excellent off angle is paying dividends now, John. Pushing on down the hillside. 2 players from Inco to hold off against 3 active for Alpha 7 around the side. Nenebete falls first, and now there's only one more to deal with. It's Squash. Mythic moves in for the final blow, but he's on the finishes outside. निकाल रहा है इनको का बंदा. Will do now though. They lose. Alpha 7 chicken dinner. Nice one. Nice split वे. Nice split. Nice one. Nice one. Finally getting a big win. बहुत ज़्यादा प्यारा गाइस. बहुत ज़्यादा प्यारा. उत्सव गेमिंग आई एम बैक. हेलो हेलो मेरे भाई, कैसे हो? उत्सव गेमिंग भाई बहुत ज़्यादा प्यारा. I think that Inco was showing them up a little bit for their region, and finally they get themselves a good game on the board.
आज के दिन पे अगर आप ओवरऑल पॉइंट्स पे बात करते हो, अल्फा 7 अपनी बेस्ट निकली है, HVVP अपनी बेस्ट निकली है, अपनी कौन सी निकली और बेस्ट? light up as much as we saw him do there, and finally he gets that incredible spot which takes down the majority of the guys coming through from Bacon time. We got the overall ranking guys, we got the overall ranking. GG Alpha 7 कर दो यार, ओपी कर दो इनको, इनको के लिए भी ओपी कर दो यार, काफी ज्यादा अच्छा खेला इनको, काफी ज्यादा अच्छा. Bacon time went down was just because of the amount of bullets that they suffered from Revo on that off angle. And not only that, Alpha 7 capitalized perfectly on exactly that push. They slowed Bacon time down, forced Inco to deal with it on their own. A7 ओपी भाई बहुत तगड़ा, अल्फा 7 का तो जरा 2 मिनट, लेट्स गो. तो गाइस हियर वी गो द ओवरऑल स्टैंडिंग जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है. वेम्पायर स्पोर्ट्स नो डाउट इज इन टॉप नॉच फॉर्म. अभी तक हर एक मैच से पॉइंट लेके जाना अगर हम बात करते हैं, और वो लेके भी जा रही है. रुको, हमारे मैचेस कितने हुए? 10 11 12 यही है मैच. 10 मैच हो चुके हैं ना हमारे. हाँ 10, 2 मैचेस बचे हुए हमारे, मिरामार और रबका इरेंगल का. तो गाइस अल्फा 7 इज इन टॉप, नहीं आई है अभी भी, थोड़ा सा है अभी पॉइंट गैप है 20 प्लस पॉइंट का. मीनवाइल गाइस अगर आप नोटिस करते हो, वेम्पायर कंसिस्टेंट टीम 6 पॉइंट, HVVP इतना अच्छा मैच नहीं गया, वो स्पेशली दैट नेड विजय का एक नेट 2 को लेके गया प्रेशर टीम के ऊपर, वाइपुर टीम. तो एक गलती बूम बम हो सकता है. सो गाइस अल्फा 7 ई स्पोर्ट्स 27 पॉइंट के साथ, एंड बेकन गेमिंग 16 पॉइंट. एंड बेकन गेमिंग का आज के जिन पे नोटिस करना, कमबैक आया है कल के मुकाबले. अगर आप नोटिस करते हो हर एक मैच से 3 मैच में गिना के लेके चल सकता हूँ, आई गेस इन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ. 789 थैंक यू सो मच फॉर द मेंबरशिप मेरे भाई. आज के दिन हमारे बहुत सारे नए मेंबर्स जुड़े. तो एक बार मैं आपको बता दूं आज के दिन पे किस तरीके के पॉइंट्स लेके गई है बेकन ओवरऑल अगर हम बात करें. फर्स्ट मैच से बेकन लेके गई थी 1 पॉइंट. सेकेंड मैच में बेकन लेके गई है आपका बेकन लेके गई है सेकेंड मैच पे आपका 17 पॉइंट. थर्ड मैच में बेकन लेके गई है 16 पॉइंट. ठीक है, वेलकम टू द योगी फैमिली. यो ब्रो, यस मेरे भाई. ब्रा वर्सेस ब्रा, आई मीन ब्राजील वर्सेस ब्राजील. मेरे को वेलकम करो, 150 रुपए दूंगा. अरे भाई हर्षित शर्मा भाई, वेलकम वेलकम भाई, वेलकम 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 टू द स्ट्रीम मेरे भाई. एंजॉय सब्सक्रिप्शन इमोजीज. यस मेरे भाई. अगर मैं देखूं वेकन का आज के दिन पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस, देन इनको गेमिंग दिखने वाली है. दामन गेमिंग 7 पॉइंट काफी अच्छा है. पावर 4 पॉइंट लेके गई है, नॉट सफिशिएंट 1, क्योंकि आपको पता है क्वालिफिकेशन राउट के लिए आप जितने ज्यादा पॉइंट ले सको उतना ज्यादा अच्छा है. अभी 2 मैचेस बचे हैं. पावर फिर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है कल के मुकाबले. #16 to #7 का जर्नी. बट आप सभी को पता है अभी रेड टीम नहीं खेल रही, उनके पॉइंट्स काउंट नहीं होने वाले. एंड आपको ये भी पता है जो येलो टीम है उन्होंने अभी तक आपके सिर्फ कुछ मैचेस खेले, जो 4 मैचेस 2 मैचेस बचते हैं. तो कल के दिन पे रेड एंड येलो को एक एडवांटेज रहेगा. बाकी लेट्स सी. एलजीडी गेमिंग नहीं खेल रही है. स्काईलेस गेमिंग गाइस अभी काफी इंपॉर्टेंट है स्काईलेस गेमिंग के लिए भी. स्काईलेस गेमिंग को गाइस कुछ करना पड़ेगा स्काईलेस गेमिंग को. अगर आप नोटिस करते हो स्काईलेस गेमिंग के 53 पॉइंट है. सेफर हैंड आने के लिए आपको 70 to 75 या 80 पॉइंट तो निकालने हैं. मतलब 20 प्लस पॉइंट्स अभी स्काईलेस गेमिंग को निकालने पड़ेंगे सेफर हैंड आने के लिए, क्योंकि कल ग्रीन ग्रुप के पास मैचेस नहीं है. आई रिपीट, कल ग्रीन ग्रुप के पास मैचेस नहीं है. रेड एंड येलो खेलेगा. टाइटन गेमिंग, निग्मा, बेगेट्रॉन, DRS, बॉक्स, 4 राइवल्स, रिजेक्ट, देन फेज, गेम लॉर्ड, BGK, IHC, AGOIN एंड I8, Vivo Kit एंड GK स्पोर्ट्स. गाइस ये टीम आपको यहाँ पे दिखने वाली है. आयला दो विशाल मतलब. एंड गाइस जितने भी लौंडे आए हो नए स्ट्रीम के अंदर, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को, जल्दी से लाइक कर दो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड गाइस मेरा आप सभी लोगों के लिए एक गलती से दब गया गाइस, गलती से दब गया, सॉरी गलती से दब गया था. 2 मिनट रुको, वेयर इज वो. ठीक, चलो भाई मैच करते हैं स्टार्ट. चलो लास्ट चांस में टॉप 16. अभी गाइस मैच होने को 5 मिनट आपके बचे हुए. लेट्स गो बॉयज, 5 मिनट अभी हमारे बचे. गाइस मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, कई डिवाइसेस में ना हमारे
चैट से वो काफी ज्यादा लेट जाते हैं, ऐसा क्यों है वे? ये नई गन कौन सी? 70-80 कट ऑफ गाइस, इतना तो पता नहीं यार, इतना मैंने देखा नहीं, बाकी लेट्स सी भाई, देखते हैं जो भी सीन होगा। मैन ही है टॉप 16 में बने रहो। ओके ओके भाई, लास्ट चांस में जो टॉप 16 होगी उनके पॉइंट रहेंगे या न्यू पॉइंट्स होंगे? ब्रो न्यू पॉइंट 0 से स्टार्ट होगा। एनालिस्ट पैनल गाइस आपके स्क्रीन के सामने, मैक्समैन, कैसन एंड सैंडस्टॉर्म ऑन योर स्क्रीन मेरे भाई। तो गाइस 2 मिनट, गाइस आपको एक चीज बतानी थी, जो भी लोग नए आए हैं। सो गाइस अभी ना फैन क्लैश में खुल चुका है स्पेशल आप लोगों के लिए, मेरे को जस्ट गॉट द मैसेज, आप लोगों के लिए फैन क्लैश में हाँ जी गाइस, हेलो हेलो हेलो, लगता है कि हमारे भाई स्पेक्टेटर मोड मिल गया। नहीं स्पेक्टेटर मोड गाइस, स्पेक्टेटर मोड तो है बट द सिनारियो इज, एक मिनट रुको, आई गॉट द मीडिया सूच। वीडियो स्पेक्टर सोर्स का कोई दिक्कत ही नहीं भाई, वो दिक्कत ही नहीं है, बट गाइस लेट मी, गाइस मेरे को ना ये फिक्स करने दो। तो गाइज यस, आप लोगों को मैंने बताना था, अभी हमारा गाइज मीडिया सोर्स अगर आप जाते हो तो हमारा फैन क्लैश के अंदर गाइज टूर्नामेंट खुल चुका है, स्पेशली आप लोगों के लिए खुलवाया है आपका 6th मैच के लिए। तो जाना गाइज, जल्दी से जाओ एंड अपनी टीम पिक कर लो, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, आपकी स्क्रीन के सामने आ भी रहा होगा, तो अगर आप देख रहे होंगे। अपनी स्क्रीन के सामने गाइस आपको देखने को मिल रहा होगा गाइस, यहाँ पे अभी जाना, ये जस्ट लाइक सीन का था लाइव जो है आपका, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही करा है, अगर आप टाइम भी देख रहे होंगे थोड़ी देर पहले। तो जाओ जल्दी से फैन क्लैश के अंदर, आपके अंदर आ रही होगी सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको डाउनलोड कर लेना। एंड फैन क्लैश में गाइस जाने के बाद, डाउनलोड करोगे जैसे ही आपका सेक्शन आएगा पबजी मोबाइल का, पबजी मोबाइल के सेक्शन के जाने के बाद जस्ट जस्ट क्लिक द पीएमजीसी सेक्शन, वहाँ पे आपके टूर्नामेंट होंगे गाइस। तो आप टूर्नामेंट चूज कर सकते हो, रैंडम टूर्नामेंट चूज कर लो। उसके बाद गाइस टीम चूज कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे टीम्स रैंडम 6th मैच के लिए चूज कर लिया। लाइक अल्फा 7 अभी फॉर्म पे चल रही है, वेम्पायर अभी है, HVVP अभी है, जिस तरीके से कंसिस्टेंट खेल रही है। एंड DWG मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट मैच तक शायद हो सकता है DWG का कमबैक आपको देखने को मिल सके, दैट्स व्हाई आई चूज DWG। एंड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आपको पता है वेम्पायर एंड HVVP फॉर श्योर, क्योंकि इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी चल रही है। जाके गाइस आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, जाके जल्दी से जाओ डाउनलोड करो एंड जा से प्रिडिक्शन लगाओ ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। काफी सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो काफी ज्यादा अर्न भी करने हैं, तो जल्दी से जाओ प्रिडिक्शंस लगाओ। Very, very close to each other, so I want to see if there's going to be a change in that. And because we're getting towards the last 2 games of the day, we need to see a massive performance from both of them if they want to give themselves the best shot going into tomorrow. हेलो हेलो, Of आवाज course, नहीं आ the रही क्या? last हेलो day, हेलो the हेलो, last chances that they're going to have to आवाज fight तो for आनी a चाहिए spot in मेरे the हिसाब से। PMGC Grand Finals.
Okay, well, let's keep an eye out on those teams because I know I will be, so I can rip on you guys if they do horribly in this next match. But luckily for us, we have John Allen and Blink to make the action even more fast-paced and awesome as we're going to head over to them here for match number 5. Hello, hello. That's right, I'm fast-paced, he's awesome. We're going to be getting Hello, on hello, in hello, to hello. the आवाज आ next रही है game. मेरी? हेलो, यस कर देना. आवाज आ रही है मेरी? That's quite good. I feel like we'll take हेलो, those हेलो, मेरी titles, आवाज आ you रही know. है? Yeah, But I'll take it. we're getting into the next game of Miramar. Hello, hello, We hello. are indeed getting there very, very soon. And Hello. Sanson brings up interesting points in terms of like there is some teams now that really do need to get a move on, get going right now because some of these teams haven't really. आवाज put तो up आ a रही है good यार. performance at क्यों all. कंफ्यूज कर रहे हो? Now, Ayogi IA, चलो obviously, भाई. this team over in red, 17 points down towards 21st spot, but are players that haven't आईडी completed पास डाल रहे हैं. their अरे अरे भाई. 6 games as of yet. Vivo, Keyed, Geekay, Tem Entertainment. Really not the most amazing of numbers so far with 12, 11, and 8. Hoping to bump up those numbers just a little bit. We're also keeping an eye on some of our teams who will be concluding their survival stage very, very shortly up towards the top of the tables. That's Skylights and Power. Let's go guys. मिरामाज आपका 5th मैच हो चुका स्टार्ट आपकी स्क्रीन के सामने. But when you look at in the case of LGD has 6 games played, 57 tied with Power Esports, and then also Power Esports being group green with 7th place, 57. God game match football main M10. Okay भाई, okay. 81 points. There's a really big jump up there that needs to be fulfilled at some point. Absolutely. चलो guys, अब करते हैं स्टार्ट करते हैं. आ जाओ सारे लौंडे आ जाओ. Fast. Of the bottom third. चलो भाई. Right, we're cutting 8 फ्लाइट पाथ teams बीजीके के out of the लौंडे 724. कहाँ कूद रहे? And so if ओके, you look at बीजीके के just लौंडे in each कूदेंगे. group, that means at लॉस the ईगल्स की bottom तरफ two, दिख रहा है मेरे को. teams एक go. एन So if जा you're रहे in हैं the वहाँ bottom पे. two of ऐसी that जाएगी group, प्योर्तो की assuming तरफ. that each of the आरसी groups is जाएगी big लॉस and लियोनिस. powerful, दिक्कत you नहीं are है. really जीके very much at वहाँ से risk. उतरेगी. And in that elimination मॉन्टे पे zone, which is आईएचसी ही exactly जाने as you वाली है said, क्योंकि with एसडी ने Skylights ड्रॉप and चेंज कर Power, लिया है. the पावर ग्रिड position they वीवो find जाएगी. themselves in. The question for उसके me बाद though गेम लॉर्ड is, उतरेगी are अपनी those सैन groups मार्टिन की तरफ. similarly ऊपर से powerful? जाएगी Because I अपने feel like हासिंदा as we डेल talked पेट्रोन about की quite a तरफ lot, इनको. Group चलो Green भाई, was the एचवीपी group लाख that कॉबरे एरिया. It was exactly. And बढ़िया. I think that's what makes लेट्स it सी अब even गाइस more देखते हैं क्या सीन terrifying होता है. when you are in the bottom two of Group Green. Just purely with the way also VPE and HVP have been playing with that point sponge at the top of the table. भाई पेमेंट ये you are आईएनआर getting में ले less रहा. points वीपीएन यूज overall than करके maybe भी some of these ऐप other यूज नहीं groups कर will get सकता. as they are more evenly balanced. I think that's the major worry you ये have to आईएनआर find में ले yourself in. रहा है. And if I'm Power and I'm Skylight अरे Gaming, भाई, I'm looking ऐसा at these सीन है 2 क्या? last games as अपना घर वालों को basically बोल देना ऋषभ their का own लेंगे, वहां से हो personal जाएगा. max ऋषभ chance at भाई this point in बेकन time जीतेगी because लास्ट मैच. I देखते think मेरे if भाई क्या they सीन don't होता get है. any huge games here, And make sure to probably download 20 the to like 30 fan clash app points guys. total Link in over the the next 2 description. जाओ matches. अपनी टॉप It 4 is टीम पिक looking करो. हम real आ चुके हैं. terrifying going वेम्पायर into tomorrow and just HVP watching yourselves इंट्रोडक्शन as की you जरूरत start नहीं है. to The slip consistent down performance they those are showing. tables. So And 7th after place that and guys, 9th place fourth respectively, 57 and 53. There अल्फा 7 has का to be a कमबैक आपने change there देखा है. for both these So that's why teams. we choose Gamwon would Alpha also 7. like to So get a जाओ little bit more प्रेडिक्ट points on करो. board to see themselves a bit safer. I think most Find teams your from love. Group ऐसे Green करने have वाले performed स्पैमर्स fairly नहीं well आते आपके during this चैनल पर. tournament, अरे भाई आते including हैं, सारे हाइड A7, कर who रखे हैं. actually jumped मैक्सिमम up मैं तो into रोज ही 3rd हाइड place करता now था. with अभी 103 इतने points. ज्यादा It's a हाइड कर दिया ना वो really, चैनल, really शायद nice वो change of बंद ही pace हो for गया. them. मैक्सिमम चैनल्स Considering तो we हाइड ही haven't been उनके. able to talk about them too much throughout the days, and more focusing on Inco, the other Brazilian team towards the top of the standings, I think A7's done a great job to bounce back. Absolutely, yeah. And as I said last game, we're expecting that bubble to be in the 70s somewhere, a little bit malleable and volatile given the देखिए भाई short 69 सुपर चैट करूंगा. sprint नेक्स्ट nature of मैच this का tournament. आईडीपी लीक But करा दो they've एक बार managed to स्क्रीन put पर. themselves अरे up भाई and over into those 80s and above, which इनको is भाई first down to चलो 6th भाई. right और now. कुछ So it's और likely that कुछ we're going to चाहिए see all आपको तो 6 बता of दो. those teams making और it कुछ through, which is pretty solid, really, coming through आईडीपी from कहाँ से each of करवा दे these लीक teams. यार. हम Even if नूब Darwin बंदे, from हमें this कौन point जानता है. onwards बताओ don't कौन देगा really आईडीपी have the अपने को. best of times in the remaining games that they've got to play, the last 2, they can still be fairly confident that if they put up even 4 points a game, they should be really, really safe and secure into those last A7 chance gold stages. injurious But bro. you don't just Where want to is let that go. BTR? You want to be jumping up those कहाँ है? tables as well for the little bit of prize pool bump that you can receive for that. BTR I guys think कल that खेलेगी. the prize BTR, pool is LGD, no DRS longer a ये सारी massive टीम्स है ना, ये concern कल for a खेलने lot of वाली है. these teams, unless you're at the top side with HVP and VP, you are currently still trying to set the benchmark of the biggest game of the tournament so far. I think that's when you're looking to really
get towards the तो top of the क्या table. हाल होंगे? HVP currently 4 points behind VPE. Love? It is a real battle at the top here between both these teams to try and get as many points as possible on board. एज मिस्टर बोरो Been a काफी real इंपॉर्टेंट है slugfest यार, between the एसजी two, के लिए but बहुत they haven't इंपॉर्टेंट moved है मैच, super बहुत far in the ज्यादा last couple इंपॉर्टेंट of है games, to be fair. क्योंकि And it has been the time of other अगर teams to आपको try पता and होगा put इस a dent एसजी in के it. बारे We were में, talking about there was a तो 40-point buffer, right, एसजी during the को last game. पॉइंट चाहिए This एक time सेफर around, हैंड they're होने only के लिए, अभी playing भी with ऑलमोस्ट around a अच्छे पॉइंट होंगे, 25-point बट फिर buffer, भी 20 a की little पॉइंट bit आ less जाते than तो that, in एक fact, about a 21 कॉन्फिडेंस रहता, कल के between दिन Alpha पे 7 ये and 30 HVVP. महीने देखने पड़ते थोड़ा सा, होता है ना So भाई it is कि still being क्या eaten वैसा into. खेल ले, वो वैसा However, खेल it ले is तो still वैसा हो this जाएगा, वैसा सीन ना होना पड़े, at the क्योंकि top. कल Let's ग्रीन hop ग्रुप नहीं in खेलने with वाला। Inco, तो एक who सेफर had हैंड होगा तो अपने really माइंड फ्री solid देख result सकते हैं मैचेस भी कल मजे in से। that previous ये तो game, एक staying अंदर डर तो alive. रहता ही है भाई, क्या सीन One होगा क्या of the नहीं होगा best वाला सीन है। होप सो, ways to बस keep वो it दो on मैचेस बचे, in दो as मैचेस well में in the चाहिए वो running. पॉइंट और वो 94, they निकालने put पड़ेंगे। themselves over that लेट्स सी and गाइस क्या into होता है। those above 80 point scoring positions, looking pretty solid as well to qualify. Absolutely, John. I think that you're looking at Inco. They've done a great job so far from their 11th place position. Inco rolling through and trying to keep this one going against Power, who were, to be fair, a major arbiter in those final circles of the last game, but a roll-up actually coming on through towards the Power duo position from Squash, peeking over that headland, peeking over to look for the spray down. They do have an off angle in Enebete as well, but in comes backup from Vitali. They are Great speech equal circling, to they're timeout. swarming, and Power Please laid have a bare good on the level gun hillside, power. taken down 1 and 2. A punch moves on in and will be able to beat it out. गन पावर तो on यार Slugfest. मैक्सिमम Power टीम्स के falls पास भी है यार, to फिर भी वो स्ट्रगल कर रही है। have to टीम के play पास for भी गन water पावर है, treatment, playing दे on आर that नॉट, north ऐसा side of नहीं है this कि उनका engagement. बहुत ही Inco move लोएस्ट away है, with 2 मतलब elimination डोमिनेशन points भी उन्होंने nicely दिखाया हुआ है। found. अगर आपने येलो ग्रुप में Circle लास्ट में भी देखा हो या really अपने रीजन्स में heavily भी देखा up हो and यार, to the गन पावर north. वाइज तो HVVP रहता ही है playing भाई सीन, in बट La Correria, leaving Pixie down एग्जीक्यूशन south of the outpost एग्जीक्यूशन again एग्जीक्यूशन, in a really solid अब position ये चीजें आप to कभी नहीं do बता well सकते कि टीम on this क्या इशू है, Miramar. वो इंटरनल चीजें होती है Absolutely, भाई। John. I think बाहर that का पीओवी एक this डिफरेंट is रहता है और again a इंटरनल position पीओवी where एक they played डिफरेंट रहता है। extremely well from बाहर का before. पीओवी देख के I आप think they किसी have a का great opportunity now to actually do the डाउनफॉल exact का same thing. Fortunately for them, रीजन though, कोई with एग्जैक्ट नहीं Game Lord बता coming सकते up जब तक towards that आपको ridge side, इंटरनल looking चीजें नहीं to पता, आपने try इंटरनल and पीओवी steal away देखा। that ये मेरा spawn with पॉइंट ऑफ Tixi थॉट है heading जो मैं there हमेशा nice and देखता हूँ। early on his lonesome. हो गया भाई, Does कुछ tend to be रीजन quite की an वो जो easy चोक target, कर so रहे हैं, good thing for him कुछ that भी he हो सकता spots है that, यार, क्या पता क्या immediately रीजन moves हो, out towards that क्या western पता side आइजल की towards कुछ कॉल आ VVP रही to हो, दूसरा regroup the प्लेयर ने rest of कुछ his और team, कर दिया as हो उस opposed टाइम to के अंदर, trying to hold on to that और as a वो जो solo and wait for the दूसरे rest of बंदे the ने team कुछ to और arrive. करा Much होगा, better to उससे stay as a पूरे मैच 4 को on this north कॉस्ट edge पे करना पड़ा and होगा। fight out तो for this कुछ भी हो position सकता है, वो later on हमको where नहीं it पता becomes ना more of बाहर a से कि वो priority ऐसा सीन position. हुआ कि वैसा We सीन had हुआ, a और हमको really कम्प्लीटली far पीओवी northern तो दिखाया circle नहीं जाता किसी टीम in का, the कि फेज group का हमको green कंप्लीट पीओवी दिखाया जा रहा है हर एक group बंदे का, stage, प्लस which कि played all the way up इंटरनल to the कॉल्स हमने north सुनी side हो, of La तो Correria, in ऐसे which बता नहीं सकते HVVP यार, did बाहर से देख really के very well to control a lot of the ground स्टैट बेस पे around बात some कर of the सकते हैं कि mountainous हाँ इसने regions ऐसा up खेला there. वैसा खेला, बट So they'll be hoping for a repeat of that, I'm sure. बता पाना If Tixi ये can get चीजें out of मुश्किल dodge, because रहती at है the भाई। moment he is starting to be circled now, blank by Bacon Time, Vivo keyed as well. समझ रहे हो, Faze अब कोई बंदा बोलेगा moving up. कि डाउन फोर्स है तो क्या है So कि top स्प्लिट side, रोटेशन में 29 पकड़े जा रहे points, हैं, है really ना, haven't कोई ये moved too बोलेगा much from their position so far. रोटेशंस में पकड़े जा रहे हैं, Reject ऑफ गार्ड similarly पकड़ा जा riding रहा on है, the फाइट नहीं निकल पा coattails रही of है, their तो first फाइट नहीं game. निकल पा रही है तो रीजन ढूंढना पड़ेगा ना पहले Inco अपने अंदर, looking for another central spot तो within the अपने उनकी circle. टीम I'd be को curious होगा to see if पता this से one heads लाइक over फाइट towards क्यों the नहीं निकल eastern पा रही, side. पीओवी They can देखेंगे pick up 10 a few बार more points. बार 94 देखेंगे points, कि so very फाइट क्यों नहीं निकल respectable पा so रही है। एक्स far यार कोई भी टीम हो, throughout this टीम entire की फाइट क्यों tournament. नहीं निकल पा रही, तो Again, कोच you were होगा, saying earlier एनालिस्ट you'd होगा, like to see Dan1 just स्टडी get a करेंगे few more चीजों को points लेके, from this game. I बैठेंगे think that प्लेयर के साथ, I'm in the same पीओवी boat here. देखेंगे, Getting a few more अच्छा points भाई to तू ये Dan1 गलत कर would रहा है, see क्या them पता कोई in a बंदा good position. घबरा I रहा हो, think प्रेशर ले it's रहा a हो, little bit उसमें गलती हो unfortunate हो that सकता है यार। yesterday they were हमको यहाँ not से थोड़ा able देख to के पता लग रहा है retain कौन that सा kind प्लेयर of प्रेशर pace
लेके खेल रहा हो, क्या पता कोई खेल रहा हो, but you have that one वो good बूस्ट day, करेंगे, that's उसको मोटिवेट fine. That's करेंगे what वहाँ you पे, need to see ऐसे yourself चलती है गेम in में. a better position. And I personally एग्जैक्टली अगर मैं would बात much करूँ, rather have my good day on day बाहर 1 से देख as के opposed बताना to तो day भाई 2. बहुत मुश्किल है यार. That is just giving you a much more easy हाँ, अगर buffer मैं to play around with. टीम में Makes you feel होता, safer, takes a lot of लाइक the pressure कोच off होता या coming into the next एनालिस्ट day. होता, And even if you make a few ऐसे mistakes, नूब हूँ they're मैं, मेरे को ज़्यादा easily नहीं पता, बट fixed. फिर भी ऐसे बता रहा हूँ कि मैं पीओवी देखता, मैं देखता, Beşiktaş फिर पता moving in लगता, on the अच्छा भाई western ये side. They're playing late तब हो and रहा है, तब slow मैं up the कमेंट western करता तो road. अच्छा भी लगता, बट Going to be ticking away and क्या trying to कमेंट करे भाई, backfill. फेज दे आर बेस्ट, Probably looking to swing up बेस्ट past टीम है, खेल Ruins रही है तभी लॉबी. to that road on the एसएमजी north मैचेस side on the देखो, Mongolia. बोल Currently, रही that होगी position is मुझे घर occupied जाना by है, नहीं नहीं भाई IHC ऐसा कुछ नहीं है, on the western एक्साइटमेंट रहती edge है with पीएमजीसी की Uzbekistan हर a एक little टीम bit को, further चाहे वो south. And of लास्ट पे course, भी आए, चाहे वो फर्स्ट पे 8VP आए, चाहे वो with मिड that टेबल पे, outpost to the north पीएमजीसी पे side of क्वालिफाई the होना एक बहुत Mongolia. बड़ी बात है The भाई. next circle just about to come through. एस It's जी really going to आउट dictate a फॉर lot of पीएमजीसी this नहीं next मेरे set. भाई, पारस Goodness भाई me, ऐसा that क्यों is हो? right onto the Crater Fields blank. रुको जरा सबर करो, This is एसजी going to कहाँ be है, difficult for these teams to
actually figure out where to play. There's a few compounds down here that you can head over towards, but nothing too concrete, honestly. You can try and head early towards the center here, kind of play for the late game where Vivo Keed is currently sat inside the fields themselves. There's a compound towards that south side too, which has overlook over towards a lot of that open ground. It is made even more tough by the amount of के लिए high काफी ground that important मैच एंड काफी surrounds ज्यादा creative लेट fields. 'Cause a lot of teams would rather hold on that high ground nice and early as opposed to head into creative fields and try and SMG pick up PL that चैंपियन है compound भाई and hope यस मेरे that भाई it would actually go center for you. कंपटीशन भी VBE देखो ना taking सब shots चैंपियन है from यहाँ Alpha पे 7. मेरे को एक Stone टीम gets a बताओ जो good spot चैंपियन नहीं है यहाँ behind, but पे there's an instant refrag, and look सब at this guy, चैंपियन है he's भाई all over the दे place. ऑल आर चैंपियन भाई Doesn't कोई भी ले quite जा get the सकता है नहीं run बोल रहा down SMG onto नहीं जा Carrillo, सकता but ले जा does सकता है manage बट to सब pick out his चैंपियन है भाई teammate यहाँ Schwepp, पे trying to get around the headline. Carrillo on the chase. In comes Stops, and it's two players over the निकाल top. लेगा Carrillo निकाल up to निकाल लेगा go निकाल yet again, gets a lot of damage, doesn't go down, takes a lot. आगे जी Revo कवर now 1 पॉइंट rolls on बहुत in for the बढ़िया backup. There's an off angle from Alpha 7, suppressing this line, and Carrillo's still alive. Up over the top, Revo takes over the mantle, gets the spray down towards two of the players from Vampire, and they have to scurry. Playing मेरे को एक back and बंदे का डर around, लग रहा है playing बस under the purview of Mafioso on the back lines. Revo continues to fire forwards, and Carrillo's there for the अल्फा backup 7 after नाइस वन getting नाइस the वन heal अल्फा on 7 off. बहुत बढ़िया Alpha 7 win the fight against जी अल्फा Vampire, 7 and बहुत the बढ़िया top भाई अल्फा team 7 yet का again 1v1 gonna go मतलब down. 6 क्लोज points रेंज जो on भी है elimination. पे जो It भी is really प्रॉपर getting a फाइट bit हो out रहा of है hand हर here एक for बंदा निकालने VBE की towards the end कैपेबिलिटी of the रखता day. है Alpha फॉर 7 एग्जांपल really stepping up in a big way too. बट इफ नोवा Down one, बाय टीटी taking down a lot of the members इट्स from Vivo बेनिफिशियल फॉर Keed here. उनके पास है ना It looked फ्रोजन good इज for गुड VBE. It looked यार like they could have फ्रोजन come भी अच्छा back from मारता that है one. बे Unfortunately, अजय you इज अ know, गुड बट it was फ्रोजन इज just a आल्सो case गुड of गाय ब्रो Carrillo suddenly turning उनके on पास the kill बंदे इतने switch हो जाएंगे there. फिर वो क्या किसको ही खिलाएंगे भाई Looked very, very good in the moment. Instant flicks, instant गेम लॉर्ड turns. नाइस वन I think I've seen अर्ली something स्टेज like that पे coming out from a player from a long, long while. Now, even so, Alpha 7's still going. Taking shots over towards Nima on Skylights Gaming. High ground being PWG established now. बहुत ज्यादा बढ़िया Vivo keep clambering on up as well. गाइस अगर आपको Broadside, याद but हो they इससे have got the पहले वाला cover to मिराम do आरपी जो सेम काइंड ऑफ जोन बना Nice था to वीके find की टीम Game जो थी Lord. वीवो की टीम Take up a high ground position as well as HVVP, all on हैं this eastern side. क्यों The crater fields will be hard समझ नहीं fought आया over. Beşiktaş did leave the blue zone on that western edge. Alpha 7 pick up another elimination over onto Nima on that eastern edge. इसी Of चीज the की not गाइस they got. बातचीत हो रही If थी you यार lose a जहां से player, रोटेशन 5 मारी ना एसजी eliminations. Looking to charge up क्लस्टर and continue to put टीम्स की dents रोटेशंस in वहां से that बहुत है gap. इनको जा रही है वेम्पायर है अल्फा 7 वहां से आती है Vampire पावर Esports as आती है well going ठीक है down कहां in the उतरी है मैंने position ध्यान that नहीं they दिया did. स्टार्टिंग में की रोटेशन It's likely एचवीवी that भी they एज can पे बैठी है close अपनी it क्या जी in भाई these final निकाल के 2 जाएगी यहाँ games, से but बॉट now is their पीछे एज biggest जब तक नहीं opportunity छोड़ने to वाली do जब so. तक पीछे की टीम के किल्स वगैरह ना उठा ले हो Difficult spot on the map to play, though. For a lot of these teams, there's a huge amount of uncertainty involved. That position towards where Game Lord भाई एलजीडी में took सुख up आ जाए तो वो mantle away from Tixi earlier on डबल दैट has आल्सो been गुड ब्रो filled. वाई डबल दैट अच्छा बंदा है भाई उस हल्के में ले रहे हो क्या वाई डबल HVP दैट looking to perhaps try and reclaim that position. In the meantime, though, they do still have हर this एक बेस्ट 2-2 बंदे के लिए going ना on. हर एक बेस्ट 2 टीम नहीं inside the होती blue, ब्रो 2 outside. Meku as ट्रुथ well है as ये रियलिटी Kitsune है watching out for Alpha 7 अगर as they सुख बेस्ट rotate आईजे up लेना towards the top तो side of the जरूरी company नहीं है here कि जो over the वर्ल्ड road. की कोई बेस्ट टीम होगी उसके लिए बेस्ट होगी क्योंकि Position हर that एक they बंदे का might खेलने want का to take तरीका होता है shots एक down कंफर्ट towards, considering Alpha जोन 7 होता है should be अब taking सुख की quite a आई bit of लिंक क्या पता heavy कैसी हो damage from this blue at the moment. Might be का easy कोई to pick up a couple या of वो eliminations on that side and कर रहा है cut off the team that रीजंस might हो be सकते हैं backstabbing जो टीसी के Alpha बंदों ने 7 बोला दे आर later. नॉट कंफर्टेबल विद टीसी सुख Definitely necessary चलो to भाई back clear there. another IHC fight taking on Inco on the center. It's actually IHC to lose the first. Alex knocked flushed. 2 players playing now forwards for them. Inco, 4 players alive yet जैसे again. सुख की 4 बात कर रहे हो तो सुख eliminations. के बंदों ने Nice मना and कर दिया खेलने के लिए sequestered जो in their उसके साथ थे position. कि हम नहीं Difficulty will come खेलेंगे if the कि या circle भाई shifts away यही from चीज them as बात हो 15 रही teams still भाई remain. साहब Still a long way to trek, but getting those PLD points on गेम board, लॉर्ड putting बहुत 4 up बढ़िया is good. विको ने भी स्टार्टिंग भाई You're putting वीके points के up बंदे भी down one हिल already पकड़ in the लेते हैं third. गेम लॉर्ड Managed के to बंदे भी grab हमने away लास्ट मैच में भी देखा था 2 जो कि काफी points. ज्यादा Now playing in a यूजफुल compound on होते the हैं जब south आप इन side. हिल्स के ऊपर Should भाई be एमओ fairly रखो safe पूरी to भर get के a अपने couple more. पास थीमेटिक भी दिखी मुझे पीछे बहुत बढ़िया Quite तो hard बहुत to get स्ट्रिक Game है Lord off this top side. Skylights Gaming आई have डोंट नो got बहुत 2 सुख स्ट्रिक्ट है कि players नहीं
है, बट मैं एक चीज बता रहा हूँ ना कि कोई सीन है This कि is not looking नहीं good for कर them. पाते यार I प्लेयर think कई at बार this point in चीजें। time, Skylight's Gaming is अगर in तुम चलो सुख real की बात कर रहे हो, कुछ danger हो of असुख का being रीजन dropped हो, out अगर मैं सुख की बात of कर रहा हूँ, last chance. जो मैंने They're एग्जांपल भी दिया था, कई depending प्लेयर on other कंफर्टेबल teams नहीं हो doing पाते, वो worse सुख का than ही them, एग्जांपल which था बाय is द वे कि फिर टीसी में quite प्लेयर्स ने unlikely to मना कर happen, दिया especially खेलने when के you लिए, have. I think फिर this एक is the नया biggest एक issue as लाइनअप well, उसके Jonathan, लिए because बनाना when you पड़ा, have प्लेयर that ढूंढना पड़ा, तो goalpost to उसमें टाइम hit, लगा, उसका भी टाइम you're वेस्ट like, हुआ right, सुख we have to just एंड get more than टीसी का खुद 53. हुआ।
that makes your life so much easier. Because if it just comes to a case of like, right, we just need to मतलब survive ऐसा till सीन नहीं, 5th मतलब अगर आप place every 4 game, बेस्ट प्लेयर that's भी easy. We वर्ल्ड know के if we don't have to असॉल्टर्स absolutely खड़े fight, कर दोगे ना let's एक just टीम play के it अंदर, safe. जरूरी नहीं We वो don't टीम have to अच्छा go for high परफॉर्म कर जाए। elimination games. This is what all the guys in Group Green are समझ रहे हो thinking about बात? right now, which is to push for these high टीम में सब elimination कुछ ही है games बे, to set the benchmark as high एनर्जी, as possible. कम्युनिकेशन, वो चीजें मैटर करती है। अब Try and get कितना out of that कम्युनिकेशन हो danger रहा है, ऐसा zone, but एनर्जी हो Power रहा gonna है, struggle on this फिर game. वो चीजें One भी player, मैटर करती है भाई। चीजें Skylights as well, only on 2. कौन कितना समझता है एक दूसरे को, Both चीज going to be बहुत सारी scrambling चीजें। for it. Tem Entertainment move in on the south side. This is right on the अब northeast edge 4 of the असॉल्टर console. आ रहे हैं, But तुमने it's ऐसे रख just लिए about 4 still असॉल्टर in the वर्ल्ड के circle. बेस्ट, जो कि भाई फ्री मैन की Faze तरह खेलते हैं, हर जगह spotted, मार के अंधा। similarly चारों positioned वही अलग actually अलग right स्प्लिट में next चले door गए, चारों मर रहे भाई सोलो कहीं to पे, तो Tem क्या Entertainment. समझ रहे हो, कोऑर्डिनेशन तो They चाहिए taking होगा ना shots भाई। over that way down southwest. भाई Next सब circle अच्छे हैं, इसलिए यहाँ comes on खेल रहे through, हैं, and वरना it is हमारी over तरह to the दिखते eastern सब side. ये The सारे high भाई। ground controlled by Game Lord and HVVP. This is चलो भाई, big news for both of these वीवो teams. बढ़िया, नाइस वन। Massive news. I think for HVP, less influential maybe. You because need they're the already towards 100 the top of the point to qualify standings, for last but for chance. Game No, Lord, but this is bro, a real opportunity मतलब for some serious high ground, some मैंने serious जितना देखा है आज presence तक ना that they've held up कंपटीशन, here for a long, जो long हाईएस्ट while, to कंपटीशन get भी a गया है, lot तो of उसमें eliminations and 55 set तक होता themselves है higher within the 12 rankings. मैचेस का, 26 points at the 16 moment का over रैंक, 4 games. 55 It's not अगर the most हाईएस्ट भी ले लो amazing of 60 averages होगा। they've got so इस far, इस but लॉबी this में अगर might be a कंपटीशन game भी where हो, they get पकड़ the के चलो आप opportunity 20 to पॉइंट move those एक्स्ट्रा कर averages लो, massively upwards. 70 भी नहीं 80 कर लो। As long as Alpha 7 don't try and crunch in on चलो भाई, Temanku's टीएम position, they फाइनली might मेरे be भाई okay with it. Faze suffering as तो they दिखा, try and leave. Tem कुछ तो Entertainment दिखा as भाई, well. कुछ तो दिखा Both भाई कि of कर these teams करेंगे are ये, going to विन have माइनी to वाले अभी भी sail कुछ on out. पता There नहीं है, is high लेट्स सी। ground to deal with, more so on this northern edge. Really, really tricky. They're shooting at each other. They're getting shot at from एक the बार फाइनल mountains. कब से And 6 it's all 7 coming 8 को भाई। crumbling down for both of these rosters, but Faze are getting the better end of the deal. Chimes in from Reject as they try and plink away a couple of the points, and will be able to do so, in fact. Good news. In the meantime, Inco down one, going at it. 5 eliminations coming through from Inco, but down one are still alive with just the one in the crate. Blur of HP to keep them on going and pushes out with it. Tries to skirt around, doesn't want to be caught on the inside, but taken out, eliminated. Final blow dealt. Down one, only टू getting 2 डिजर्व टीम points, लाइक so विच need हैव to गुड, do a अरे little अरे bit more छोड़ो than that, भाई, कोई potentially. सब Tem खत्म करो, Entertainment in the सुक्को 4 meantime, में and वापस ले Faze आओ। अरे भाई, still अरे अगर कुछ trying to गलत leave, नहीं being होता तो सुख denied छोड़ता है access क्यों to the 4 में circle. यार, बात Reject तो with है। 4 बट players stand in their way रेजियो भाई for ने their एक फिनिश east. निकाला, बहुत बढ़िया। Geekay बिगकर के as बंदे, well, मीनवाइल 3 विक्की players, के and they're बंदों on को the north पकड़ के side. You मारते cannot हुए get away एचवी with के this. मिकुपाजी को नॉक दिया, बहुत बढ़िया। मल्टीपल फाइट्स ऑन गोइंग It is है, so बेकर ने यहाँ difficult पे to get वाइप back करा, into the circle at this point in time बढ़िया। if you're on the outside. If you weren't towards डीडब्ल्यूजी की Great जो Fields टीम है on this वर्ल्ड edge, एलिमिनेट हो गई you are है, going to जो कि suffer बहुत it. अच्छा There's not a नहीं lot of है। area in this circle वेम्पायर to ऑल्सो play. You एलिमिनेटेड don't ideally want to अर्ली be inside Credit एलिमिनेशन, Fields, so there's a फर्स्ट टाइम देखने को massive मिला है chunk that's कि taken out of लाइक this circle, आफ्टर making it ह्यूज almost like a मैचेस नाउ donut एचवी of के available पास मौका है playing टॉप पे area. आने का, अल्फा 7 के पास मौका है, Q इनको does के take पास a मौका knock है there लाइक वो from Alpha पॉइंट्स गैप 7 कम करने in the का, एंड backside, जो and Revo प्राइस पूल will बोनस pick है up उस that पे आने का। elimination. लेट्स So सी बाकी although क्या होता है Meko's सीन। able to provide the information back, they would have much rather been able to live longer. Having those angles available up on the high ground so useful to you, and the fact they were able to slip in undetected on that northern side over the northern road crossing भाई has एसजी really का कितना caused some pretty कितना bad मैच pain spots बाकी there for है भाई? क्या HVP भाई, going एसजी का forward now. कितना मैच बाकी Faze है? going down, second place team from Group Yellow. एसजी Out का भाई with 2 all मैच of them. बाकी है, एक मैच तो ये चला हुआ है, Just इसके बाद behind एक और मैच है। Reject, और and Reject that wants to take them down as well. अगर Certainly happy एसजी about that to open up a little bit of a lead, but या फिर कम पॉइंट लेके जाता है तो to squeeze a little bit more out of the lobby. फिर कल डिपेंड These करेगा last 2 games कल we've got लास्ट left मैच to का। play. लास्ट मैच में भी Faze अगर relegated अच्छा नहीं हो to पाया, just the फिर one गाइस Erangel डिपेंड पता है left. क्या चीजें करेगी कि कल On the के दिन day, पे टीम्स कैसा खेलती है। कल के दिन पे टीम्स को reserve बहुत down ज्यादा one. डाउन खेलना They पड़ेगा, need तब एक just a पॉइंट हो couple more. सकता है। They फिर कि should, एसजी in क्वालिफाई theory, बट be कर लेगी safe एसजी for यार, 2 now, पॉइंट है, but we know, 2 as you मैचेस है, said, those स्टिल कर लेगी। goalposts being set for that bubble. क्यों भाई, कहाँ से? It'll be इंडिया से मेरे finally भाई। down one that would be looking to sit in that spot. You can get over
Skylight's Gaming and Power, great news, but you still have to challenge up a little bit further into the top 2/3 of the lobby. GL if you go further Vico beyond, VK GL pass down Vico one GL spot, yeah, इनको you're भाई इनको के looking लिए like एक बार ना that's a गाइस सारे decent ओपी place कर to दो be. यार That's a इनको survival के आईजीएल के लिए आई championship, वांट टू so नो द इनको one आईजीएल don't गाइस realistically want to be that ऑनेस्टली सिंग second भाई spot. It's like it's happy आउट days ऑफ if we get 5 past मैचेस these मुझे guys याद आ रहा है because 1 2 it 3 शायद gives 3 मैचेस Limited ऐसे हैं too जिसमें much इनको hope की to them. टीम में So सेंटर के बीच में someone बैठी है भाई increase the distance slightly coming into the लास्ट मैच final दिस match मैच after this मिरामार one. का मैच उससे पहले वाला Much, much आपका easier इरेंगल का for मैच them. आई गेस 4 Beşiktaş मैचेस 5 में taking से 4 damage. मैचेस ऐसे Alpha थे इनको 7 की टीम है still putting वो on the फिफ्थ जोन hurt के up towards अकॉर्डिंग बहुत HVP. बहुत 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 ज्यादा अच्छे कंपाउंड में भी है बहुत ज्यादा Nasty. I अच्छा was like, पोजीशन where is लेके Tixi? बैठी And then I फिफ्थ जोन realized, oh, तक he's down literally on top of Revo.
He was बहुत ज़्यादा आज के दिन पे बहुत बढ़िया भाई. just completely pushed upon. HVVP losing 2 on this northern position when they HVP and Alpha 7 का not great, to be honest. ये It's था going ही to slow down their expected कि point होगा scoring क्योंकि ability HVP here. थोड़ी आगे And थी Alpha Alpha 7 7 पीछे is going to डाली launch थी. theirs up. Knock They're किया on 8 बहुत बढ़िया eliminations मैटिक. already. wow. Inco as well. But then again, 8 you just elimination lose Alpha these, 7 you already. just lose these shots and managed to find it. Mafioso knocked. Alpha 7 down to 2. And Kitsune and Matic still on the warpath. Yeah, really Bro nice इसमें shot से there आपकी from 16 टीम्स ही जाने वाली है. Kitsune. Take down Mafioso. I think there was a little bit of help from maybe another team within the lobby, but cracking headshot comes through. Now Mafioso finished. Creo remaining in the path. किसी को पता है क्या ग्रुंडन Again, now the opportunity unfolds for Game Lord. Victor taking a pretty bold duel here. Oh, the last bullet managed to land on target. Victor still going, but finally knocked over the top. Okay. Divine launched up into the air and taken down afterwards. Served up on a platter. Robs swaps to the shotty. Sprays coming on through to look for some flushes to take Game Lord's power away just a little bit, but it's just Ragey now left standing. 2 players down low there for Game Lord. 2 players are up and active. It's a wide split. Narvalo is nowhere really too close by. We'll have to reposition to try and go for this one. And Game Lord will be losing players in the meantime. Akashi waiting for backup potentially, but with the blue zone coming in as well, Game Lord likely down to 2 in this spot. Ragey, though, also very likely to fall for reject. What a wild push as well coming through from Game Lord, and almost an unnecessary one at that. भाई स्क्रिम्स कब होगी PMGC की फाइनल्स की कोई डेट? बस मैच खत्म होते स्क्रिम स्टार्ट भाई मेरे. दिल्ली की स्क्रिम्स होनी. ओए हाय 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 रेचियो भाई. भाई साहब पूरा हेलमेट खोल दिया भाई. To get him off that mountainside. Navallo's got no eyes on. 2 eliminations from this spot. A golden opportunity. डोले भाई का किल मिला. गेम लॉर्ड बढ़िया. उठाओ यार फिनिशेस उठाओ यार. इस पॉइंट से उठाने चाहिए 4. आने तो चाहिए भाई यहाँ से कम से कम 7-8 फिनिशेस तो लेके जाओ. गेम लॉर्ड डालो. Did it once. Can Ragey do it again? Win out the trade when he's completely broadside to the wind. Navallo to put these shots down, but he just can't quite find it. Ragey will be pushed forwards a little bit more. Will have to move. Navallo popping, spots the gun swapping. But when Ragey comes a knocking, you got to be careful. Navallo just so careful on these peaks. Ragey spots it with the Mini 14, takes a lot of damage, and Navallo given the confidence to peek again. Headshot over to Ragey, seals the deal. Elimination over onto Reject. 5 points on the game to close out their Miramar. I mean, for Game Lord there, I am astonished that that happened to them. I'm astonished that Akashi gave up so quickly on that side. The guys on game that would be, I would be furious with that finish to my game. I mean, you've given such a good chance, you have such a good position. Victor moves out, and then Rob sends in. Yes, it looked cool. But immediately they were almost wrapped in elation with how they'd saved Victor, then forgot to check their angles, check their sides. In which case, Ragey is able to find Akashi and Robs at the same time. Connect हो जाए मजा आ जाएगा भाई. Just on Narvalo. Great survivor, this guy. IHC नीचे देखने वाले ध्यान रखो थोड़ा सा IHC के ऊपर भी. Here, but only 2 players to make it work with. Bacon time were able to pinch away the knock that Carrillo got. Zessi from Beşiktaş did fall, bringing Beşiktaş down to 3 players. Carrillo sees them down to 2, and a spray onto more. Might even be बे Carrillo भाई क्या कर रहा है इसने? अबे बहुत सही वे बहुत सही Carrillo यार. मजा आ गया भाई मजा आ गया देख के. Seeing themselves further up those tables, but Beşiktaş cut down in their prime. A brilliant opportunity at rotation, but Ice's position here. Massive high ground for Beşiktaş, for Bacon time on this western edge. And they will be overlooking a lot of this next circle. Unfortunately, they are right on the edge. Yeah, pushing them in. Okay भाई, you watch PUBG PC Championship नहीं भाई मैंने देखा नहीं यार PUBG PC Championship. I guess उस पे कुछ और चल रहा था. मैं उस टाइम कुछ और देख रहा था. I guess अपना ये चल रहा था यार PMGC चल रहा था उस टाइम पे. कुछ तो था चीज. Nice one बेकन वालों. यही चाहिए था इस पॉइंट पे यही चाहिए था. ऐसे ही गिरने के नॉक होना था भाई. ES बहुत बढ़िया.
Trying to link their way Nice. upwards. That's the Punch wrong or way, finish. fella. Oh dear, not going to be good. Godless. Over knee. Taking down shots from Shirty. Tumbling down the hill as well. Can't get Godless back up, but you have to fight for this ridge side. 2 players up top for Bacon Time. Want to put these nades down towards the old last player standing for IHC. Pinched away, I think, Nice. actually by Enjoy. Last player for ने Beşiktaş, पाजी but eliminate will करा. be spotted. HVVP, as you said, in a Game powerhouse Lord. position, but with only ठीक 2, है भाई. can they leverage that Duel control? बचा गया. Last IHC player's once Yol again found, eliminated. भाई क्या swept कर रहा है aside. IHC Bacon Time, वालों? 4 players alive, 6 elims. पावर भाई एक बंदा बचा है. पावर का क्या करेगा? पावर का एक बंदा. Bacon वालों. Should be able to hit some great shots Matic from over on Baji. that side of the map. Matic as well. Some good M4 bullets been sent through. Kitsune takes a hefty hit though from Ragnar. That SKS, yes, it kicks like a mule, but it also hits like a Top donkey. 16 में आ सकती है ये. Bro performance पे depend करेगा यार. जो अच्छा खेलेगा वो आएगा. Meanwhile, P7. Able to hold one out, but no more than the single knock. Shirty dispatches it. Bacon Time still on 4, but under pressure. Nice try भाई. अब है tough one last match के लिए. On the north side will have to move further Situation south. बनती हुई guys. थोड़ी last match के लिए for par. SG का पता नहीं कितना point निकालेगा. Donkey just But फिर भी मुझे लग रहा है SG शायद apparently. एक safer end पे हो सकता है. In the अभी भी moment, लग रहा है मुझे they can Kitsune do it. drops down the Power का I smokes. don't know. SG कर लेगा भाई. Bit more covered off, but getting down to 16. कर लेना चाहिए क्योंकि यार मैंने बहुत मैचेस देखे ऐसे SG के लास्ट तक फंसते और लास्ट में जाके निकाल लेते हो. Losing a निकाल couple of लेंगे their आज. players to Alpha 7. Again, I think they still played the right game. Bacon को दे They देगा अब. knew that someone was going to come from behind. They tried to clear out that angle, and Alpha 7 is really just on a tear today. I've really brought themselves back into the fold towards the top of the tables as well. 8 eliminations this game, really, really well. I scored new happy but I the think they're just domination of feeling it. So Navis. HVP can't blame them too much for losing to Alpha 7. They are just a very, very good team. We can't forget that this is PMGC, the absolute top echelons of PUBG mobile gameplay. Inco, 3 players alive. No teams at full force unless Bacon Time can get this res. They will be at 4. 6 teams alive. Looks like they कल are मजा gonna be आएगा. able Yes to, मेरे भाई so कल तो मजा आने वाला है. this is a nice stage for these final circles as well. I'm kind of liking the tiered effect, the amount of cover to play around. It feels a little bit more deathmatchy. It really does. I'm very excited as well. It's a very cool position. I think HVP kind of concerned about nades coming their भाई way. इनको It भाई would be quite easy to just कौन है यार throw them इनको over का the पता top of करो the wall. यार. Who's the Bruiser, ideal for इनको भाई. Benavente. आज के दिन पे तो Why not? मौज This लगा guy दी है is इनको को. terrifying. You can give him a good weapon. इतना कट्टू कट Geekay नहीं दिखा इनको का wants बट to इनको try ना and हर put एक मैच some से points on the कंसिस्टेंट board पॉइंट लेके at the गई end है of the फॉर day श्योर. today. बहुत बढ़िया भाई. बेकन क्या ये बेजोन Not के अंदर. quite able to land the final shots on the spread. Shitty, Shirty might not be so shitty, lucky. shitty, Steps shitty, out again, shitty. tucks away, but the blue zone's there. Ragnar as well, curtailing any chance they have of moving sideways. They just have to go full face into it. And the hail of bullets will not go well. Pinched away, I think. HVVP 5 eliminations बहुत ज़्यादा बढ़िया. टॉप अगर आप देख रहे होंगे 6 टीम्स अलाइव है. GK गेम लॉर्ड लास्ट मैच में भी अच्छे पॉइंट लेके गई है लास्ट टू लास्ट मैच से. बहुत बढ़िया. SG स्टिल इन द लॉबी. कुछ ना कुछ प्लेसमेंट पॉइंट तो लेके जाने वाली है. 6 टीम है तो मिनिमम आप लेके चलो 6 पॉइंट तो लेके जाने वाली है टीम. Able to dominate last Miramar from the 15 similar 12 position 10 at this 8 time. 6 Oh, 4 a पॉइंट लेके जाने वाली survival टीम mission. मिनिमम जो अभी एलिमिनेट हो. Moving through. Uh-oh. Style tries to hit those 4 shots. And point Kitsune's minimum. given a lot of time to realize and get out of the dodge. Matic keeping them on the swivel. Now it's definitely no teams up at 4. Reduces the power of those 3-player teams enough to the point where 2 players and duos can really impact them very heavily, especially in this scenario. Kitsune moves down further south, and Matic still playing on that high ground, trying to leverage that. Ice goes in for the challenge there. Bete falls as well as Bacon Time tumble over the top side, under pressure, under fire from Matic, from off angles, from Kitsune. Geekay as well chiming on in, but Inco hold it out in the end. Bacon eliminated Time, hashtag they are 6. cut short. Inco Okay bring guys. it up. That's 5 teams smart. remain, but Kitsune, oh, that's a brutal position. The burn should be strong. Look at the spot that they hold. Geekay right on the edge as well on the south side, but getting cut down and challenged by Skylight. GK versus SG. Ragnar knock पड़ा है. They It's been a almost massively already slow know game for कहाँ पे Skylight players Gaming, है. though. SG Still वालों को पता 0 है 2 players eliminations कहाँ found पर है. for them.
They're Mafia looking Boy. at just placement points if they Let's do continue this way. fight right now. Hardly any utility left. Mafia Boy is currently healing up with the Ragnar को सेव करने का ट्राई रहेगा पूरा. bandages. Now, Valo's still alive though. I said this guy is a survivor. He certainly is. Managed to find his way down in top 5 now, in fact. Strong solo performances from the squad of Game Lord. Game Lord का बंदा. Unfortunately, haven't had a massive impact just yet, but they've had good results. And 9 zone है guys. 10 team nice alive है and अभी भी. chunky on those points. Not quite spiky enough though. It's been a serious shooting range so far for HVVP. SG बस placement point है ना इस मैच से SG का placement point आएगा ना. Controlling the entirety of this north side. 15 has to move 12 out of 10 position though. With the circle pushing HVVP 8 6 पॉइंट तो मिनिमम लेके जाएगी एसजी अगर अभी मतलब कोई भी टीम एलिमिनेट होती है चाहे एसजी हो चाहे गेम लॉर्ड हो लेके जा सकती है. वो बढ़ता रहेगा पोजीशन पॉइंट 2-2 करके आगे बढ़ता रहेगा. दिया नॉक गेम लॉर्ड ने एचवीवी को. नाउ एचवीवी इज वन मैन. There as well. के 3 बंदे बचे. रिवाइव हो जाएगा. मैटिक रिवाइव करेगा. Do they have time? It is encroaching. 6 seconds. I'm pretty sure you're just going to have to fires. abandon that one. Net Either pull in way, हो रहा है. HVVP Position on the change ropes किया. now. Valo seeing to that. कित्सुने In the meantime, प्ले जोन से नॉक हुआ. मैटिक को आगे बढ़ना पड़ेगा. मुश्किल फॉर एचवीवीपी. Inco is still there. मुश्किल है. 2 players to deal with. Navalo playing spoiler to HVVP's run. Over the top, knows there's a player behind. Then Abete caught out in the blue. 5 elimination domination and HVVP out हुई. ठीक है. 3 players alive for Geekay as they हैशटैग 4 रैंक पे आउट हुई एचवीवीपी. The last player 6 eliminations. किस पोजीशन से आई थी कहां से निकाला मैच. बहुत बढ़िया. डबल डिजिट पॉइंट लेके गई राइट नाउ. भाई जीके का भी कमबैक आ गया भाई. जीके और इनको क्या बात है भाई. बहुत बढ़िया. इनको को फुल्ली पोजीशन बेस्ड गेम प्ले भाई. Yeah, with the zone closing, center control already in the hands of Geekay. Nice. They will have to run forwards. This Grozer is doing so much work. Kashi Hang on a knock minute, हो जाता, taking मजा Hope low, pushing him out towards the blue. फेंक रहा है बंदा. Maybe it could all turn around, but then Ibente on a sliver of HP has got 2 first aids, continuing suppressive fire. Smoke over and forwards, no nade in hand. Will be pushed out wide. They know it. He's playing in the blue. Looks for the ankles. Okay, nice try, nice try इनको. Nice try. To take it down. It's Geekay. बहुत ज़्यादा nice try, nice try. वो बुरा इतना सा बचा, इतना सा. Nice try इनको. By the way, we got the overall standing, guys. We got the overall standing. Let me check the overall standing, guys. Got the overall standing, guys. 1000 लोग देख रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो यार स्ट्रीम को and make sure to hit the subscribe button and notification bell दबा देना. So guys, here we go the overall standing. So guys, here we go the overall standing on your screen right now. ठीक है. Okay. Let's go boys, let's go. Nice one इनको यार, काफी अच्छा था. जीके नाइस ट्राई. एंड अब आया ना येलो टीम के टीम्स का ऊपर की तरफ को जो बोलते हो कमबैक सा. HVVP 14 पॉइंट लेके स्टिल इन द टॉप 138 पॉइंट्स. वेम्पायर स्पोर्ट्स गाइस सिर्फ 1 पॉइंट. मतलब बहुत लंबे टाइम बाद देखा इनका मैच. खराब वाला कोई दिक्कत नहीं. इनको गेमिंग आज फिर से कमबैक करा इनको ने. क्या बात है. 24 पॉइंट आज. और स्पेशली यार जो इनका आईजीएल है भाई, जो पोजीशन जो दिला रहा है इनको ना यार, बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया. मतलब फिफ्थ जोन में ऑलमोस्ट अगर आप नोटिस करते हो सेंटर पकड़ रहा है मतलब ये टीम. और कंपाउंड के अंदर है, बहुत बढ़िया. कंपाउंड्स इनके बाद हार्ड कंपाउंड्स है और जोन्स का फेवर एक मतलब समझ रहे हो. काफी क्लोज था मैच भी. अल्फा 7 9 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया. कारिलो के स्पेशली वो जो 2 नॉक की ट्रेसिंग थी बहुत ज्यादा बढ़िया थी. वो 1 एचपी था, नहीं तो कारिलो शायद ले लेता. बहुत बढ़िया. बेकन टाइम 12 पॉइंट. वंस अगेन आप बोल सकते हो एक कंसिस्टेंट मैच गया है इस टीम का जो है बेकन की टीम. अगर आप नोटिस करते हो बेकन टू अल्फा 7 टू इनको गेमिंग बहुत कम गैप है. लेकिन कल बेकन जो है 10th रैंक पे थी. 10th रैंक टू ये टॉप 5 टीम आई है. समझ रहे हो गैप कितना कम था. अभी भी लास्ट मैच बचा. लेट्स सी. दामन गेमिंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, बट पावर अगर आप देखते हो 2 पॉइंट लेके गई है. बट यहाँ से अभी पावर और स्काईलेस गेमिंग का हो चुका है क्लैश. अब लास्ट मैच बचा है इरेंगल का. पावर को और स्काईलेस गेमिंग को दोनों को ज्यादा पॉइंट लेने पड़ेंगे क्योंकि यह लास्ट मैच फॉर द ग्रीन ग्रुप. ग्रीन ग्रुप के आज के बाद मैचेस नहीं होने वाले हैं. आज लास्ट डे है एंड इसके बाद टॉप 16 टीम्स हमको मिल जाएगी. तो द पॉइंट इज, द सिनारियो इज यही है. सीन सारा का सारा जो अच्छा लेगा इसमें सही रहेगा. एंड कट ऑफ की अगर बात करें डिपेंड करता है प्योरली ऑन लॉबीज. बट जितना हमने कंपटीशन लाइक PMWI का भी देखा ओवरऑल, जितने हमने अभी इस अभी जो हमारे मैचेस वो भी देखा, तो उसमें
ओवरऑल 45 टू 50 का ही निकल कर आया था रेंज। अगर आप मैक्सिमम कंपटीशन भी लेके चलो तो 60 टू 70 का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाईएस्ट तो ना भी होगा 80, बट वो दूर की बात है, बट 70 प्लस पॉइंट इज द लाइक सेफर साइड हो सकता है। सो टीम को टारगेट करना पड़ेगा। अगले मैच में 10 प्लस पॉइंट इज नीडेड। 20 आगे तो फिर क्या ही बात होगी। एलईडी गेमिंग नहीं खेल रही, टाइटन नहीं खेल रही है, निग्मा गैलेक्सी नहीं खेल रही है, बैगेट्रॉन नहीं खेल रही है, गेम लॉर्ड नहीं खेल रही है, गेम लॉर्ड खेल रही है, काफी अच्छा कमबैक आया है। बैक टू बैक आज के दिन पे 2 अच्छे मैचेस गए, काफी अच्छे पॉइंट्स रहे। जितना ये टीम अच्छा खेलेगी ना, वो रैंकिंग उतना टफ होना है, क्योंकि ऊपर वाली टीम ने ना काफी ज्यादा अच्छा खेल लिया है। जो पॉइंट मार्जिन आप देख रहे हो वो बहुत ज्यादा कर चुकी है। डीआरएस गेमिंग गाइस, देन बॉक्स है, उसके बाद जीके दिख रही है, 22 पॉइंट लेके आई है। अभी आप जीके, इनके पास ना रेड और ग्रीन येलो के पास मौका रहेगा कल के दिन का। देन फेज, 4 राइवल्स, बीजेके, आईएचसी, आई8 के पास भी कल मौका है, वीवो एंड टीएम, इन टीम्स के पास कल कमबैक करने का मौका है। फिर से टीएम का एक और बहुत बहुत डाउन मैच एंड एक ही पॉइंट लेके गए। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हो, जितने भी यहाँ पे नए लोग हो, जितने भी नए लोग हो गाइस, आई जस्ट वांट टू से कि जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर, पिन कमेंट के अंदर आपको दिख रहा होगा फैन क्लैश, जाके उसको जरूर देखो, जाओ डाउनलोड करो। एंड अभी हमने खोला है स्पेशली आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फैन क्लैश में जाके प्रिडिक्ट कर सकते हो टीम, रजिस्टर करो। एंड कुछ नहीं करना है, पबजी मोबाइल का सेक्शन आ रहा होगा, आपको क्लिक करके पीएमजीसी वाले सेक्शन पे जाके अपनी एक टीम जो है पिक करनी है, अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। सॉरी अगर मैं प्रिडिक्ट बोल रहा हूँ, लाइक इट्स जस्ट अ पिक। आपको पिक करना है वहाँ पे जाके अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। मैं अपनी टीम बना चुका हूँ, अपनी आज की मॉर्निंग की वीडियो पे भी हमने बात किया था, जिसपे अगर मैंने बात करा, मैंने वेम्पायर लिया था, मैंने लिया था आपका HVVP, मैंने लिया था आपका जो टीम था बेकन, जिसने आज के दिन पे कंसिस्टेंट खेला है, जो दिख भी रहा होगा। एक मैंने गाइस, वैसे मैंने अल्फा 7 लिया था पहले, आफ्टर इट आई गो फॉर द टीएम, क्योंकि टीएम में एक कंसिस्टेंट फ्लो पे भी थी, मुझे लग रहा था आज वो जा सकती है, बट नहीं हुआ सीन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट दैट वाज माय टीम जो आज के दिन पे था, एंड कमबैक्स भी उनकी तरफ से आए। एक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट वो शायद मैनेजेबल होगा, क्योंकि बेकन का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी था। बट लास्ट मैच है गाइस, लास्ट मैच के अगर रिस्पेक्टिव में अगर हम बात करें, नो डाउट HVVP, वेम्पायर, इनको एंड अल्फा 7, ये टॉप 4 टीम पे आप लगा लोगे नाक बंद करके भी तो बहुत सही रहेगा। IHC को जो बोल रहे हर्ट नहीं है भाई, IHC के पास कल का दिन भी है, तो टेंशन ना लो बे, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो गाइस, टॉप इरेंगल परफॉर्मेंस आगे गाइस, बेकन एज जैसे हमने आपको बताया, TEM हमने आपको बता रखा है, ये सारी चीजें, बट गाइस इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है SG को पॉइंट निकालने, पावर को पॉइंट निकालने इस मैच से। लेट्स सी क्या होता है। कल एलईडी टाइटन बीटीआई डोमिनेट करेगी तो SG ऊपर क्वालीफाई होगी। देखते मेरे भाई क्या सीन होता है, जो भी होगा जैसा भी होगा। हर जगह बता बेकन का अच्छा एंगल, बट क्वेश्चन आ जाता है, बट TEM गाइस, TEM वालों लास्ट मैच तो निकाल लो। I think it's called the group green syndrome, which is coming in really strong against them. I mean, I think a lot of people were saying that group yellow may be a little bit easier than group green, and now they're just understanding like, oh, this is a completely different kind of environment than what we had in the group stage, and they're learning it the hard way. They showed that they could do some good plays on Erangel, but it's just not been coming through today. So yeah, currently in last place. It's going to be rough entering tomorrow, because one game, even right now, even if they get chicken dinner, it would not be enough to redeem this poor day they've had so far, unfortunately. Okay, Max with the hard-hitting answers there and analysis. Let's ग्रुप ज्यादा स्लॉट लेंगे मतलब, and so I can start to kind of criticize you guys on those. Not sure what that sound was, but you both do have Skylights Gaming in there. You got Reject. I can understand the Reject pick, Max, just obviously what we saw from the last match. But again, with Reject's great performance in the first match of the day, we haven't really seen them hit that level again, hit that stride again. Clearly a fumble from Reject for the rest of the day. Reggie was here, as we said, this previous game versus Game Lord, able to redeem a few extra points here and there, but you're not going to escape Narvalo on that position. So I would like to see a little bit of a step up there. What happened ISC, कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, कल का मैचेस बचा हुआ, बी पॉजिटिव। कल एलजी टाइटन बीटीआई डोमिनेट कर देगी तो SG जाएगी क्वालिफाइड। यस डिपेंड करता है गाइस टीम की परफॉर्मेंस पे यार। जो टीम डाउन खेल रही है उसको और ज्यादा डाउन खेलना पड़ेगा। अगर लाइक मतलब अगर SG लास्ट मैच में पॉइंट लेके नहीं जाती वो तब का केस है, बट अभी ISG के पास चांस है और लगता है कर लेगी यार, क्योंकि लास्ट मैच में कर लेती है, लास्ट मैच में कर ही लेती है SG। पावर का आई डोंट नो, SG का यही सिचुएशन हमने शायद चैंपियनशिप के सामने देखा था, अगर आपको याद हो।
Power, they All would need to depend get on this around game for 15, SG. 18, By the way, maybe SG even के 20 ठीक ठाक points to point है, get वो to that 50 margin, plus so point it's भी gonna ठीक है, be a but हाँ tall 10 order. 10 Same plus thing point for लेंगे, SG. 60 But point है it is almost possible, उनके. yeah, but it's gonna be 60 point very, is a very ठीक one, difficult. like ठीक है, Yeah, but just to एक safer clarify side as well, जाने के लिए, क्योंकि because I competition actually बहुत है went lobby back में, and checked over तो our 10-15 rankings point why का both margin, had but Power मुझे लगता है SG and हो जाएगी, SG top 16 is कर लेगी. because, like you पता said, नहीं this is क्यों their लग रहा है last भाई match, बारी and है. they're in 7th and 8th place respectively. But the problem is they're sitting All at depend 59 on this game points of each. SGS. Which And as we were country just of talking about Standstill, HVV they team? expected like kind of HVV bubble. bro, It's I going to be guess a they're little bit from higher than Russia. that, so they need to have a big match Russia here. से है I And guess. we're going to find out if they're Yes. going to be able to, though. And Ay the हाय. pressure that must be on Let's their go boys. shoulders. 2 मिनट के अंदर It's हमारा going to आज be के quite दिन का tough last because we match know होने वाला है tomorrow start. all they can do is just sit here and watch. They Yes, cannot play. आज They के can't दिन का affect last anything that's going to be match. happening. The fate completely out of their hands, and that's honestly a really Yeah. tough spot to be in. Damn on Kia though, is this is their last करो match as IC well. They're भाई, leading 3 IC points, so they're kind of above that भाई, expected करो bubble that कुछ. John was talking about. Alpha 7, Yeah, nice so comeback भाई. Damwon Kia are relatively safe. Power and Skylights, like you mentioned, they're in 7th and 8th, with only a 5-point, or rather a 2-point difference between them and LGD, who have played 6 games. LGD, Titan, there's only a difference of 7 points even between 10th place and 8th, with less, or basically a day not even played for Group Red. So massive difference and a lot of stress. So much pressure going on to these teams coming into this last game. And as well, for Team Yellow, we can say that they performed at least SG please, we better want show than hitters. Team Green नहीं did नहीं and भाई, Team कोई Red hit did नहीं हो on जाएगा, their SG day हो one. जाएगा. So they're still, I guess when it comes to the No, lowest be two teams, positive but they're guys, just हो still जाएगा, getting SG हो जाएगा. completely demolished by the HVV, let's go. Yes भाई, referral को. There is no I referral almost want code, to bring up like आशुतोष a भाई, point that just I link से don't think it's download going to be करो. happening in this game, Expose but the को top teams, a ban lot of them करो from यार. Group Green हाँ? are really safe. If they see a potential threat Expose towards को the ban bottom करो. of the rankings, they Rough can stream क्यों just देख pick रहे हो and choose भाई? and just Expose kind को of ban mess with them. करेंगे तो. It very rarely happens, especially in PMGC. But the prize pool is very, like, it's very almost insignificant in the survival stage. Last chance, there's a big increase, so you can, try and fight for that extra prize pool increase. Here, hot drops can be on the table if you want to make sure you can get rid of, some teams this early on. Especially knowing all you need to be is top 16. It's not even top 5 right now, so you have that luxury the higher you are to go for something like that. Well, you know what? The pressure's on here. We're into our final match of the day, our final match here for our first group, Group Red. Let's see what they can do with John Allen and Blake. It is down to the wire only this game left to play, and the teams in danger at the moment, looking to put up more numbers. Of course, Power and Skylights Gaming. They're going to be heading into this one. Probably the most nervous out of any two teams in this lobby. Blank. It's got to be nerve-wracking, but HVVP. चलो guys, हमारा आज के दिन का last match होने वाला है start. आ जाओ लंडे, we believe in SG. Let's go guys. At the end of it. Nothing is late bro, nothing is late. अभी कुछ भी pre-judge मत करना. जो भी होगा positive ही होगा. चलो guys, करते ही start. Average point scoring, 11 points per game. HVP have now surpassed that. That was a 132 benchmark. They're at 138 right now, looking to put more on the board. So they're already on 11 plus average. Which Let's go boys. बहुत ही अच्छा flight path. Vampire Esports, to the 3 teams. to hit that average on this last game. And both these teams are 100% safe now. Inco with that last match getting high up in the rankings, constantly in the top 5 every single time. They're sitting at 118 points. I don't know how far this will take them, but if they can continue this kind of play style of finding their way into that top 5 every single time, somehow, some way, with some excellent macro control, perhaps they do find themselves over towards that grand final. देखते भाई, let's see क्या होता है, let's see. Like you said, John, last game to play now for a lot of these teams. 8 बस 10 plus point और finish their safer run hand here हो in the जाएगा. survival stage and wait Plus point. nervously for tomorrow when the results are in. It is quite a kind cut on the plane path, Blank, this time around. It looks fairly accessible to most places. Teams looking to go out the northwest can drop out on those western roads or on the roads to the north of Rosok. But फिर भी रेड ग्रुप वालों के पास फिर भी एक opportunity और एक chance तो रहेगा मेरे भाई. But ठीक है भाई. Oh, beg your pardon. Eastern side as well. Zone भाई, क्या zone दे दिया. To be able to grab up all the loot there. The circle pops southwest, again, fairly kind. Doesn't look like it could go north of the river. Also, zone हटाकर इस game में SG में मुश्किल हो जाएगा. Full dependency on the other team performance. Most teams will be happy with this one getting Yup. into place. They can head to the usual drop spots with this. But फिर भी भाई 59 is a good one बे. Get going. 59 point ठीक है, but yes ये भी बात है Boys, the team Skylights game अगर आप already dropping down towards Pachinki.
कंपटीशन भी है, कॉम्पिटिटिव भी है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, बट फिर भी यार लग रहा है मेरे को 59 सही है, बस 10 पॉइंट ले ले अगर इस मैच से निकाल ले, और सेम फॉर लाइक पावर 2. बट नीचे से गेम लॉर्ड ने काफी अच्छा कवर कर दिया बे, अपना 5 मैचेस में 41 पॉइंट ले गई है, आरसी 5 मैच में 38 पॉइंट ले गई है. कल के दिन अगर ये टीम चल गई तो ये फॉर श्योर ऊपर आएगी. देन अगर डीडब्ल्यूजी इस मैच में नहीं कर पाती है तो डीडब्ल्यूजी नीचे जाएगी, पावर नीचे जाएगी. बट ऊपर से रेड टीम भी खेलेगी कल पे, हो सकता है भाईजान. hemorrhaging of players in the early game. पर उसके बाद अब तो मैच इन मैच कल करेंगे भाई, कल स्टार्टिंग से लगा के रखेंगे. 15 पॉइंट्स एंड बॉडी देखते भाई, वो भी डिपेंड करता है भाई. कल की टीम अगर कोई टॉप नॉच खेल के मिड टेबल, फिर क्या करोगे? समझ लो कोई वो टॉप की टीम जो है टॉप नॉच खेल के, उसमें क्या करोगे? कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड नहीं किया जा सकता, बट वही है. Let's see भाई, बहुत चीजें फैक्टर मैटर करते हैं भाई. ड्रॉप भी चेंज हुआ है, क्या पता ड्रॉप से कुछ रोटेशंस इस आ रहे होंगे, देखते हैं भाई. बट I mean, this was bound to happen. 10 पॉइंट्स ठीक है, बट एक चीज है नोटिस करनी पड़ेगी हमें कि कल जो बॉटम टीम्स पर है तो वो सारी टीम्स खेलेगी, तो मेरे हिसाब से तो कट ऑफ बढ़ सकता है 80 तक. हाँ, अगर चली तब नीचे की टीम अगर अच्छा खेलेगी तो कट ऑफ खेलेंगे यार. पता है भाई, पता नहीं यार, ऐसा ना हो कट ऑफ सच में 3 डिजिट पहुंच जाए, बट यार मुश्किल है वो यार. पहुंच गया तो वो अलग ही चीज हो जाएगी भाई. This is probably the first time we have seen पता नहीं आज तक 12 मैचेस के बाद कट ऑफ 100 पहुंचा है, मैंने देखा नहीं कहीं पे यार. क्या पता हुआ हो कभी ना कभी किसी रीजन पे. 16 का कट ऑफ चले भाई बहुत. पता नहीं यार, क्या पता हो जाए इस लॉबी में, कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना. तो गाइस जितने भी 500 देख रहे हैं, आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जाएगा, मतलब ओवरऑल कट ऑफ बताना आपके हिसाब से क्या जाना चाहिए कट ऑफ? 60, 70, 80 तक मुझे लगता है. हाईएस्ट 90 पकड़ लो भाई, हाईएस्ट 80 है, हाईएस्ट है 90, हाईएस्ट है मेरा तो 62. हमने देखा 50 होता है ना मैक्सिमम कट ऑफ, 50 to 55. हम 60 पकड़ लिया, चलो 70, 80 पकड़ लिया, हाईएस्ट 90 पकड़ लिया, 80 to 90. इससे ऊपर तो भाई पता नहीं यार, मुश्किल लग रहा है. टॉप 6 नहीं, टॉप 16 मेरे भाई. 70, 80 होगा सेम भाई. मैं भी ऐसे कुछ सोचता हूँ यार. 90 तो बहुत हाईएस्ट होगा, 80 to 90 हाईएस्ट है. 6 to 75 या 60 to 80 लेके चल सकते हैं. 60 to 80 के बीच में ही होना चाहिए मोस्टली, बट ये डिपेंड करेगा नीचे की टीम पे भी भाई. अभी नीचे टीएम है, वीके है, इनके 9 पॉइंट है, 13 पॉइंट है, 21 पॉइंट है. कल अगर इन्होंने कमबैक कर दिया तो गेम लॉर्ड की तरह 40-50 पॉइंट खींच दिए, फिर all of them occupying the top 8 spots, sure, but remember they've got double the number of games played. ग्रीन ग्रुप तो कल खेलने नहीं वाला, बट ग्रीन ग्रुप का ये भी चीज सही है कि टॉप जो एक टीम है वो ग्रीन ग्रुप की ही है. एसजी उसमें सबसे बॉटम पे, देन पावर है, डीडब्ल्यूजी 83 पॉइंट है. डीडब्ल्यूजी को भी थोड़ा पॉइंट खींचना पड़ेगा, इससे 5-7 पॉइंट. To be fair, the mouth of it, the entrance onto the main island, by top 16 sits at the other side. कूल है भाई, सर्वाइवल स्टेज है, probably कल मिल जाएगी टॉप 16 टीम 80 से 90. warrant playing on a bridge camp position to try and क्लैश का slow anything प्रेडिक्शन down coming from बताओ that. ना भाई. मैंने तो वही लगाया ब्रो जो टीम अच्छी खेल रही है, एक टीम को छोड़ के. मतलब एक टीम पे मैंने रिस्क लिया था, दैट वाज टीएम. बाकी मेरी टीम थी बेकन, जो मेरी कैप्टन थी, वाइस कैप्टन एचवीवीपी, देन वेम्पायर, देन टीएम थी. टीएम पे गलती कर दिया थोड़ा सा, कोई नहीं. टीएम की जगह अल्फा 7 लेता ना, जो मैंने लिया भी था. Yeah, and on top of that, because it's very peer and Lighthouse position has a lot of loot involved anyway. On both sides. 90 से ऊपर आ गया तो कुछ अलग ही हो गया है. हाँ, अगर 90 से ऊपर आ गया ना, समझ लो ये ग्रुप, ये जो ग्रुप्स है ना जो मिले भाई, टफेस्ट, मतलब ग्लोबल टफेस्ट कंपटीशन था इस ग्रुप में. अगर 90 से ऊपर आ गया तो when you see the circle head up towards that अलग north नहीं side just रहेगा. a little bit more. But Alpha 7, I think that you also paid off a little bit here.
टॉप 16 में से फाइनल में कितनी जाएगी? टॉप 16 में से फाइनल पे ब्रो टॉप 16 में से 5 जाएगी भाई. reasoning means they can sit around on that bridge for कभी much, 12 much मैचेस longer होगा. before having to even make their way into the circle. By which point, on this next shift, which will be quite the big shift and probably the biggest shrink when it comes to the circle size in the game on zone 2, maybe I actually have to move. So Alpha 7's thrown a bone just because they can wait भाई मैं तो वो much चीज longer before they have to make their first move, or at least forced to make their first move. HVVP have yet to make their first move. मैं तो एक ही 7.5 चीज minutes सोच रहा into हूँ the भाई game, भाई sure लोग they had to grab vehicles and पता rotate to क्या North George, but इमेजिन you करो should be on the 24th road टीम by now कौन and सी होगी scouting भाई down south to the compounds near 24th Everest. टीम आउट That कोई should ना be कोई their तो path होगी on in, but भाई Tem कौन सी होगी Entertainment वो might भाई be able to just slot in front of them. वो होगा Bishop एक just with a अलग वाला wide सीन rotate भाई on this northern side as well. Going to be looking to come in through those bridges on the west side of things as well. So, see if they can find that point of चलो entry, or if they're भाई going to be turned away short and have to cross the river by some other means, by that central island. It's always very tricky, but can be done. Tem Entertainment coming through. That's from that northern side, coming off from Severny. TM Beşiktaş TM stepping things लॉन्डो up यार slightly क्या कर रहे हो towards the भाई end of the day, TM की but तुम भाई गलत not in सीन है a भाई massive way. I mean, to be fair, you look at टीम वालों लॉन्डो HVP and तुमने you आज बहुत divide गलत किया जो their भी score किया in half, इन्होंने right? You're looking भाई at इन्होंने 70 पूरी points राम at the कथा end पलट of दी their पता है first day. That's a first place team. So, चलो कोई you know, if दिक्कत we की look बात at नहीं that a little bit क्या more बोल as in बोल like the halfway point in terms of चलो all भाई these बहुत 24 बढ़िया अल्फा teams, 7 बहुत you know, बढ़िया 40 IHC points बहुत is ही ज्यादा बढ़िया है बे pretty decent at the end of a day. बहुत ज्यादा It's बढ़िया not IHC amazing by any stretch of the memory, but it should सीट keep you in the running. And इनका if you get ले लो a जाओ roundabout कंट्रोल मेरे stat on भाई top of the next जाओ day, जाओ जाओ that's a 12 गाली तो fairly पकड़ी भाई ने okay middling spot to be in. Again, it doesn't really give you a huge amount of safety. आया There माफियोसो is the पकड़ा opportunity for पकड़ा tomorrow. A पकड़ा lot of teams पकड़ा start हेडशॉट लगा blasting out गिरा from Group Red and overtaking. For 7 though, they अल्फा know they have to 7 make this move early with that shift. Oh, that is अंधा painful. That is really rough. Oh dear. Yeah, with the ये shift that it didn't came through, expect it कि IHC's वहाँ पे position IHC had होगी क्योंकि IHC तो massive, ड्रॉप massive आउट जा रही value है सबको पता ही है भाई and will गेम continue to do कुछ so. भी हो सकता है यस So ऑब्वियसली hard south shift gives them oversight from that watchtower up the top. और मिलिट्री से आने वाली एक And they'll be दैट able to इज just keep on this bridge as well. John Alpha 7 don't need to 7 cross yet. I don't think they want to और ऐसा commit जोन any बनाया तो more because they IHC have क्यों lost that हटेगी player already, of course. अबे क्या मार दिया बे नेक्स्ट लेवल मार दिया ये Sune finding तूने Regiosio there. पाजी नेक्स्ट लेवल मारा भाई आपने Lot ओपी popping off around the map at the moment. A lot of teams looking for these central spots. There's so much fielded area down वाइब नहीं आ towards रही this कुछ side of the map, John. A little आर bit द of मैचेस forested बीइंग प्लेड ऑन zones. FPP नो Currently game mode are playing in. ग्लोबल पे FPP है ही नहीं मेरे भाई It is very पता difficult. I think VPE ग्लोबल पे understood FPP that they had खेलते to ही नहीं है मेरे really भाई crunch in for this position. Took the time to do it. Found themselves a strong spot. It's a difficult compound to control unless you have 4 players alive. There is a lot of angles you need to keep an eye on. Skylight's Gaming, though, losing a player. Really bad news for them. They've already lost 1 in the process. Bodo is down. 2 players डर down, लग John. रहा है गाइस डर Yeah, losing out quite heavily for Skylight फाइट होगी Gaming. And it is really their last chance now. Power may be able to have a little bit more out of this game. They did start in Gatka fairly close to this circle. They haven't had to rotate too far. गाइस But then मुझे again, आ रही है look अलग at ही Skylights गूज़बम्स and अभी they इस टाइम come पे across as something awful. Survival is the name of their game, however. We know that, Blank. So they should be clued भाई in to HV how to get एम्पायर through this, इनकन even with बेकन only के the two सेम of them. प्लेसमेंट पॉइंट है 60 I mean, usually Skylight's Nice. Gaming are able to get into a central position, then just be very quiet the rest of the game. Works on Miramar because SG there's का so हो much गया space साल around का a lot of these teams, नहीं नहीं with रुक this map being so big. खबर Erangel a करो little bit smaller though. कुछ बोल नहीं सकते Skylight's लास्ट Gaming might मोमेंट come तक with तुम कल confidence, की and टीम की when you're परफॉर्मेंस पे looking भी at this particular हाँ, आज circle का and the जो amount of जो भी compounds टॉप that are 16 still आएगा available, there is समझ रहे not हो many. कल की So जो it isn't a बॉटम की case टीम है of क्या being able पता to वो just ना head into a परफॉर्म करे shack. तो This is a case चांस of these बनता 2 है वो भी हो players सकता है बट वही sitting है out in the open डिपेंड रहना inside a पड़ेगा bush or behind a tree somewhere. Because most likely one of these ओ 4 players squads is भाई going to roll into a compound साहब क्या and देख लिया take it. भाई If you were a less than 4 पैटिक man बाजी squad, क्या देख you लिया don't भाई really have that manpower कौन सी to send in डिस्क्वालीफाई and try and pick up one of these compounds for yourself. कौन सी डिस्क्वालीफाई होंगी HVVP ब्रो जो scouting, आपकी just rolling around these टीम hillsides, जो होंगी looking ना for 17 से angles. 24 Besiktas की वाली leaving, मिनट disengaging south and coming in on the west edge of the circle. Tem Entertainment a little bit further north of that HVVP position. Actually, Zessi from Besiktas is all the way up to the north. ग्रैंड फाइनल्स कितने दिन Yet चलेगी to ब्रो regroup 3 दिन fully चलेगा around the वो back. बट ग्रैंड फाइनल से बड़ा ये PMGX स्टेज played a very wide 2-2 split yet again, Blank.
and they obviously lost a player earlier on. Guys, They're so now here we go. rotating again behind Zessi on that northwestern And here's the side, end of the trying to journey, come on guys. through. A Groza, but it's right on the open. A little bit of a bait crate there. My God, कल Inco कट ऑफ will के spot लिए भाई down one सारी जनता rotating कल through. मैचेस Down सब one, जनता just देखने looking to वाली put है about भाई 5 points up on the board, but they roll गाइस right up ओवरऑल into Vampire. स्टैंडिंग्स And it's a कल इतना dangerous टफ रहेगा आ spot जाना to गाइस हम भी try and दिखाएंगे make सबसे work. पहले Sung down, इनवाइल भाई flush, सब्सक्राइब 3 कर लो players गाइस alive, but नोटिफिकेशन that बेल will दबा make देना that crash. They कल make फाइनल that डे है cross, and they are central in the warehouse now. Stops moving around the edge, wants to put a nade on in, but आई will not कमबैक find किंग्स any damage onto है down one. कल 6 मैचेस है गाइस All कल of them करके want the दिखाना है वो grenades चीजें out. बस I think this और is maybe कुछ a bit premature. जैसे आज पावर Down ने one, करके दिखाया expecting VPE to आज come meet डेटा them in open i8 combat. से भी नीचे थे पावर का रोस्टर Stone 16 पे getting थे कल close की to the door परफॉर्मेंस के now. अकॉर्डिंग राइट नाउ 3 दे आर इन grenades 7th remaining. रैंक 3 59 players, पॉइंट के not साथ the एंड best मोस्टली scenario ये वाला here for मैच Down उनका One अच्छा जा Gaming. सकता है Yeah, वेम्पायर being एंड here is DWG good, and now I लेट्स think गो VPE देखते get हैं the कौन idea निकलता है of यहाँ it से is that Down One's going to keep throwing nades until someone comes near that door. 4 दिन का होना चाहिए था ग्रैंड फाइनल्स या मेरे को Someone on the सबसे outside as well, playing in the gap between them and the wall. The good thing about the backside of that garage, that warehouse, is that you only can take एक्चुअली nades from सीन that क्या one होता है ना direction भाई from people in the जो compound. The स्टैट rest of them are बेस्ड going to गेम have to होता है come ना from the ब्रो hillside, वो and you आपका can establish पहले nice आप बोल sight lines सकते of थे जब control ग्लोबल there, था तो थर्ड especially सर्कल with तक another चलो team in the आपने एग्जीक्यूट compound. कर लिया ये You टीम know ऐसे that's रहेगी going to be a अभी really difficult आप hillside to फर्स्ट navigate सेकंड on the सर्कल south तक side. मैक्सिमम यूज कर सकते हो Just स्टैट a वाला nice सीन hold and a position for down one to stay उसके अलावा quiet. फिर आपको अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग गेम है आपका Mythic ऑलमोस्ट सेकंड टू थर्ड सर्कल जो होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग Fourteen. रहेगा टीम टू टीम into डिपेंड करेगा ना maybe किसने क्या take some होल्ड shots करके over रखा towards हुआ है क्या नहीं Faze. कर रहा है सिचुएशन Neo के being अकॉर्डिंग down क्या low will पता है have to किसी go टीम ने कुछ pick और होल्ड him कर दिया back इट्स up. नॉट फिक्स कि कोई टीम Right यहाँ on the पर है edge तो of the वहीं पे circle are जाएगी वो these guys. Power coming in from the northeast सिचुएशन के side. अकॉर्डिंग Don't भी lose चीजें too many मैटर players करती early हैं तो on. अभी Still के have to मुकाबले cross आप those समझ लो जो fields. पहले थर्ड सर्कल था वो Into this सेकंड next सर्कल circle हो heads गया off ऑलमोस्ट to. More likely will be तो going मतलब towards that central साथ region. साथ आप फर्स्ट सर्कल के The teams अकॉर्डिंग opting to रोटेशन play देख the सकते हो edge मैक्सिमम because the way सेकंड that सर्कल that में तो काफी field टफ हो जाएगा फर्स्ट सर्कल के directly cuts through the center of the circle. It अब really सिचुएशनल does बेस्ड cut गेम है off सारा these two engagement मैक्सिमम points. Right, you've got सिचुएशंस down के towards that अकॉर्डिंग south वाइज side, डिसीजन about स्मार्ट 6 डिसीजन teams all in contention for this area, but they're most likely won't be looking up towards the north. So we're having ऋषभ भाई या two एग्जैक्टली essentially PUBG Mobile matches going on at the same time in one circle. बट कई Where टीम्स है these जिनकी players रोटेशंस are एंड just वो split सेम up. है जैसे वेम्पायर ऊपर से घूम के This is जाती है ऐसे vast, ऐसे barren T2K area. का भी अगर नीचे की तरफ जोन आया तो वही पाथ रहता है Does तो वो divide कई it. चीजें Will be सेम रहती है so बट जरूरी नहीं centered कि on वो towards as जाके well उसी कंपाउंड पे into जाके the बैठेगी wastelands. क्या पता Pretty much, अलग this अलग is सिनारियोज हो सकते हैं horrific. सिचुएशन के हिसाब से A टीम ने कुछ nasty और way सोच to लिया end things तो for Group डिपेंडेबल Green नहीं and रह सकते right on top of Skylights Gaming. They did not want this to happen because now it's going to bring a lot of attention back their way, and they're playing as a 1-1 split to स्काइलर्स attempt ओनली to प्लेइंग फॉर keep the अरे भाई pressure यही off सब them for as long माफिया as बॉय possible. As फिनिश किया Mafia Boy जीके ने going down though. राइट नाउ Now एज just इज one अ player सिंगल left मैन alive in नाउ Neva. इट्स GK boom. looking down towards him on the south as well. He might be next to go, in which case Skylights Gaming will be finishing this SJB game on a 8th rank measly and 13 59 14 points है for 41 their point total and 30 ranking. Fairly desperate at this stage. गेम लॉर्ड भी पॉइंट लेने For वाली है कल Skylights Gaming, आरसी power भी a पॉइंट little लेने bit वाली more है hopeful कल on the northern side, but फॉर still श्योर के they've got a और lot फेस पे डिपेंड of issues करेगा to गाइस handle. टफ जाएगी यार ओवरऑल in the shack, cowed by a bullet, ओवरऑल टफ just जाने popping वाला shots, I don't think this is wise. random pieces of cover. 8 9 I mean, you're making Bada noise, bada. you're maybe stopping people from साथी पीटीआर going को straight अच्छा to the खेलना crash, पड़ेगा but कल HVVP are looking एलजीडी at को it right पॉइंट now, एलजीडी I imagine, and thinking, यार that might be our shack, that डाल might लेगी be the place that we have to play. यार को Yeah. कंसिस्टेंट लेके जाना है टाइटन को Flexing his कंसिस्टेंट लेके arms, जाना है picking दूसरों up की 4 टीम पे रहना separate वाला है weapons सीन at a time and pretending to be a full man squad. I mean, it's a play. See if it works out for him. इनको काइजिल भाई Just जॉर्ड this यार from इनको Ragey. काइजिल कौन है यार पता करो कोई Reject, यार sorry, going down. इनको into काइजिल deck, पता करो trying to कौन be है able to भाई shot out underneath that तब vehicle. उससे भाई An टिप्स ideal एंड ट्रिक्स position लेनी to पड़ेगी show आज some के back. दिन पे तो यार क्या Accepts his कर रहा है fate. उसने भाई गजब The reject finished the day on 38
points. 39 if they were to go out right now. पावर कहाँ है? जोन का Elimination डैमेज they ले रही है found. भाई. Again, not a bad point scoring, honestly. इधर हो on the day. power. Getting 40 points is decent enough. We said it before. You Power look के at लिए Skylar's उतना game, important है 59 जितना points SG के लिए है. already. If Reject could do Nima. exactly what they did today again tomorrow, they'd be absolutely fine. And you've got to imagine when you take a lot of these group green powerhouses out of the lobby, some other teams are going to start to step up, and Reject absolutely could be one of them. Let's go They नीमा were द सेवियर. so जहाँ good, जहाँ a पे whole जरूरत bunch पड़ी है more of नीमा them, so हमेशा getting SG के लिए खड़ा रहा है. your hard Let's see day out आज of क्या the होता है way with a guys. 40 आज pointer काफी would be important है नीमा के लिए absolutely भी. great news जहाँ for जहाँ पे गाइस सीन pretty रहा है much ना everyone नीमा involved. हमेशा से वहाँ पे To अवेलेबल see रहा है. but that's हर only to कैसी see सिचुएशन yourself में नीमा safe, इज देयर. right, into तो वंस those अगेन नीमा jumps. के पास Yeah. फिर से चांस है. नीमा द सेवियर. Let's see. Oh,
Auras. Oh, hello. That's a long shot, isn't it? It's going to be able to thread the needle there, but Gamelord to get down to just the one active. Robs dances away from the volley, loses a teammate in the process, but keeps the team alive by doing so. Yeah, better to leave teammate in the dust as opposed to चल यार बेकन वाले घुसो right there. I think Gamelord's done fantastically well today. ना नॉट सोचो बे घुसो बूम बाम करो बे स्टेबल होगी वो टीम सुने ने दिया मीनवाइल टीएम के लौंडे को points on a day in survival stage is really good. This is Yes, big. they might lose players. इनको आइजल इस फ्रॉम फ्यूचर भाई सही में बोल सकते हो Bacon time, they're taking चलो भाई down बढ़िया Gamelord. It looks like that is going to be a pretty clean run. बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बेकन लेट्स गो चारों एलिमिनेशन निकाल चुकी है टीम खुल के मारो बढ़िया एचवी अरे ये बढ़िया नहीं था टीएम क्या करा भाई तुमने आज बहुत अच्छा नहीं करा तुमने भाई Remember, this is a crucial game for Power to keep them alive in the tournament. पावर की भी फाइट हो रही है पावर HVVP पावर एंड HVVP गाइस काफी इंपॉर्टेंट है एंड पावर एलिमिनेटेड HVVP पावर के पास है 2 पॉइंट एक बंदा अभी उसका डाउन है एंड काफी अच्छा सिनारियो है किल्स वगैरह निकालने का क्योंकि पेटिया भी होगी यूटिलिटीज का यूज करेंगे जोन के अंदर भी जाना है देखते गाइस पावर क्या करती है एंड पावर के आगे ही नीमा का शैक भी है Now at 143 points total. Multiple fights ongoing. Guys, 12 teams alive है 12 teams है तो IHC क्या आज IHC के दिन का कोई अच्छा मैच कुछ गया नहीं कोई खास मैचेस IHC के नहीं गया आज पूरे दिन के मिड टेबल टीम रही है Step over that one. Alpha 7 dealing with IHC in the meantime. They go out. IHC eliminated once again IHC को भी कल खेलना पड़ेगा गाइस अल्फा 7 डोमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़िया ना मुझे रिग्रेट हो रहा है टीएम एंड अल्फा 7 के इनको एजल फ्रॉम फ्यूचर टीएम का फुल ट्राई हार्ड करना पड़ेगा कल के दिन में फोर्स पावर ने क्या ही टाइम पे थर्ड पार्टी की विशाल भाई पावर ने थर्ड पार्टी नहीं करी पावर ने क्या ही टाइम पे क्या कमबैक करा है 6 मैचेस के पॉइंट देखो आज के दिन के भाई 62 पॉइंट है जिसमें से आई गेस 16-17 पॉइंट थे उनके बाकी आज के दिन पे उन्होंने पॉइंट लिए है मतलब 50 पॉइंट समथिंग आज के दिन पे उन्होंने लिए है तो 10 का एवरेज चाहिए था पावर 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 ओ इनको एलिमिनेटेड बाय भाई इनके नेट क्या जा रहे हैं भाई डीजेके वालों के नेट से ही भाई आपत्ति आ रही है भाई ज्यादा बहुत ज्यादा टीम को आपत्ति होने वाली है भाई क्या नेट मार रहे हैं भाई नेट से टीम आई पूरी है नेट से क्रूशियल नेट आ रहे हैं एचवीवी का याद है बीजेके के साथ फाइट थी अजीज बेकन लेट्स सी 5 eliminations so far. Power looking for more over towards Bacon. Power in on the floor though. Difficult to pick him back up again. So you just kind of have to cut your losses at some point. Power will still play on with 3. If they can keep this one under wraps. Nice one. 10th rank पे पावर है अभी 2 एलिमिनेशन वाले एक बंदा गया अभी डोमिनेशन ऑफ बेकन 5 एलिमिनेशंस निकाल चुकी है बहुत ज्यादा अच्छा बेकन बहुत बढ़िया अलजन ने यहाँ पे बेकन का बंदा करा डाउन 20 points behind Vampire at the start of the game. बेकन की जो टीम है बीजी के as a team and coming in from Group Green. They haven't had the easiest time of it either. Getting spotted 1 2 Alpha भाई जितना ये टीम अच्छा खेलेगी उतना टॉप की रैंकिंग होने वाली है टफ जितना नीचे की टीम ऊपर आते रहेगी उतना टफ होगा गेम लॉर्ड का कमबैक आ चुका है ऑलमोस्ट 43 पॉइंट है नाइस वन एक दिन के अकॉर्डिंग कल खेलना पड़ेगा कंसिस्टेंट आरसी अभी लॉबी के अंदर है 38-40 पॉइंट लेके जा चुकी है जीके के 33 पॉइंट है कल का परफॉर्मेंस गाइस काफी मैटर करने वाले टीम्स का कल उनके 11 पॉइंट्स थे बस और आईएच के 15 क्वालीफाई हो गई गाइस हो सकते हैं कमबैक एक माइंड से 11 पॉइंट थे कल क्या देखो ना पावर 11 से यार 50-60 पॉइंट लेगी है बे 61 पॉइंट है अभी टोटल एक प्लेसमेंट पॉइंट मिलेगा 3 पॉइंट है 59 60 61 62 पॉइंट given a lot of opportunities to pick up these eliminations. There's only 25 players left in the lobby, 22 total if you minus out the guys still from Power. survive कर रहा है
This पॉइंट इज is the point where Vampire are going to have to do something. It's good that we've गाइस got कहीं both मत of जाना, them. कहीं We ओवरऑल still have to स्टैंडिंग leave आपको यहीं मिलेगी compounds. सबसे पहले, Down one तो have been sharing कहीं it for the मत longest जाना। time. Ravenclaw now विशाल with भाई the ने back नेट से stops. नॉक दिया, Baited out by डब्ल्यूजी Osel के and ऊपर across प्रेशर for बनाने का Osel to फुल the other ट्राई, side एक to नॉक एंड फुल spot पुश out होगा। Ravenclaw's लेट्स सी position. नेट Sweat फेंका, wants to यूटिलिटीज put का that यूज nade in, कर find रहे one हैं। of these knocks, find an बढ़िया, opening टाइम पे piece, पकड़ा but stops, crawls all the way फाबियान। back, ओह, and will be Reserble there. Down one, एसजी they're going to slow this एलिमिनेटेड down. The गाइस, blue zone will start to push in now. 0 पॉइंट, Ravenclaw low, एक प्लेसमेंट worried पॉइंट from this मिलेगा one. इधर। Schwett puts a nade over to the back, and Osel eats it. Unfortunate, but down 1 on 2 now. Forest has to deal with Schwett playing close with the DBS. Vampire around the side, still all 4 of them alive. Swaps out. वेम्पायर एज एक्सपेक्टेड नॉक करेगी और घुसेगी, वैसा ही किया। यहाँ पे डीडब्ल्यूजी आई गेस वाइप होने की कगार पे। चलो भाई, भाई जीके ने भी कर लिया भाई, पॉइंट खींच दिया जीके ने भी, 0 पॉइंट लेके गई डीडब्ल्यूजी। चलो भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया। अल्फा 7 5 पॉइंट लेके, वेम्पायर स्टिल इन द लॉबी। वीकेन अगर आप देखते हो 5 एलिमिनेशंस के साथ है, बहुत ज्यादा बढ़िया। अल्फा 7 का एक ही बंदा बचा हुआ है, देखते बाकी क्या सीन होता है। एजी ने डिमोटिवेट कर दिया गेम प्ले से। अरे अरे कोई दिक्कत की बात नहीं ब्रो, स्टिल अब डिपेंड करेगा अदर टीम के परफॉर्मेंस पे। कट ऑफ क्या जाएगा गाइस, कट ऑफ अगर ये कट ऑफ गाइस अगर समझ लो 70 से भी ऊपर जाता है ना कट ऑफ, कल गलती से अगर 70 से ऊपर कट ऑफ जाता है, मतलब क्या पता चले जाए 70-80, तो समझ लेना ये लॉबी भी कुछ ज्यादा ही हार्ड थी। इफ कट ऑफ गोज टू 70 से ऊपर, और लग रहा है कि जाने वाली है भाई अभी देख के। Beşiktaş on the southwest actually pretty well covered. 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 8 पॉइंट। Bacon time. Vampire, Fully regroup. Bacon, 4 GK, points of contact for Vampire. 4 angles to watch. धीरे धीरे येलो ग्रुप की टीम मोमेंटम को पकड़ रही है। येलो ग्रुप की टीम्स अगर आप अभी देखते हो काफी अच्छा, बढ़िया। चाहे वीके हो, बीजेके हो, जीके हो, आरसी हो, कुछ पॉइंट्स तो लेके जाएगी प्लेसमेंट पॉइंट वाइज भी। Stuff like that really can change the tide of a game. VP currently trying to overtake HVP in the overall rankings now. They lose one player. Aziz. और अजीज एक और नॉक निकाला, अगर वो फिनिश निकालते तो काफी बढ़िया सीन। पावर भाई जो मर्जी बोलो, पावर क्या कर रही है भाई, पावर बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है भाई। 8 teams remaining. Needed to एक make और the 9 फिनिश point differential up. Vampire lose yet another Hit. knock. गया, Looks like they might not be Yeah. able to make that run after all. Southeast side, it was always Yeah. going to be difficult to leave that compound blank. 5 फिनिशेस, But it's going to be 5 difficult for finishes, everyone as well. eliminations, 5 eliminations domination. for power. 3 जीके का players घेत alive. बचा है, उससे थोड़ा सा This ध्यान से northern रहना side, पड़ेगा, can they बट keep it going? A big game is 70-75 necessary. If के they बीच want to होगा, see देखना themselves देखते हैं भाई। safe, it would 70-75 need to be देखते a हैं, 20 अगर points इतना भी ahead. हुआ ना गाइस फिर भी हार्ड है भाई, इतना नहीं होता कंपटीशन 70-75 वाला। Chicken dinner with the 5 अगर eliminations पहुंचा so far that competition they've इस- found. Very limited in terms of supplies though. Kante looking the most healthy. बट रेड Supposed और to find उसके for a पास ये second. बेनिफिट है ना, Not येलो के quite पास उनको एक pinpoint the टारगेट target पता there. होगा कि लोएस्ट टारगेट Beşiktaş क्या हमको हिट करना है, Taking shots over towards समझ Alpha रहे हो 7. पॉइंट है वो। Remove that player. 7 eliminations on this game for Alpha 7 2. मेरे को याद आ गया Goodness me, Bacon times are लीग just स्टेज in. का आई That's गेस वाला 1 मैच player जिसमें remaining now बेकन for वेम्पायर और PPE, एसजी and थी, for 3 what टीम was बची हुई थी। such a strong बेकन का जो spot to पुश maybe आया था, dismount HVP from the गया top. वेम्पायर आउट। It's slipping all away now, and there it is. We've seen #6 Bacon के time अंदर do आज के so दिन much का work on these इनका ठीक crashes. ठाक ही था I feel like वेम्पायर, they have it down pat. कोई कल जैसा परफॉर्मेंस They will be playing up against some of the best in the lobby. और सिमिलर ही You're पॉइंट है right, आज के दिन। Vampire will fall. So now Alpha 7 on the charge, but Bacon time as well are still there with 4 players alive. The only team आरसी to को have that sort of तुम strength. But देखो Power कहाँ ले आया। looks to start their run down south. 5 eliminations, 3 alive. They'll continue to यस struggle भाई, and आरसी suffer का on this बंदा north बहुत दूर side. ले आया भाई, They can get बहुत rid of ज्यादा दूर। Divine. एक The बंदा कब ground से लाइव है just इनका। tilts away. And they can have a little bit of cover there. Looks like they've spotted Divine. Kante got a brief look at him before. भाई ये बोलो पावर के बंदे कहाँ से कहाँ ले आए भाई, मेरे को इनकी रैंकिंग देखने दो बल्कि। Very, क्या very पॉइंट aware निकाले of इन्होंने that player. Hey, wasn't taken out earlier. Aziz does go भाई, down. पावर के थे टोटल 16 पॉइंट, Goes out. Bacon time still 16 पॉइंट, और on the अभी run. इनके है 65 पकड़ लो, 65 में से 16 गए, Tickled by the blue. Don't imagine No, it lasts guys. too much longer. Revo tagged by Noise. ऑलमोस्ट 50 प्लस पॉइंट Bacon इन्होंने time आज gonna के pick दिन up के लिए। every घेत एक ही point बंदा they बचा है, can. एक एक That's बंदा जो no बचा on the हुआ है ना armor. वो काफी प्लेसमेंट पॉइंट का बीटी देने Revo वाला है। spotted as मीनवाइल well. अल्फा 9 7 eliminations #7 now. पे एलिमिनेट हुई है, Bacon ठीक time. है भाई। They're looking good. They're looking set. 6 बेकन teams remain. And Power बेकन is के still पास alive here, मौका Blank. टॉप 3 आने का इस मैच के बाद। लेट्स सी
टेकन का गाइस ये लास्ट मैच है, ग्रीन ग्रुप का ये लास्ट मैच रहने वाला है। अनस्टॉपेबल 10 एलिमिनेशंस निकाल चुकी है बेकन, बहुत ज्यादा बढ़िया। Realistically, Power just want to try and steal away as many of the eliminations as possible now. 9 available to them in the lobby, but most likely will be looking more at survival. These late game positions more valuable than ever to them. Remember, a chicken dinner would sit them with that 20-point total, which would bring them up to जीके का बंदा भी गया। about 80 points. ओके, राइट नाउ पावर के 2 बंदे बचे, बेकन एक बंदा जो रिवाइव हो जाएगा, एक और टीम गई, एंड जितनी टीम एलिमिनेट हो रही है उतना पावर को बेनिफिट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट पॉइंट। आरसी को फायदा हो रहा है प्लेसमेंट पॉइंट का गाइस। मिनिमम यहाँ से टीम 8 पॉइंट लेके जाने वाली है जो इस पॉइंट पे एलिमिनेट होगी। मिनिमम 8 पॉइंट जो इस पॉइंट पे एलिमिनेट होता है। आरसी का बंदा कहां से कहां ले आया भाई? थिंक टू 8 पॉइंट गाइस, मिनिमम, वो भी मिनिमम है गाइस। Really not going to be too useful actually moving forwards. Might be a good little bit of cover, but Bacon Time taking heavy punishment. Beşiktaş, they're standing टॉप up. 5 यस मेरे भाई, डिवाइन भाई, किस्मत हो तो डिवाइन जैसी हो भाई। Nades over and forwards as Bacon Time. 8 पॉइंट Pretty good for them. They've already done so much, but Beşiktaş have been blasting yet again. They find an 11. अब जाएगा, अगर जाएगा तो अब जाना चाहिए। Kante moves out towards Divine. Rejects last player is right there. Can he find the shots? Kante down and in the dust. Will be knocked. ले लिया, अलज़े ने ले लिया No, it's भाई साहब। पावर भाई, इसने आज के 2 ही इरेंगल पे चक्का है जो चक्का है। फर्स्ट मैच 27 पॉइंट, ठीक है। दिस मैच अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पे 6-7 फिनिशेस निकाल चुकी है टीम। अभी अलज़े बचा है यहाँ पे एक बंदा, एंड मिनिमम 17-18 पॉइंट लेके जाने वाली है। 50 में से उन्होंने मैक्सिमम पॉइंट आज इरेंगल से निकाले हैं। जो इनका एज वाला एग्जीक्यूशन है काफी अच्छा हुआ, मैंने नोटिस करा इस टीम को अच्छे से। फर्स्ट मैच में भी लाइक इनका एग्जीक्यूशन एज से था, जिन्होंने एचवीवी को वाइप करा था। मतलब फाइट्स निकाल रही है टीम। आया जोन, आगे निकलना पड़ेगा। अब दिक्कत होगा। टॉप 3 तो एटलीस्ट लेके जाने वाला है। 16 पॉइंट। वेट करना है, वेट करेगा तो फायदा हो सकता है। वेट करेगा तो फायदा होगा। ग्रीन ग्रुप फिनिश निकाल लिए, 7 फिनिशेस। Oh my goodness me, Power looking to try and take it at the final moment. Just Sessi to deal with now. Should be able to spot him. No, the gunshots will have given his position away. एक नॉक पड़ा है की बचा। गाइस ये क्या हो रहा है? It's just tilting back and Sessi doesn't have the angle. There's a jump. He's looking for the shots. He's looking for the player, but can't quite. 12 एलिमिनेशंस टू बीजी के। इन्होंने अपने 1-2 मैचेस ड्रॉप क्लैश में वेस्ट भी करे हैं। अगर ड्रॉप क्लैश ना लेती इनके अच्छे पॉइंट रहते। आया बंदा, अलज़े रिवाइव दे रहा है भाई। जीजी पावर यार, ऑब्वियसली यार। भाई ये टीम ने क्या खेला है, अप्रिसिएशन बनता है इस टीम को भाई। 17.2 ऑलमोस्ट अभी 70 टच कर दिया होगा इन्होंने, है ना? हाँ 70 टच कर दिया इन्होंने गाइस। ओवरऑल स्टैंडिंग यही मिलेगी, कहीं जाना मत 1000 लोग। बेट हो गए कोई नहीं। चलो कोई नाइस वन यार। बीजेके बहुत अच्छा खेला, बेकन बहुत अच्छा खेला। पावर तुमने आज के दिन पे बहुत ही ज्यादा अच्छा खेला भाई। ओपी यार, जीजी के पावर के लिए यार अप्रिसिएशन बनता है यार, फॉर श्योर बनता है यार। बीजेके के कमबैक के लिए बनता है, बट पावर ने जो किया है ना यार, मतलब लास्ट डे सिर्फ 6 मैचेस बचे, आपको क्वालिफाई होना है भाई। इनसेन परफॉर्मेंस बाय देम। एंड अब डिपेंड करेगा एसजी का जो पॉइंट है, जिन्होंने 9 पॉइंट लिया है, वो लेगा कट ऑफ पे। आई गेस 60 पॉइंट है उनके। अब कट ऑफ कल पे डिपेंड करता है कि टीम्स कैसे खेलती है, डिपेंड करता है आईएससी के ऊपर, डिपेंड करता है टीईएम के ऊपर कि वो कल के दिन कैसा परफॉर्म देती है। क्योंकि आज के दिन का उनका बहुत डाउन परफॉर्मेंस आया। कल के पावर की तरह इन्होंने कमबैक कर दिया किसी टीम ने, तब ऊपर दिक्कत हो सकती है। Beginning of this game would have been really bumped up by the amount of eliminations they were able to find and the chicken dinner at the end of this one. They played it out fantastically well. Zessi of a really big performance coming through. बीजेके क्या कर रही लीग स्टेज में, आई8 के लिए बहुत हार्ड हो गया भाई। हार्ड अब सबके लिए हो गया भाई, हर एक टीम के लिए। आई8 के लिए नहीं, आईएस हार्ड है, इवन दो एसजी के लिए हार्ड है भाई। अब टीम्स पे डिपेंड करेगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ओवरऑल स्टैंडिंग्स गाइस। अगर ओवरऑल स्टैंडिंग आ जाए तो हम आपको बता दें कितना कितना गैप है। बट फटी पड़ी है भाई, फटी पड़ी है। आई एम जस्ट
ओवरऑल स्टैंडिंग्स आ जाए तो आपको बता देंगे गाइस, जैसे हमारे पास आती है तो। बट कहीं जाना मत, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कल आ जाना स्ट्रीम देखने, कल आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। Down one Kia as well, not out of the woods just yet. Remember, they're pretty low down on those 80s as well. So can they keep it going? Beşiktaş, though, take a massive blast of a chicken dinner. गाइस गॉट द रोल स्टैंड। गाइस लाइक कर दो सारे लौंडे यार, कितने लाइक हुए हमारे? लाइक बताओ हमारे कितने हुए पहले। गाइस लाइक बताओ। गाइस देखो ऑफिशियल ऑनलाइन दिखाएंगे 10 मिनट बाद, तो इतना बेनिफिट करवा रहे हम आपका, तो इट्स बेटर ना कि आप कर दो यार, कर दो, जल्दी से कर दो गाइस, जल्दी से लाइक कर दो। हमारे लाइक कितने हुए जल्दी से बताओ। 900 लोग देख रहे हैं। हाउ मेनी लाइक्स वी हैव, मैं भी चेक करता हूँ। आठ सौ 87 लाइक है सारे। 1000 लाइक कर दो गाइस, 1000 लोग ऑलमोस्ट देख रहे हैं, तो 1000 लाइक कर दो जल्दी से फास्ट। 1000 लाइक कर दिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइव। अभी हमारे 888 लाइक हुए। सो गाइस 1000 लाइक जल्दी से करवा दो आज की वीडियो पे। एंड हियर वी गो द ओवरऑल रैंकिंग गाइस, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। लेट्स गो। नहीं करे तुमने, मैंने तब मिनिमाइज कर दिया, मजाक कर रहा हूँ गाइस। लो चलो गाइस कर देना, वैसे सही है गाइस। हियर वी गो। टफनेस टफनेस टफनेस। ग्रीन ग्रुप खत्म है मैचेस, ग्रीन ग्रुप अब मैचेस नहीं होंगे। सो 143 136 वेकेंट टाइम इनसेन कमबैक। आज के दिन पे कैप्टन था हमारा, सो काफी अच्छे पॉइंट्स इन्होंने अर्न करे, बहुत ज्यादा बढ़िया। वेकेंट टाइम गाइस 131। इनको गेमिंग है हमारा +2 पॉइंट, बट जो इसका आईजेल है भाई, नाम बताओ उसका भाई, जिस तरीके से जो पोजीशन दिलाई है लॉन्डे ने, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। गाइस लाइक कर दो सारे यार, अभी भी 800 लोग देख रहे हैं। 1000 लाइक करवा दो फास्ट। देन अल्फा 7 119 पॉइंट के साथ। देन दामवान गेमिंग 84, पावर 78 पॉइंट्स। हैशटैग 17 to 78 पॉइंट गाइस इन अ डे। 6 मैचेस के अंदर कमबैक, बहुत बढ़िया कमबैक है, बहुत ज्यादा। अब गाइस स्काईलेस गेमिंग के टोटल 60 पॉइंट है। अब यहाँ पे ना सिचुएशन मैटर करेगी फॉर द बॉटम। देखो एलजीडी तो आने वाली है, 3 पॉइंट का गैप है। बीजीके भी आ जाएगी ऊपर। अगर आप देखते हो टाइटन भी ऊपर आ ही जाएगी, क्योंकि गैप बहुत कम है। अगर आप देखते हो आ जाना चाहिए। निग्मा गैलेक्सी का 10 पॉइंट कितना, 50 60, 1 2 3 4 आ जाएगी। रिजेक्ट ये भी 6 मैचेस बचे गाइस। कट ऑफ जाएगी हार्ड, कट ऑफ हार्ड जाने वाली गाइस, हार्ड हार्ड बहुत ज्यादा हार्ड जाने वाली, क्योंकि जीके के मैच बचे, गेम लॉट के मैच बचे, बेगेट्रॉन के मैच बचे, रिजेक्ट के मैच बचे, डीआरएस के मैच बचे, बॉक्स गेमिंग के मैच बचे। सो कट ऑफ थोड़ा टफ रहेगा, अभी देख के लग रहा है गाइस, बहुत टफ है। लॉबी बहुत टफ है भाई, ग्लोबल टफेस्ट लॉबी गाइस, टफेस्ट लॉबी एंड टफेस्ट कट ऑफ निकलेगा इसका। भाई सही बता रहा हूँ यार, मैंने तो अभी देखी भाई लॉबी कंपटीशन, देखो 49 यार। कल इस टीम ने फिर से खेलना है, रिजेक्ट ने खेलना है, 6 मैचेस है, बेगेट्रॉन के पास 6 मैचेस है भाई। अभी आप देखते हो 60 पॉइंट का हिट टारगेट रहेगा, 78 पॉइंट का फिर हिट टारगेट रहेगा। बट अभी सच बता रहा हूँ, कंपटीशन ऐसे देख के लग रहा है कि 78 भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीन हो जाए कुछ यार। हंड्रेड परसेंट 50 to 50, 100% 50 to 55 कट ऑफ जाएगा। देखते हैं भाई, 50 से 55 के कट ऑफ में देखते हैं क्या सीन होता है। रेड वर्सेस येलो कल होने वाला है, लेट्स सी। बट यार एलजीडी यार देखो 3 पॉइंट निकालने, अगर आप 60 से देखते हो एलजीडी 3 पॉइंट, बीजे के अगर आप देखते हो तो इसको निकालने हैं 5 पॉइंट, ठीक है। टाइटन को निकालने हैं 8 पॉइंट। 6 मैचेस के अंदर बात कर रहा हूँ। निग्मा के, सॉरी बीजी के तो नहीं खेलेगी ना, बीजी के खेलेगी खेलेगी भाई, बीजी के 6 मैचेस है भाई। देखो 5 ऑलमोस्ट, मोटा मोटी 10 पॉइंट निकालने हैं 13 रैंक तक। उसके बाद आती है बात बेगेट्रॉन, बेगेट्रॉन, गेम लॉर्ड और जीके। नीचे से अगर कोई टीम करेगी 3 टीम, भाई कुछ नहीं बोल सकते इस टाइम पे। भाई आज भी सेफ है ना, बताओ। भाई जोक मार रहे हो क्या? कट ऑफ 91, लेट्स सी गाइस। भाई लॉबी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है भाई। भाई हम तो कुछ नहीं बोलने वाले इस पॉइंट पे, अब कल पता लगेगा। इस डिपेंड करेगा, अभी भी कुछ चीज नहीं है, डिपेंड करेगा जितनी भी टीम अभी नीचे की तरफ है उनकी परफॉर्मेंस पे। बट इनको अब रेड वर्सेस येलो को ये बेनिफिट था, उनको एक कट ऑफ का मार्जिन पता है कि कट ऑफ क्या है।
तो वो अपना माइंडसेट उसी की तरीके बना के आ सकते हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। भाई लॉबी बहुत खतरनाक है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक। एंड गाइस आप लोगों सभी लोगों को बताना था लाइक एक ओवरव्यू के बारे में। ओवरऑल स्टैंडिंग हम आपको दिखा चुके हैं ऑन द स्टैट बेस। तो गाइस हियर वी गो। फैन अगर हम बात करें तो नहीं क्या, तो गाइस एक ओवरव्यू आपको दिखाना है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। लेट अस। तो गाइस हियर वी गो, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है गाइस फैन क्लैश। डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा होगा, एक बार आप वो भी चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन आ रहा होगा जहाँ से आप फैन क्लैश को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस PMGC का PUBG मोबाइल के अंदर सेक्शन है जहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लाइक बहुत अच्छी रिवॉर्ड है, कल हमारे व्यूअर्स ने भी जीता है। तो कॉन्टेस्ट सेक्शन के अंदर बिल्कुल राइट हैंड नीचे टॉप सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल लेफ्ट कोने के अंदर पॉइंट्स टेबल सिस्टम जो आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा है, पूरा का पूरा देख सकते हो। 1 पॉइंट प्लेसमेंट का, 1 पॉइंट किल का मैंने बताया। कॉन्टेस्ट में आप पार्ट ले सकते हो। तो गाइज जाके कर लेना फास्ट फास्ट फास्ट। अगर मैं बात करूं कल के दिन के लिए, सेम टीम जो है आपको सुबह के लिए हम बता देंगे, जो टीम्स हमारा रहेगा। अभी के लिए गाइज एंड करेंगे स्ट्रीम को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम। एंड कल के लिए अगर मैं प्रिडिक्शंस की बात करूँ ना अपने अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, अगर मेरे को आज आपको ओवरव्यू देना हो, अगर आज के दिन के मैचेस देखता हूँ, आज के दिन का परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो गाइज कल के दिन पे ना आई थिंक जो टीम कल के दिन पे कम बैक कर सकती है दैट इज ऐसा मुझे लग रहा है कि BGK एक टीम रहेगी फॉर श्योर। देन TM आई डोंट नो यार, कल खेल की तो अलग ही सीन होगा। BGK हो गई, रिजेक्ट हो गई, गेम लॉर्ड अच्छा खेल ही रही है। एंड LGD देखते हैं क्या सीन होता है। LGD ऐसा ना, पता नहीं यार LGD का माइंडसेट क्या होगा कल के दिन खेलने का। ये टीम रहने वाली है। बाकी एक बार स्टैट देखते जाके क्या सीन है क्या नहीं है। लेट्स सी टुमारो। यस तो गाइस जितने भी लौंडे 300 लोग जल्दी से स्ट्रीम को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर दो एंड लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। एंड अभी के लिए ओवरऑल स्टैंडिंग देख लो एंड आपको एक गाना सुना देते हैं, तभी अपन करते हैं एंड स्ट्रीम को। थैंक यू सो मच कमिंग टू द स्ट्रीम मेरे भाई। तो आ जाओ, ये गाना सुनो, बहुत बढ़िया गाना है, मीनिंगफुल। Yo, next level, असली वाला क्या? Ha, let's go. Yo, next level. तब से मैं गेम में जब से होती थी टैक्स बैटल, साइफर स्ट्रीम बैक और कंट्रोवर्सी बैक चैपल पास। अरे ये बहुत हार्ड जैसे मैथमेटिकल, करी PhD गेम में सन, लेट्स बी प्रैक्टिकल। वर्ड्स टेक्निकल, वर्ड्स मेरे नेक ब्रेकर, वर्षों की मेहनत अब वर्क लगे मैसेकर। फिर भी वो बोले ट्राई नहीं कर रहा हार्ड रियली। सर्च कर रैप ID हैशटैग रैप मेटल, पर छोड़ फ्लेक्स आज, बातें होनी फैक्स आज। जोर माथे पे क्योंकि ना बातें होनी वैक। तू दिखाता पैसा अंधा ताकि करे सोनी टैक्स, लेकिन करे गोली चेक्स ताकि करे शोनी टैक्स। दोगलापन जो काम ना आए किसी के, खोखला तन जब नशे में कोई यार ना करे भौंकना बंद। तो समझदार वही जो थोड़ा खोले दिमाग करे बोतला बंद। हालात जैसे भी हो रोने की बात नहीं है, हीरे के आगे चमके सोने की औकात नहीं है। कहीं इतनी आसानी से ना मिले पानी, कहीं पैसा पानी जैसा लेकिन धोने के लिए हाथ नहीं है। तो दम रख पर पॉलिटिक्स कम वक्त, आज भर्म के ज्यादा असली धर्म के कम भक्त। सितारे जो भी बोले लक्ष्य पे ना कर शक, और कसली कमर तो फिर बरकत ही बरकत। बीट को किल करा, गीत में फील भरा, जीत को सर ना चढ़ाया, हार से डील करा। जिसके ना तन पे कपड़े उसको क्या मिंतरा, जो ज्यादा लोकप्रिय उसको सब पिंजरा। खुद से भी प्यार नहीं है फोटो पे फिल्टर, दिखावा छोड़ पहले असलियत से मिल करा। गिरा ना हो किसी को लगते बड़े डोले, लेकिन गिरे को उठाने के लिए लगता बस एक दिल पड़ा। उसी की कमी है। कितना फनी है आज, इंसान से ज्यादा दिल इंस्टा पे दिखते हैं। चुनाव हो तो वोट यहाँ हिंसा से बिकते हैं। टोक कोई सकता नहीं क्योंकि ये हिप हॉप है बाबा, बॉलीवुड नहीं है। यहाँ हम अपनी इच्छा से गाते हैं, अपनी इच्छा से लिखते हैं। नेक्स्ट लेवल। जमीन से फलक या जमीर से मगज, अमीर को कौन करे लकीर
भीड़ से अब जज आधे से ज्यादा कोशिश करने से पहले माने हार तेरी जिद ही करेगी तुझको भीड़ से अलग चीर दे तू तीर से कवच नसीब पलट लाइफ पजल करेगा रीस तो पीस गलत धुआं छोड़े बार्स गोल्ड पावर जैसे फ्रीजर अप सेटिस्फैक्शन यहाँ जीसस का मेंटालिटी प्रदूषित हालत दिल्ली जैसी पहले से ये मैली है ये जनसंख्या जैसी बढ़ती ये जेलेसी है कुदरती है लेकिन समय से जान ले ये साथ है तो सोच तेरी ठोस नहीं सकोश बिल्कुल जेलिसी है जीना ना बांध कर ना टांग कर अपने पैरों पे चलना दूसरे के टांग कर रिश्ता रहे रब से सच्चा कुछ ऐसा काम कर सस्ता नहीं सबसे अच्छा now that's banger now that's banger we're real from the day one yo if you know you know if you're missing bad for you it's rap ID बोले तो बाबा पहाड़ी असली वाला क्या peace out let the beat ride yo कौन सा गाना सुनोगे गाइस अगला अगला कौन सा गाना यार कुछ नया सा गाना सोचा लास्ट सॉन्ग ऑफ द डे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्ट्रीम अभी लैंड करेंगे बाय बाय लास्ट सॉन्ग ऑफ द डे गाइस काटेगी तेरा भी काटेगी 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 तेरा भी काटेगी 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 तेरा भी काटेगी सच में कुछ चीज है जिंदगी कभी ना कभी तो तेरा भी काटेगी 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 ये जिंदगी तेरा भी काटेगी 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 करते हम मैराथन करते सी बातें नहीं काटेगी काटेगी ये जिंदगी तेरा भी काटेगी काम को देगा अगर दिन और रातें नहीं जानते जिंदगी तेरा भी काटेगी काट गई साथ साथ छाट गई ना जाने बाकी है कितने अनजाने में सही कटवाने को ही ना जाने राजी है कितने इस बंदे की बातें हैं अंधे की लाठी है मुफ्त में बार्ज है बिकने निकले ये जिगरे से सीख ले बेफिक्र से लिखने से टिकने नहीं चिकने तो सुन कितने साले लड़ा मैं हाल खराब परेशान तो रहा मैं ये ओवरनाइट रैपर्स ओवररेटेड इनसे पहले था आया इनके बाद चढ़ा मैं विश्वास नहीं लाइफ पे मुंह पे ये राम और शाम बने साइड पे बार करे पीछे से दल बदलते तभी लगते ये लोग मुझे शायर टाइप के जैसे ठोको ताली कितनों की जुबान मैंने रोक डाली रोबो मेरे ट्रैक में ये बार्स मामूली बात जैसे सीरिया की सड़कें आम बॉम्ब ब्लास्ट काम टॉप क्लास मेरा शांत सा मिजाज फिर अवाम बहुत मास जैसे नाम मोहनदास मनी ऑन माय माइंड गांधी विचार मेरे साथ नमक हराम लोग पर मैं खाता स्वाद अनुसार पिछले मार्च तक थे गिने चुने यार मेरे साथ अब ये सफर लगे डांडी मार्च 1000 मेरे साथ घमंड जन्म जात ना किसी को कम तू आंख आज दिखता आधा जो वो बन ही लेगा पूरा चांद बने फैन इस लाइन से मेरे चंद साल पहले आज भी ठंडी कर दे रैपरों की जल्दी कहाँ क्रिमिनली अंडररेटेड बड़म फाइन दो कत्ल करे गाने मेरे डुल्ले बोले फाइन दो को साइन करने की सोचो मत चालो मेरा साइन लो देख आगे सर पे मेरे टांके क्योंकि पार्स करे माइंड ब्लो बावे सीनी गलत एक की जिंदगी मुझे जीनी गलत बावे सीनी गलत यार तो सब सही थे मैं फील ही गलत हुआ बावे सीनी गलत आशिकी तो सही थी पर फीलिंग गलत बावे सीनी गलत बावे सीनी गलत बाबा देता ट्रिप मैजिकल फ्रॉम मशरूम सिटी तेरी माशुका फिदा तो मेरे अक्षरों में थी ढंग से याद नहीं पर मस्त मूड में थी सुबह देखा मेरे वस्त्रों में थी होना जोक्स पे ऑफेंड नहीं जेंटलमैन में मेंटली 100 से ज्यादा बंदियों को सेंड करता रैंडम कमेंट नहीं फैंस मेरी फैमिली पर हेटर्स लगते बच्चे हाथ जोड़े गिरने लगते जैसे स्कूल की असेंबली गलत फाइट तूने कर दी पिक हम स्टैंड थैंक यू सो मच कमिंग टू द स्ट्रीम गाइस अभी के लिए स्ट्रीम